Good morning, all of you. Welcome you all in this platform of StudyIQ OPSC channel. I hope I am audible as well as visible. Those who are online, please confirm and please share this video with your friends as well and in different groups so that the other students will be benefited. Okay, so good morning all of you. So today we'll have this marathon session. Marathon session apanଙ୍କର GDS paper 1, general studies paper 1 for the prelims. Good morning all of you. I hope I am clearly audible as well as visible. Okay. तो start करिबा हमें session को. Right? Fine. Thank you. So let's start. Which of the following slogans is correctly matched with the movement or leader? Okay, so in this session I will cover few modern India question, few modern India economy question as well as little bit of Odisha GK questions we cover karibi. Okay, ठीक है जी, चलो. So first is which of the following slogans is correctly matched with the movement or leader? Okay, तो answer करिबे आपण माने. Do or die, quit India movement, Inkilab Jindabad, Subhash Chandra Bose, Jai Hind, Bal Gangadhar Tilak, and Swaraj is my birthright. ये होची आपनकर जवाहरलाल नेहरू दिया जाइछि. तो आंसर करबे आपण. आंसर ऑब्वियसली आपण माने जानि थिबे डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी को द्वारा स्लोगन दिया जाइथिला. ऑल्दो द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ दिस लॉन्च ऑफ मूवमेंट गांधी जी वाज अरेस्टेड, बट द एटा मूवमेंट ही स्टार्ट करा जाइथिला एंड स्लोगन थिला डू और डाई. इनकिलाब जिंदाबाद किए देथिले. इनकिलाब जिंदाबाद स्वराज इज माय बर्थ राइट तिलक देथिले आपण जानिथिबे. ओके, जय हिंद और इनकिलाब जिंदाबाद किए देथिले कि कोई परिबा आंसर. इनकिलाब जिंदाबाद आपण जानिथिबे भगत सिंह देथिले. इनकिलाब जिंदाबाद भगत सिंह देथिले एंड जय हिंद किए देथिले आपण को टू आंसर एक्सपेक्ट करिवि. जय हिंद किए देथिले जय हिंद. ओके, जय हिंद रा आंसर करिवि आपण माने. नेक्स्ट सेशन को जिवा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा. इन फैक्ट with reference to the quit India movement 1942, consider the following statement. With reference to the quit India movement, consider the following statement. It was launched after the failure of the Cripps mission. The movement called for immediate British withdrawal from India. It was initially supported by the Communist Party of India. It was initially supported by the Communist Party of India. Okay, answer कौन हम कौन? क्रिप्स मिशन कौन पाई आस्तेला? क्रिप्स मिशन कारण 1940 ये होची से समय जतबळे सेकंड वर्ल्ड वॉर अपन कर चलथिला या वर्ल्ड वॉर 2 अपन कोइ परिबे. सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड इन दैट सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश was about to join the second world war. British को join करिबार थला and British was asking for the India's help. British कौन करूथला? इंडिया रा हेल्प चाहुथला. British was asking for the India's help. तो जेहेतु से हेल्प मागुथला तो कांग्रेस सेठी बार्गेन करिबा स्टार्ट कले. कांग्रेस कौन बार्गेन कले? कांग्रेस कहले at the cost of this, or जदि आमे join करिबु war रे, definitely we need what? Independence or British withdrawal from India. तो ये डिमांड थिला कहा तरफरु? कांग्रेस तरफरु. द मूवमेंट कॉल्ड फॉर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया. एटा एक्चुअली से माने ब्रिटिशर को माने को सहित नेगोशिएशन करबा को चाहुतले. बट क्रिप्स मिशन को जतले पठा जाइतिला, क्रिप्स मिशन कोन कहला? डोमिनियन स्टेटस. क्रिप्स मिशन कहला मु डोमिनियन स्टेटस पर्यंत ही दे परिबी. दैट मच आई कैन गिव यू. आई कैन नॉट गिव यू द फुल इंडिपेंडेंस. Okay, so ultimately this suggestion was rejected and Gandhiji calls it post dated check. काहे की कहले एमती ना 1929 लाहौर सेशन रे ऑलरेडी आमे
पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस विषय कही लाहौर इंडिपेंडेंस लाहौर सेशन आम कंप्लीट इंडिपेंडेंस विषय कही तेणु डोमिनियन स्टेटस को पोस्ट डेटेड चेक बोली कहले राइट तेणु से ये आपंकर इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड ऑब्वियसली मूवमेंट कॉल्ड फॉर द इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एंड यदि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यदि आपण देखिबे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया supported by the it was initially supported quit India movement तो obviously कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्ट करी नथिला कहीं ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रो जो अफिलिएशन थिला दे हैड दिस अफिलिएशन विद द यूएसएसआर से माने चाहुथिले हमें वॉर रे सपोर्ट करिवो इंडिया को ओके सॉरी ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो से हिसाब रे एटा को आपण इनकरेक्ट कहि परिबे इट आंसर आपनकर 1 and 2 आंसर आपनकर 1 and 2 ओके नेक्स्ट देखिबा Who among the following founded the Indian National Army? Who among the following founded the Indian National Army? Indian National Army famous कौन पाई ना इंडिया तरफ रु सुभाष चंद्र बोस तो जॉइन करथिले एंड सुभाष चंद्र बोस वाज लीडिंग दिस इंडियन नेशनल आर्मी जे कि ईस्टर्न फ्रंट रु से अटैक करथिले ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर बट इट क्वेश्चन होची which of the following founded the Indian National Army किए प्रतिष्ठा करथिले या who was the founder ओके तो फाउंडर किए ही परिबे फाउंडर होचंदी आपनकर मोहन सिंह एटा मन रखथिबे बहुत समय कंफ्यूजन हुए कि सुभाष बोस थिले मोहन सिंह was the founder but later on Subhash Chandra Bose joined and Subhash Chandra Bose led the movement or led the army Indian National Army okay so answer would be मोहन सिंह फाउंडर होचंदी मोहन सिंह मन रखथिबे डेलिबरेटली एटा को दिया जाइछि सुभाष चंद्र बोस को ना नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुभाष चंद्र बोस को विषय देखो ही वाज ट्वाइस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ट्वाइस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रेट कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी अपन कहि परिबे तो प्रेसिडेंट को नेकी भी पतांगर कंट्रोवर्सी अछि देखिबा रिजाइन फ्रॉम द आईएनसी आफ्टर डिफरेंसेस विद गांधी ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक after his exit from the INC okay exit from the INC twice 1938 और 1939 ये दुईटी सेशन रे सुभाष चंद्र बोस हेतिले आपनकर प्रेसिडेंट मन रखति बेटा twice elected as the president 38 39 okay रिजाइन कहीं करथिले ना गांधीजी चाहू नथिले अंकर कैंडिडेटचर कारण आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थिला त्रिपुरी सेशन एक्जाक्टली जदि आपण देखिबे गांधीजी चाहूतिले कि आउ जणे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हुअंतु जोटे कि त्रिपुरी सेशन रे आमे देखिबा को मिलुची ऑल्दो गांधीजी कर सपोर्टेड कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस हरे की प्रेसिडेंट तो हिथिले बट ड्यू टू दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और अपोजिशन फ्रॉम द गांधी से फाइनली रिजाइन मध्य देथिले ओके तो सही हिसाब रे आपनकर ये होचे आपनकर करेक्ट सेकंड स्टेटमेंट बट माय क्वेश्चन टू यू जो कैंडिडेट को सपोर्ट करथिले गांधीजी तांगा नाटा टिके कहबे कमेंट रे द कैंडिडेट who was supported by Gandhi please mention in the comment section काहा को सपोर्ट करथिले गांधी and he founded the forward block after his exit from the INC फॉरवर्ड ब्लॉक पॉलिटिकल पार्टी आज भी आपण देखि परिबे ये भी एग्जिस्ट करूची तो आईएनसी रो से एग्जिट हे कि काहे कि आईएनसी एग्जिट हेतिले ना डिफरेंसेस विथ गांधी मे बी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थाई पर कारण गांधीजी कहउथिले नॉन वायलेंस ये कहउथिले वायलेंस तो आईएनसी रो रिजाइन करी के से फॉर्म करथिले कोन फॉरवर्ड ब्लॉक सो एग्जिटेड फ्रॉम द आईएनसी ओके सो आंसर वुड बी 1 2 1 3 तो किए से कैंडिडेट थिले नॉट नेहरू नुए आउ जणे थिले नेहरू वाज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ सुभाष चंद्र बोस कारण 1938 रे प्रेसिडेंट थिले सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एंड नेशनल प्लानिंग कमिटी माने फॉर्म करथिले एवं से नेशनल प्लानिंग कमिटी रो प्रेसिडेंट किए थिले पंडित नेहरू तो इमाने सपोर्ट करथिले पटाभी सीतारामैया आप एब्सोल्युटली करेक्ट पटाभी सीतारामैया जाको सपोर्ट करथिले गांधीजी ओके नेक्स्ट देखिबा कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स
Consider the following events: formation of the interim government, second cabinet mission plan, Mountbatten plan and INA trials. Chronological order se koichi. Ita hochi timeline related question. This question is about the timeline, and whenever we study or read history, I have already told you, just try to remember the timeline. नहीं, राजकुमार शुक्ला नुह. राजकुमार शुक्ला इज डिफरेंट. राजकुमार शुक्ला होचन से पर्सन जे गांधी जी को चंपारण पई इनवाइट करथिले. चंपारण रे जो स्ट्राइक चलीथिला, पीजेंट्स मानकर जो प्रोटेस्ट चलीथिला, चंपारण इशू को हैंडल करबा पई राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड गांधी. सो ही वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. एठी तांगो सहित ये होचन पटावी सतर में. ओके, so now coming to this timeline related question. First is formation of interim government. Formation of interim government केवे हितला? September 1946. Formation of interim government September 1946. INA trials केवे हला? INA trials जदि आपनकर मने थिबो, ये जो INA रे जो सोल्जर्स माने से माने इंडिया को सपोर्ट करुथिले, यानी कि फॉर द नॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया फाइट करुथिले, इंडिया इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करथिले एवं जो नेशनल आर्मी तरफ भी लड़ीथिले. तेणु से आईएनए ट्रायल्स बोली कहा जाए. ओके, तो आईएनए ट्रायल्स के हितला आपनकर 1945 ऑनवर्ड्स, नवेंबर 1945 ऑनवर्ड्स. माउंटबैटन प्लान केबे आस्तिला? माउंटबैटन प्लान जून 1947. June 1947. And this cabinet mission plan केबे आसला? March 1946. तो या परे आपण ताकू chronological देखि परिबे, sequence आपण establish करि परिबे. So answer would be what? Cabinet mission, तापरे INA trial. No, first रहइबो आपनकर कोन? INA trial first होउची INA trial. 4 रहिबो आपनकर, फर्स्ट होची 4. तापरे आपण देखंतु फर्स्ट 4 रहिबो. तापरे आपनकर रहिबो सेप्टेम्बर, मार्च, तो ऑब्वियसली 2, देन 1, देन 3 ए टाइप रहिबो. 4213. तो ये होची बी होची आंसर 4213. ओके, नेक्स्ट शिवा. Next question होची, with reference to the cabinet mission plan 1946. With reference to the cabinet mission plan 1946, which of the following statements are correct? The first one, it proposed a united India with a federal structure. Cabinet mission plan proposed a united India with federal structure. It suggested grouping of provinces into section A, B and C. It was fully accepted by both Congress and the Muslim League. Answer कौन? एक तो यूनाइटेड इंडिया मैंने प्रपोज कले, बट विथ फेडरल कैरेक्टर या फेडरल स्ट्रक्चर को रखिले, जमती आप 1935 रे भी थिला माने फेडरल स्ट्रक्चर को रखिले. एंड एमाने जो प्रिंसली स्टेट्स गुडिको थिले, प्रिंसली स्टेट्स या प्रोविंसेस गुडिको थिले, सेमानन को चॉइस देले. चॉइस कोन देले देखंतु. चॉइस देले जणे जदि चाहिबो इंडिया सहित इंक्लूड हेई परिबो, कैन गो विथ इंडिया और कैन गो विथ द पाकिस्तान, and the other one independent. Okay, जो चॉइस से माने देथिले एबीसी कैटेगरी रे डिवाइड करथिले प्रोविंसेस को. इट वाज फुली एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, कहीं ना मुस्लिम लीग डिसएग्री करथिला. ओके, मुस्लिम लीग, कारण मुस्लिम लीग हैड दिस इंटेंशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट. से कहला हमरो फर्स्ट हमरो सेपरेट स्टेट डिमांड को फुलफिल करो. सो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली. ए. Next, Shiva. The Royal Indian Army mutiny of 1946 was triggered primarily by the Royal Indian Navy mutiny. Indian Navy mutiny हुची ये हुची जो naval forces रे जो माने कामो करूथले Royal Indian Navy, सेमानंकर एक तो salary issue, food, सेमानकर facilities issue, ई सब जिनसे देखिबा को मिलथिला, जोथि पाएंगी poor pay and conditions, वर्किंग कंडीशंस एंड पुअर पेमेंट स्ट्रक्चर, जो पाएंगे से रिवोल्ट स्टार्ट करथिले, म्यूटिनी स्टार्ट करथिले. कारण बाय द टाइम द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया रीचेस, कारण ए समय जस्ट आपनकर सेकंड वर्ल्ड वॉर सरीथिला एंड
there was huge amount of drain of resources of the British government. Huge amount of drain of resources of the British government as a result due to this poor payment and conditions of working conditions and all. So ସେଇଥିପାଇଁ mutiny ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି and it was suggested कि ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो डिफेंस मेकानिज्म अच्छी डिफेंस मेकानिज्म इन द सेंस कि जो रॉयल इंडियन नेवी आर्मी ये मिलिटरी रे भी रिवोल्ट यानी कि रिबेलियन हैज एंटर्ड तेणु जोटा कि काइंड ऑफ ए पॉजिटिव फॉर द इंडियंस ओके तेणु आंसर होची आपनकर बी नेक्स्ट इबा With reference to Mountbatten Plan of 1947, consider the following statement. Mountbatten Plan. It accepted the partition of India. It accepted the partition of India. It led to the creation of Constituent Assembly of Pakistan. It recommended a phased withdrawal of British troops over 2 years. कौन आंसर को एक तो Mountbatten Plan जितने आसला Mountbatten Plan or Mountbatten, when this Lord Mountbatten came, he came with this idea कि the partition is inevitable. So this is absolutely correct. He accepted this because Pakistan as a separate statutory demand, it was in peak. तो acceptance तो निश्चिंत करिवार थिला and led to the creation of Constituent Assembly of Pakistan. जेमती हमें इंडिया पाई separate Constituent Assembly form करागला and Constituent Assembly would decide the future of the country. Similar manner for the Pakistan also Constituent Assembly was formed and this Constituent Assembly was given the responsibility to decide the future of the country. Third, dekhandu, it recommended a phased withdrawal of British troops over 2 years. It not phased manuji eventually, gradually, slowly. So it's not about the phased, rather it was immediate withdrawal of the British army or British forces. Okay, तो सही हिसाब रे अपन करो आंसर होची 1 and 2 A 1 and 2 बहुत हमर स्टूडेंट्स को जाना नहीं सेशन होउची बले टिके शेयर करि नियंतु ओके जते अधिका स्टूडेंट हमर रहबे सते आउ टिके एनर्जी आसीबो सेशन रे राइट नेक्स्ट देखिबा हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 कोंदु एटा काफी इजी क्वेश्चन ए क्वेश्चन बहुत चांसेस के टू क्वेश्चन आसीबो interim government को माने थिले these 3 people were part of the interim government these 3 people then obviously who was not part of the interim government से श्री राजगोपालाचारी जदि लियाकत अली खान देखिबे he was representing the Muslim League and Rajagopalachari was not part of this so answer would be apankaro C not a member of interim government of 1946 okay Answer C. Next. Consider the following statement about the Indian Independence Act 1947. Indian Independence Act 1947. The first, it ended British sovereignty or sovereignty of India princely states. Princely states mananku pattern is diya jaitila and princely states were simply functioning under the sovereignty of Crown or British government. It empowered the Constituent Assembly to legislate for their respective dominions. So, Constituent Assembly was formed for India. Constituent Assembly was formed for Pakistan as well. So, respective dominions. It allowed partition by mutual consent of the Indian National Congress and Muslim League. Obviously, it was not mutual consent. Although, Muslim League लगातार भाବରେ demand करथिला and there was a separate statehood that was the Pakistan. सेमानकर demand थिला but INC जदि आपण बिपिन चंद्रा जो हिस्टोरियन अछन तंकर ओपिनियन आपण पढंती से क्लियरली मेंशन करिसेंती आईएनसी वाज नॉट इन फेवर ऑफ दिस पार्टीशन कांग्रेस केबे भी चाहू नथला पार्टीशन करबा पई बट द सिचुएशन वाज सच लाइक जोथि पई के ताको पार्टीशन करबा को पड़िथिला सिचुएशन वाज व्हाट सिचुएशन थिला जो कम्युनल राइट स्टार्ट हेतिला कम्युनल राइट फोर्स देम टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि नाउ दिस पार्टीशन इज इनएविटेबल Okay. Congratulations, Mudali. पढ़ापढ़ी करंतु. We'll just continue your preparation.
It's good that you have cleared. ठीक अच्छे. ओके सो क्रिमिनल राइट देखा मिलता तो एक्सेप्ट करने को पड़ा तेणु से थर्ड स्टेटमेंट को आप रॉन्ग कहीपर. आंसर 1 and 2 हम सुजेनिटी या सोवरेनिटी. सोवरेनिटी हूँ आपंकर सुप्रीम या इंडिपेंडेंट जोटा आम कहे. ओके से कह सोवरेनिटी या सुप्रीमेसी जोटा आम कहे. तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स तो ऑपरेट करूले बट तांकर मेन अथॉरिटी क्या पाखे थिला ब्रिटिश क्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. Next question. With reference to the revolt of 1857, consider the following statement. Mangal Pandey is credited with firing the first shot of the rebellion. The revolt remained confined to northern and central India. The British Crown took over Indian administration from the East India Company as a direct result. कौन आप आंसर कौन? 1857, Mangal Pandey is credited with the firing the first shot of the rebellion. That is absolutely correct. कोथि पाई Mangal Pandey revolt करथिला जो आपनकर इनफील्ड राइफल थिला. इनफील्ड राइफल जो थ्री के आपनकर काउ एंड पीक रो जो फैट यूज करा जाय कि बुलेट तैयारी करा जाउथला एंड इट वाज आस्क्ड टू बाइट द बुलेट बिफोर यूज दैट. सो तनु बाइट द बुलेट मीन्स ऑब्वियसली पीग माने मुस्लिम को पाई ऑफेंसिव एंड काउ माने हिंदू को पाई ऑफेंसिव. तनु दैट वाज द रीजन. The revolt remained confined to northern and central India. Absolutely correct. कारण आपण नॉर्दर्न बेल्ट रे देखिबे बिहार हो झांसी हो ये जो पार्ट गुडी को देखिबे सेठी ही आपनकर मोस्टली जो 1857 सिपाही म्यूटिनी वाज कंसंट्रेटेड. साउथ इंडिया इंक्लूड नथिला सेठी. The British Crown took over Indian administration from the East India Company as a direct result. So Government of India 1858 Act तापर पास करा जाई आपण जानिथिबे and Government of India 1858 रे कारण या पूर्व रूल किए करूला ईस्ट इंडिया कंपनी. सिंपली ए कंपनी एबे जेमती आपण प्राइवेट कंपनी गुडी को देखुचनी. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सिंपली ए कंपनी ऑफ द इन इंग्लैंड. ओके तेणु ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड या ब्रिटिश क्राउन रियलाइज्ड कि ईस्ट इंडिया कंपनी हाथरू धीरे धीरे अथॉरिटी जाउची कहीं ना रिवोल्ट एमती हेलानी तो फ्यूचर रे आहुरी डिफिकल्ट हबो टू रूल दिस. सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन डिसाइडेड कि ईस्ट इंडिया जगह आमे डायरेक्टली रूल करिबु. तेणु से क्राउन को आपनकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को शिफ्ट करा जायथिला क्राउन को एवं नुआ ऑफिस गोटे क्रिएट करा गला वाइस रॉय जे कि कैबिनेट रो जने मेंबर थिबे ब्रिटेन कैबिनेट रो एंड सी वाइस रॉय रहिबे. वाइस रॉयंकर गोटे काउंसिल भी रहिबो जे कि तांको एडवाइस करिवो इन डिफरेंट मैटर्स. तेणु से हिसाब रे आपनकर तीनोटी जाक आंसर होची या स्टेटमेंट इन फैक्ट होची करेक्ट. ओके डी होची आंसर. नेक्स्ट देखियो. Consider the following statement regarding the Queen's Proclamation of 1858 या Crown जोटा हमें कहूचे Queen's Proclamation Government of India 1858 विषय कहूची से. First, it promised religious tolerance and non-interference in native customs. ये जो interference of British in the socio-religious life of the people, it was started in 1813. तो 1813 onwards जो religious इंटरफेरेंस हो या इंटरफेरेंस इन द सोशल लाइफ को टाइप रो आमे देखिचे जेमती सती प्रथा सिस्टम को एमाने अपोज करबा स्टार्ट कले. जो ट्रेडिशंस कस्टम अछि ताको अपोज करबा स्टार्ट कले. ब्रिटेन विथ फ्यू सोशल रिफॉर्मर्स से माने कले विडो रिमैरेज निहाती दरकार. तेणु ये मल्टीपल जिनस अछि जोथि पाई कि तापरे आपण देखिबे 1813 ऑनवर्ड्स रे 1813 एक्ट रे में मिशनरी एक्टिविटीज गुडी को भी इंक्रीज करै छै. ऑल्दो मिशनरी एक्टिविटीज वर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल बट सेमानकर गोटे इंटेंशन कोन थला कन्वर्जन ऑफ इंडियंस. कन्वर्जन यानी कि क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट करूथले. तेणु ये सब फैक्टर मिसिला परे फाइनली रिवोल्ट रे हमको देखिबा को मिलतला. एंड आफ्टर दिस revolt or the Government of India Act 1858, it was decided कि no more intervention in the religious or socio-religious life. तेणु सेति पई non-interference and religious tolerance को practice करा गला. It ended the doctrine of lapse. Doctrine of lapse आपण जानि थिबे जो झांसी गोटे फॉर एग्जांपल डॉक्ट्रिन ऑफ lapse अंडर रे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ताको एनेक्स करथिला. एंड डॉक्ट्रिन ऑफ lapse कोन कहउथला कि जदी बायोलॉजिकल सन नथिबो राजांकर दैट स्टेट
would be simply annexed by the British government. So doctrine of lapse को भी withdraw करा गला because it was highly resisted or protested by the princely state rulers. And the third one is the abolish the princely states completely. जो abolish the princely states completely से कहूची obviously no, कारण princely states completely न करके rather ସେମାନେ princely states को patronage दवा start कले. कहीं patronage माने support करिबा start कले. Reason कौन? ସେମାନେ କହିଲେ व्हाट एवर सच काइंड ऑफ रिवोल्ट वुड बी इन फ्यूचर जदि ए टाइप रो रिवोल्ट फ्यूचर हुए तेबे प्रिंसली स्टेट्स रो रूलर्स माने ही ताको सप्रेस करिवे ब्रिटिश मानकर से बळी कोनोसी डैमेज या ब्रिटिश मानकू से बळी इंटरफेरेंस करिवा को पड़िबा नाही अल्टीमेटली वी विल रूल दिस कंट्री वी विल एक्सट्रैक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस कंट्री बट जदि किछि रिवोल्ट हुए से कहार हेडाक हबो प्रिंसली स्टेट्स मानकर हेडाक हबो तो सेति पय सेबने प्रिंसली स्टेट्स मानकू पैटर्नेज यानी कि सपोर्ट दवा स्टार्ट कले सेति पय आपण देखिबे 1935 रे सेबने फेडरलिज्म कांसेप्ट को भी नहीं के दे हैव गिवन द मोर पावर टू द प्रिंसली स्टेट्स काहेकि ना सेमान को जते पावरफुल करिवे रिवोल्ट गुडी को सप्रेस इजीली हे परियो नेशनलिस्टिक डेवलपमेंट गुडी को जो होतला से समय रे ताकू इजीली सप्रेस करा जाई परियो नेशनलिस्ट मूवमेंट गुडी ओके तो से हिसाब रे एटा को आपण इनकरेक्ट कोइ परिवे आंसर वुड बी 1 and 2 क्लियर नेक्स्ट शिवा With reference to Indian Council Act 1861, consider the following statements. 1861 कौन से देखो, it allowed Indians to be nominated to the Legislative Council. It marked the beginning of legislative devolution of provinces. It introduced separate electorates for the first time. Answer कौन अब कौन दो? अच्छा 1861 रो समय कौन देखो 1861 just after 1858 पर 1858 पर गोटे काइंड ऑफ नेशनलिस्टिक एटमोस्फियर क्रिएट हिची एवं जो अर्ली नेशनलिस्ट जो मन को हमके कहूचे ये लेटर फेज रे वी स्टार्टेड कॉलिंग देम मॉडरेट्स सेही मनकर एक्टिविज्म का भी पड़ितला इफ यू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री छोटो छोटो ऑर्गेनाइजेशन से माने फॉर्म करिबा स्टार्ट कले एवं से छोटो छोटो ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रे से माने नेशनलिस्टिक जो कोन एजेंडा अछि ताकू स्प्रेड करेबा स्टार्ट कले तो से मनकर गोटे डिमांड थिला कोन ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रे यानी कि परे हमें सेटा को कहू इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रे अधिकरु अधिक इंडियंस मान को इंक्लूड करबा दरकार काहे कि ना इंडियंस माने जते अधिक इंक्लूड हेबे दे विल फ्रेम द पॉलिसी व्हिच इज गुड फॉर इंडिया दैट इज द सिंपल लॉजिक तनु सेही हिसाब रे माने 1861 रे आपण देखिबे ब्रिटेन कोन कला सेमान को किछि इंडियंस मान को नॉमिनेट करबा पे अलाउ कला कारण 1858 onwards Britain केवे भी direct confrontation कला नहीं with the Indians. There was no such direct confrontation. या पर I mean there was heavy use of diplomacy. Diplomacy in the sense कि समाने कौन use कले divide and rule. समाने कौन use कले technique ना carrot and stick policy. मन रखते बेटा को carrot and stick. Carrot and stick माने कौन जी तंकु सपोर्ट करिवो ताकू कैरेट देबे यानी कि टिके रिवार्ड देबे एवं जे ताकू अपोज करूथला ताकू हेवी हैंड रे सप्रेस करूथले या दे वर सप्रेस्ड विद आयरन हैंड दैट मींस स्टिक दिया जाउथला तनु कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी और द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलथला जोथि पई एठी सेवन को टिके कैरेट दिया गला यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रे दे हैव गिवन दिस मोर रिप्रेजेंटेशन थ्रू द नॉमिनेशन ओके इट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन टू द प्रोविंसेस दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन टू द प्रोविंसेस यानी प्रोविंसेस को भी धीरे धीरे समाने टिके टिके जेमती हमें देखिले यार जस्ट पूर्व क्वेश्चन ने दे हैव स्टार्टेड गिविंग पैटर्नेज टू द प्रिंसली स्टेट्स तनु जो माने प्रोविंसेस गुडी को भी थिला जोडे कि डायरेक्ट कंट्रोल रे समान करथिला तांको भी किछि किछि लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन करेवा स्टार्ट कले इट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट ए पर्यंत हेई नथिला प्रथम थर पई सेपरेट इलेक्टोरेट केबे हला 1909 Morley-Minto Reform Act जेतोले मुस्लिम्स माननको प्रथमे आपनकर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जायथिला 1909 ओके करेक्ट सो आंसर वुड बी ए ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा अनदर इंपोर्टेंट टॉपिक consider the following about the Ilbert Bill controversy 1883 it proposed that Indian judges could try Europeans in criminal cases Indian judges could try European in criminal cases. It led to the first major nationalist agitation by India. First major nationalist agitation by India. It was passed without any modification.
कौन हम आंसर कहतु इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी कौन ना इलबर्ट बिल पूर्वरु जो प्रोविजन रखा जाइतिला एंड दैट प्रोविजन वाज इंडियन जजेस कैन नॉट ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस जदि कोनोसी गोटे क्रिमिनल केस रे यूरोपियन टे इन्वॉल्व अछि तांकु ट्रायल करि परिबे नाही कि इंडियन जजेस मानकु से अधिकार से मानकु दिया जाय नथला व्हाई बिकॉज ऑफ द रैशियल सुपीरियरिटी कारण एमाने सुपीरियर रेस बोली निजको भाबुतले व्हाइट मैन्स बर्डन बोली कहूतिले तेणु सेति पई इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड टू ट्राई द यूरोपियंस ओके बट इल्बर्ट बिल ये ट्रेडिशन को चेंज कला इल्बर्ट बिल स्टार्टेड अलाउइंग द इंडियन जजेस जो माने कि यूरोपियंस माने को ट्राई करि परिबे जदि यूरोपियंस माने कोनोसी क्रिमिनल केसेस रे इन्वॉल्व थांदे but it was highly criticized in the parliament of Britain. It was highly criticized and finally it was withdrawn kara jaitila. It led to the first nationalist agitation by Indians. First nationalist agitation mane kon na jo Indians mane thile semane bhi etaku यार withdrawal को अपोज करुଥିଲେ कारण सेमाने ब्रिटेन वाला केबे भी चाहिले नहीं ब्रिटेन वाला आई मीन सिवियरली दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एमती केमती ही परिबो गोटे इंडियन गोटे इन्फीरियर इंडियन टे हमको केमती ट्राई करिवो तो ये जिंस तेणु फर्स्ट नेशनलिस्ट एजिटेशन भी हमको देखा मिली से समय रे एंड इट वाज पास्ड विदाउट एनी मोडिफिकेशन ऑब्वियसली एटा को विड्रॉ ही करा जाइतिला तेणु से हिसाब रे आपण एटी आंसर 1 and 2 ही करि परिबे ओके नेक्स्ट देखिबा regarding the Indian National Congress consider the following statement it was founded in 1885 by Alan Octavian Hume ये तो first statement second जो first session was held in Bombay and the third statement its early leadership came from both moderates and extremists okay Alan Octavian Hume जी की गोटे इंग्लिश पर्सन थिले यानी कि ब्रिटेन नेशनल थिले सी ही कांग्रेस को फॉर्म करथिले एंड इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि गोटे ब्रिटिश नेशनल काहे कि हमको हेल्प करिवो बाय फॉर्मिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फाउंडिंग या फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंडिया फ्रीडम आपण कहि परिबे बट तार इंटेंशन कोन थिला द इंटेंशन टू फॉर्म दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिफरेंट एमानकर मोटिव थिला ए जो 1885 पूर्वरु जदि आपण देखिबे 1858 पर 1885 पूर्वरु there was a lot of small organizations and they started revolt or movement in different parts of the country and finally British government decided कि जो छोटे छोटे लेवल रे different parts रे ये जो protest movement से माने करूचनी instead of doing that let's give them one platform and it will be easier for the British to suppress and it will be easier for the British to deal with those grievances तो सेति पई से गोटे सिंगल प्लेटफॉर्म देले but they did not know it will lead to the India's freedom तो Alan Octavian Hume सेति पई करथिले अच्छा से समय रे जतबे फॉर्म करा गला कांग्रेस हु वाज द वाइसरॉय किए वाइसरॉय थिले आपण आंसर करिवे कमेंट सेक्शन में The first session was held in Bombay, absolutely correct. Bombay रे ही थिला उमेश चंद्र बनर्जी was the presiding the session and 72 delegates माने join करथिले. Its early leadership came from both moderates and extremists. Obviously extremists केबे आसिले just before the Swadeshi movement यानी कि Swadeshi movement 1905 onwards it was led by the extremist members but से पर्यंत यानी कि 85 रो 1905 ऑलमोस्ट 20 इयर्स ए माने मॉडरेट्स माने डील करथिले मॉडरेट्स को माने थिले जो माने अर्ली नेशनलिस्ट थिले जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सो आंसर वुड बी व्हाट आंसर वुड बी ए 1 and 2 नहीं वाइसरॉय की थिले कोन वाइसरॉय नेक्स्ट सेवा Okay, with reference to the partition of Bengal 1905, with reference to the partition of Bengal 1905, consider the following. Partition of Bengal की start करथिले. It was carried by the Lord Curzon. It was carried by the Lord Curzon. Partition of Bengal काहेकि हेई थिला. It was mainly aimed at the administrative convenience. जदियो it was officially declared. एटा को officially कुहा गला कि होची administrative convenience, but if you see the real intention it was on the basis of what religion okay divide and rule कारण
Bengal was the epicenter of nationalism or national activism. It was the epicenter. So when Curzon came, Curzon saw the nationalistic movement was simply growing in Bengal. So he wanted to divide the whole Bengal, and Bengal was a large province. So what he did, he simply divided into two parts, the Eastern Bengal and the Western Bengal. Eastern Bengal was majority with the Muslims, and Western Bengal was a majority of Hindu. So experts says if administrative convenience would be the factor, जदि तांकर intention था कि मुझे administrative convenience basis रे divide करीबी, तबे he could have done on the basis of language. एटा को मन रखिबे, he could have done जेतले आपण mains भी लेखुचंदी, you can give the solid argument. Language basis रे divide करी पारथा ना, instead of doing that, what he did on the basis of what? On the basis of religion. तेणु तांकर इंटेंशन कौन थिला कि मुस्लिम आउ हिंदू मानन को डिवाइड करिकी रूल करिवा. ओके, तेणु ईस्टर्न बेंगल वाज डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम. आजिर जो वर्तमान आपण देखुचंदी खास करके आसाम एंड बांग्लादेश रो जो रीजन अछि ईस्टर्न बेंगल हे गेला. वर्तमान जो बेंगल ई जो रीजन आपण देखुचंदी सेटा वेस्टर्न बेंगल हे गेला. ओके, ऑल्दो इट हाउ जी करेक्ट कारण ऑफिशियली अनाउंस करा गेला, इट वाज मेनली एम्ड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. विड्रॉ केबे करागला? इट वाज एनल्ड इन 1911. विड्रॉ करागला 1911 रे. ओके, आंसर कते हबो? माने आंसर कोन हबो? टी 1 2 1 3. ओके, Susmita, the session would be of I think 6 hours. Moro till to 12:30, then Sipsankar sir will start geography and other subject, and then the Sudipta ma'am. So 4.5 5 hours. Okay, good morning all of you. ठीक है, शेयर करूँ तो बाकी आपनकर फ्रेंड्स मानक सहित कहतु केमती सेशन चलची बोले. नेक्स्ट, स्वदेशी मूवमेंट. The Swadeshi movement 1905-8 involved which of the following elements? Swadeshi movement केवे स्टार्ट करा गला? 1905 रे. काहेकि ना प्रथम तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट करा गला, and anti-partisan movement led to the Swadeshi movement. So Swadeshi movement रो main methodology या technique कौन थिला? Boycott. So first से मैंने कौन कले? Boycott of British goods. Swadeshi boycott of British goods, number 1. Last, next, promotion of indigenous industries. Promotion of indigenous industry हमें देखिए indigenous industry यानी indigenous product, indigenous school, ये सब गुड़ी को भी से मैंने start कले. Promotion of indigenous industries. Formation of underground revolutionary group. ये जो formation of underground revolutionary group ये हमें देखिए कौन ना जेहेतु स्वदेशी मूवमेंट को लीड किए करूथले एक्सट्रीमिस्ट. मन रखते बेटा, स्वदेशी मूवमेंट को लीड किए करूथले एक्सट्रीमिस्ट लीड करूथले, तेणु सेठी किछि किछि रेवोल्यूशनरी ग्रुप काम करूथले अंडर द लीडरशिप ऑफ डिफरेंट लीडर्स ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. ओके, तेणु से हिसाब रे यार आंसर कोन हबो? आंसर होउची 1 2 1 3 सी ऑफ आंसर. क्लियर? तीनोटी जाका करेक्ट अछि. नेक्स्ट को जीवा. With reference to the Surat Split 1907, Surat session रे कांग्रेस टी दुई भाग हेतला. Surat Split of 1907, consider the following. It was between the moderates and extremists, number 1. Second, the moderates led by Gokhale wanted constitutional agitation. The split happened at the Lucknow session. Surat Split कहूचे, Lucknow session कहूचे, obviously नुहे. Lucknow ये statement करेक्ट. Lucknow session ने कौन हेतला? Surat Split और Lucknow meet माने Lucknow रे सेमानकर पुणी थरे कन्वर्जेंस हेतला, यानी कि जो स्प्लिट थला एंड हेतला लखनऊ सेशन रे, खास करके कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड आपनकर मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ये चार जण जाको दे यूनाइटेड एंड दे डिसाइडेड वी हैव ओनली वन एजेंडा, दैट इज इंडिपेंडेंस. ओके, तेणु से हिसाब से एटा इनकरेक्ट अछि, बट देखिबा इट वाज बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को भितरे स्प्लिट देखा जाइतला बिकॉज ऑफ टू रीजंस. फर्स्ट कोन थिला? on the basis of the president candidate, on the basis of president candidate. कारण ता पूर्वर जो सेशन थिला, आई थिंक कैलकाटा सेशन थिला सेटा, से कैलकाटा सेशन रे एक्सट्रीमिस्ट माने चाहुंतले तिलक वुड बी द प्रेसिडेंट कैंडिडेट. ओके, एक्सट्रीमिस्ट माने चाहुंतले तिलक एंड मॉडरेट्स माने चाहुंतले दादा भाई नारोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. बट समान को भितरे कांग्रेस तरफ रु
କୁହାଗଲା କି ନାଇଁ ନାରୋଜି ହିଁ ହେବେ ତ ଫାଇନାଲି एक्सट्रीमिस्ट माने छाड़ देते ग्रुप एंड इट वाज ए स्प्लिट. इट वाज द फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड फैक्टर जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कोटे हितला बंगाल रे स्टार्ट हितला. स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन बंगाल बट एक्सट्रीमिस्ट चाहूतले टू टेक दिस स्वदेशी मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया और पैन इंडिया. कहीं ना दे रियलाइज्ड कि भाई दिस इज द राइट टाइम to make it a grand success or huge success so that we will get the independence or the Swaraj tangar jo idea thila. But moderates did not agree on that. Moderates says Bengal partition is a problem of Bengal and please limit this Swadeshi movement within the Bengal itself. Do not take it to the other parts of the country. Karana Tilak kon kale ita ko Bombay nei ki polele. He took this Swadeshi movement to the Bombay and there he organized जो आपनकर शिवाजी फेस्टिवल गणेश पूजा ये सब ऑर्गेनाइज करके लोगों को गैदर करके दे स्टार्टेड मोबिलाइजिंग पीपल. तो ये जिनस को से माने स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज करथिले को माने मॉडरेट्स माने ता पछरे रीजन कोन थला व्हाई दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग इट. से माने कहले भाई दिस इज नॉट द राइट टाइम और वी शुड नॉट बी काइंड ऑफ वेरी एग्रेसिव इन दैट. कारण मॉडरेट्स मानकर अप्रोच ही अलग थिला. से माने मॉडरेट्स सेति पई कोआ जाउची नरमपंथी बोली कहू ना हमें ओडिया रे. तो मॉडरेट्स कोन पई कहतला ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर रे प्रेयर पिटिशन ये सब जिनसे को फॉलो करेगी. सो दैट वाज द रीजन देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो जो थी पई स्प्लिट देखिबा को मिलची. The moderates led by Gokhale wanted constitutional agitation. Obviously, yes. से चाहूले कि constitutional agitation ही करबा पई. In fact, moderates माने boycott जो टेक्निक अछि ना ताकू भी से माने क्रिटिसाइज करूथले because they says boycott means use of force. तो हमकु अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथोडोलॉजी को यूज करिवार नाही. आमे फोर्स यूज करिवो नाही. आमे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स रे जिवो एंड डेफिनेटली विल अचीव आवर गोल. ठीक अछि. तो से हिसाब रे आंसर आपनकर कोन हबो 1 and 2 हबो. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अन्ना हजारे. ओके. Morley-Minto Reform 1909 introduced which of the following? 1909 Morley-Minto Reform. यार टिके बैकग्राउंड में आपन कहूची then you will understand. 1905 आपनकर Bengal partition ही के anti partition movement and the Swadeshi movement. 1906 All India Muslim League formation. All India Muslim League formation. So and they started what? Special preference to the Muslims. They started special preference to Muslims. And finally, it was reflected in the Morley-Minto Reform 1909. जितबले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गला मुस्लिम्स मानंकु. यार माने होची केवल मुस्लिम्स माने ही मुस्लिम्स मानंकु वोट देई पारिबे. सेपरेट इलेक्टोरेट्स. Indian majority in the executive council and election of Indians to the central legislative council. Okay, answer कौन होगा देखो. Election of Indians to the central legislative council ये obviously provision नथिला. Indian majority in the executive council रे किसी Indians मानंको include करा गला to pacify the moderates. कारण मु कहितली आपनको ए माने कोन carrot and stick policy. तो एठी स्टिक कहा को दिया गला से समरे स्टिक दिया गला एक्सट्रीमिस्ट माननको जो माने एक्चुअली लीड करूथले मूवमेंट को से मानको सप्रेस करा गला. किछि जण को अरेस्ट करा गला, किछि जण को डिपोर्ट करा गला, किछि जण को एम्ति सप्रेस करा गली देश छाड़ी की पड़ाइले जेमति अरविंद घोष जोटा कि बर्तमान पंडिचेरी आपण तांगर आश्रम देखिबे. तो मॉडरेट्स माननको टिके रिलैक्स दिया गला कि भाई ठीक अछि तम डिमांड अछि किछि इंडियंस को इंक्लूड करबा आमे कर देलु. मुस्लिम्स माननको भी स्पेशल प्रेफरेंस दिया गला विथ रिस्पेक्ट टू द सेपरेट इलेक्टोरेट. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज आपनकर नहीं एटा टिके कंफ्यूजन हल. कंफ्यूजन होची आपनकर इंडियन मेजॉरिटी इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल 1905 नहीं एटा इंडियन मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल नो एटा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इलेक्शन ऑफ इंडियंस को करागला. तो ये स्टेटमेंट अब ठीक, ये स्टेटमेंट अब भूल, ये अब भूल आपनकर, ये अब ठीक. सो 1 and 3 हो यार आंसर. ओके 1 and 3 इंडियन मेजॉरिटी नथिला एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ये जो मॉडरेट्स मानक अपीज करागला इलेक्शन ऑफ इंडियंस टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. मोर इंडियंस वुड बी इलेक्टेड टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके नहीं एटा आंसर हबो बी. बी मन रखते बेटा 1 and 3. सेकंड हबनी. सेकंड इंडियन मेजॉरिटी नथिला सेटा बट सेवन को इलेक्शन पई कोआगला इंडियंस मानक मॉडरेट्स को अपीज करबा पई. ओके नेक्स्ट देखियो. विथ रेफरेंस टू होम रूल मूवमेंट.
होम रूल मूवमेंट को किए लीड करथिले एनी बेसंत एंड बाल गंगाधर तिलक होम रूल मूवमेंट केबे आस्थिला 1916 रे होम रूल पछरे रीजन कोन थिला नै तो स्वदेशी मूवमेंट आपनकर एंड ही जाईची एमानकर सूरत स्प्लिट तापरे सेपरेट इलेक्टोरेट ये सब प्रॉब्लम गुडी को चलीची तापरे आपण देखिबे ई जो 1910 ऑनवर्ड से जो डिकेड अछि टिल गांधी अराइव्स इन इंडिया से समय रे कोनोसी प्रकार मूवमेंट आपन को देखिबा को मिलिबो नाही काहेकि ना स्वदेशी मूवमेंट को माने सप्रेस करबा स्टार्ट कले प्लस ए जो मॉडरेट्स और मुस्लिम्स माने थिले मुस्लिम लीग इनफैक्ट सेमान को अपीस करबा स्टार्ट कले ब्रिटेन वाला तेनु कोनोसी मूवमेंट से समय रे आपन देखिबेनी फाइनली जो माने यूथ थिले खास करके यूथ पीपल जो माने इंस्पायर्ड बाय दीज एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स से माने फाइनली डिसाइड कले व्हाट शुड वी डू लीडर्स माने तांकर काम रे व्यस्त होछन बट how to mobilize the energy and then Ani Besant realized let's go for one movement जोटा कि होम रूल मूवमेंट बोली कहा जाए होम रूल मूवमेंट माने होची सेल्फ रूल निजे निजे को रूल करबा तेनु तांको सहित किए थिले बाल गंगाधर तिलक आनी बेसंत एमाने स्टार्ट करथिले मूवमेंट सेकंड स्टेटमेंट देखंदो इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कारण जो होम रूल माने सेल्फ रूल that means complete independence आपण कहि परिबे it was inspired by the Irish home rule movement it was inspired by the Irish home rule movement was kind of extremist थिला काफी revolutionary Irish home rule movement to हमर जो revolutionary extremist थिले ना जो माने बम कल्चर ऊपर बिलीव करूथले सेमान को पई काफी इंस्पिरेशन थिला बम कल्चर बट होम रूल वाला नो ठीक अच्छे तो आंसर ये आपंकर हम ए आंसर ये हम 1 and 2 नहीं ये भी कंफ्यूजन रोज इटा हम आपंकर 1 and 3 हम आंसर ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस एमाने करथिले डोमिनियन स्टेटस कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें 1929 देखिचे प्लस आमे स्वराज जो आपनकर एक्सट्रीमिस्ट वाला देखतिले एठी इंस्पायर्ड बाय द आयरिश होम रूल मूवमेंट एमाने इंस्पायर हेतिले तो एठी आंसर हबो 1 and 3 सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एमाने करनथिले एमान करथिले होम रूल मूवमेंट थ्रू रे डोमिनियन स्टेटस एटा मन रखतिबे डोमिनियन स्टेटस ओके डोमिनियन स्टेटस क्लियर अछि नेक्स्ट देखिबा 1 and 3 Consider the following statement regarding Jallianwala Bagh massacre 1919. 1919. It was ordered by the General Dyer. Jallianwala Bagh massacre हवा पछरे रीजन कोन थला जो किचलू ब्रदर्स थिले सेमानंकु अरेस्ट करा जायथला अंडर दिस राउलट एक्ट मन रखति बेटा को राउलट एक्ट आपनकर 1918 रे आसीथिला राउलट एक्ट पछरे रीजन माने राउलट एक्ट कोन थिला राउलट वर्क वाज काइंड ऑफ अपन कहि परिबे विदाउट एनी अरेस्ट वारंट काहा को डिटेन करबा ए सब जिंस थिला ओके तेणु राउलट एक्ट भी आसवा पछे रीजन कोन थिला ना ई जो होम रूल मूवमेंट को सप्रेस करबा पई 1916 रे जोटा स्टार्ट हितला ये क्वेश्चन ने किछ डाउट नथिबो होपफुली फर्स्ट और थर्ड करेक्ट एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश होम रूल मूवमेंट एंड थर्ड टा कंप्लीट इंडिपेंडेंस माने हमें 1929 रे देखिचे तो एमानकर थिला डोमिनियन स्टेटस होम रूल वालांकर ठीक अछि तो ए क्वेश्चन को आसन जालियानवाला मासअप करे आपनकर स्टार्ट हिची कहा थ्रू राउलट एक्ट पर स्टार्ट हला ताको काउंटर करबा पे काहेकि ना राउलट एक्ट लॉन्च करा गला 1918 टू सप्रेस द होम रूल मूवमेंट एक्टिविस्ट ओके अच्छा राउलट एक्ट 1918 रे जतबले लॉन्च करा गला तार माने कोन थला यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कि विदाउट एनी अरेस्ट वारंट काहा को भी डिटेन करि परिबे अरेस्ट करि परिबे तो खास करके जो फंडामेंटल राइट्स थला ना ताको सप्रेस करा जाइथला एनीवे तो ता एगेंस्ट रे तोले किचलू ब्रदर्स को अरेस्ट करा गला तो अरेस्ट एगेंस्ट रे गोटे काइंड ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट जो बैसाखी डे दिन एटा ऑर्गेनाइज करा जाइथला जालियानवाला बाग रे ओके तेनो डायर विदाउट एनी वार्निंग से फायरिंग करथिले इट ऑकर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलट एक्ट
martial law was declared in the Punjab thereafter. तेणु राउलट एक्ट अगेंस्ट रे ही प्रोटेस्ट थिला, साइलेंट प्रोटेस्ट प्लस किचलू ब्रदर्स को अरेस्ट करा जाइतिला एंड मार्शल लॉ यानी कि मिलिटरी लॉ वाज डिक्लेयर्ड इन द पंजाब देयर आफ्टर. सो आंसर इज आपनकर 1, 2 and 3. ठीक अछि. साइमन कमिशन 1927 साइमन कमिशन आसिला. साइमन कमिशन आसिथिला काहेकि 1919 लास्ट आपनकर मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एक्ट थिला, सेटा 10 वर्ष हवा को जाउथला. 1929 रे व्हाट वुड बी द नेक्स्ट और फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, नेक्स्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. तो 1929 डिसाइड करबा पई 1927 ने साइमन कमिशन को इंडिया को आगला आसीबा पई. साइमन कमिशन तो इंडिया आसी के पहुंचला, इट वाज हाईली अपोज्ड. काहेकि देयर वाज नो सच इंडियंस इन दैट साइमन कमिशन, नो सच इंडियन मेंबर्स. काहेकि इंडियन मेंबर्स माने सेठी नथिले, कंप्लीट व्हाइट कमिशन बोली कहा जाए. त रीजन होचे ब्रिटिश कोन भाबुतला, ब्रिटिश कोन भाबुतला हमको इंफीरियरिटी, ये जो रेशियल सुपीरियरिटी थिला ना, कारण आमे होचे इंफीरियर, आमे निजर फ्यूचर आमे निजे डिसाइड करि परिबा नाही. सो इट इज द ब्रिटिशर कैन डिसाइड आवर फेट. तेणु सेइते पई समरे नो इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड करथिले. इट एम टू एक्सटेंड कम्युनल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट को से एक्सटेंड करथिला कि आंसर होची नो. तार मेन थिला कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देखिबा पई. थर्ड स्टेटमेंट देखंतु, इट वाज सीन एज वायोलेटिंग द मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड प्लेस. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. काहे कि ना मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड रे कोन को आगला कि नेक्स्ट जो फ्यूचर आमे देखिबा इंडिया पई, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इंडिया पे आमे नहीं के आसीबा, इन दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इंडियंस मस्ट बी इंक्लूडेड टू डिसाइड देयर फ्यूचर, जोटे कि नथिले केबे साइमन कमिशन रे नथिले, ऑल व्हाइट कमिशन बोली कहा जाए. तो सेति पई बी आमे कहि परबो आंसर 1 and 3. नेहरू रिपोर्ट 1928 विषय रे देखिबा. नेहरू रिपोर्ट काहे कि आसिला, जेतले साइमन कमिशन केम विथ दिस आइडिया कि नो इंडियंस वुड बी पार्ट ऑफ दिस. So it was kind of an insulting for Indians. काहेकि ना समस्त को लगिला कि इंडियंस माने निजर फ्यूचर को डिसाइड करि परिबे नाही. They do not have this capacity to decide what would be their future constitution. तेणु it was a kind of a challenge. So finally नेहरू रिपोर्ट यानी कि जो सीनियर नेहरू, मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, he came with this report. एवं सेही कांग्रेस सेशन रे ही जेहेतु से प्रेसिडेंट थिले, he came with this report, नेहरू रिपोर्ट बोली कहा जाए ताको. नेहरू रिपोर्ट रे कौन कौन से प्रेजेंट करथिले देखन. तो फर्स्ट वन, he came with this idea of dominion status for India. dominion status होची इंडिपेंडेंट इंडिया रहिबो बट सुप्रीम अथॉरिटी रहिबो क्राउन पाखरे यानी कि क्वीन पाखरे. क्राउन या क्वीन पाखरे रहिबार माने होची सिंपली कहि परबे किछि डिसीजन आपण ऑब्वियसली डे टू डे फंक्शनिंग तो आपनकर चलीथिबो, बट किछि यदि मेजर डिसीजन नबा को पड़िबो तबे क्राउन ही सुप्रीम अथॉरिटी. तो एटा को डोमिनियन स्टेटस बोली कहा जाउथला. तो नेहरू रिपोर्ट कहला कि आमे डोमिनियन स्टेटस मागुचे, बट दिस डोमिनियन स्टेटस वाज रिजेक्टेड बाय यंग जो माने थिले यंग लीडर्स माने, खास करके पंडित नेहरू, द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू. पंडित नेहरू ताको रिजेक्ट कले एंड सुभाष चंद्र बोस भी रिजेक्ट करथिले. Joint electorates with reservation for minorities and complete independence. Complete independence तो obviously नथिला, तो complete independence को ସେମାନେ accept कर माने starting कर नथिले या पर complete independence आसीची. and joint electorates with reservation for minorities तो एटा को भी ସେମାନେ pitch करथिले. काहेकि joint electorates मु आपन कहबी ना 1916 रे जो लखनऊ मीट आपनकर हेथिला, सेठी मुस्लिम लीग डिसाइड कला कि आमे कांग्रेस सहित मिसिकी काम करिवो. देयर वाज डिसॉल्व ऑफ द डिफरेंस एंड दे डिसाइडेड कि भाई लेट्स वर्क अंडर द सेम बैनर एंड आवर ऑब्जेक्टिव और गोल इज द सेम टू गेट द इंडिपेंडेंस. बट सेमानकर गोटे क्लॉज कोन थिला मुस्लिम लीग रो कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट तको हम मिलिची दैट विल बी इंटैक्टेड, और से जेमति काम करथला सेमति ही रहइबो, इंटैक्ट रहइबो. देयर इज नो सच abolition or withdrawal of that provision. तेणु 16 रे when they लखनऊ रे मीट कले सेमाने सेमति सेपरेट इलेक्टोरेट ही चलीथिला, प्लस सेमाने यूनाइटेड ही की काम करथिले. तो एठी सेमाने कहले जॉइंट इलेक्टोरेट्स विथ रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, सेइथ पय आपनकर नेहरू रिपोर्ट कहितला. एटी आंसर अब आपनकर A 1 and 2. ओके, नेक्स्ट देखिबा दांडी मार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Dandi March 1930 was significant because first one, it violated the SALT law non-violently. It violated the SALT law non-violently. Dandi March hoche apanka SALT satyagraha jota ki ame koche kono civil disobedience movement, the second mass movement which was led by the Gandhi. Okay, civil disobedience movement launch kariba pai decide करा चाहिए 1929 जो लाहौर सेशन अपन करो थिला सेठी थिले पंडित नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू was the president, and in that session it was decided that a mass movement would be required. जेहेतु साइमन कमिशन ये सब आसीथिले and they did not listen us, तेणु एमान decide कले there would be a mass movement, but Gandhiji would be given this responsibility to decide what would be the course of the mass movement, and Gandhiji decided SALT would be that factor जहाँ बेसिस में मास मूवमेंट स्टार्ट करिबा, एंड दे स्टार्टेड दिस दांडी मार्च एंड वायोलेटेड द सॉल्ट लॉ नॉन वायोलेंटली. सॉल्ट लॉ कोन थिला ना ब्रिटिशर माने सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग पई अलाउ करू नथिले. सेमान को कहिवा कथा होची देयर विल बी ए कंप्लीट बैन ऑफ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय इंडियंस. तेनु सॉल्ट ताले सेमाने कोट कंज्यूम करिवे, कारण जेहेतु इंडिया पूरा कोस्टल बेल्ट थिला इजिली अपन सॉल्ट मैन्युफैक्चर करि पड़थले, एंड दे डिसाइडेड कि नहीं आमे जो मशीन रिफाइंड फाइन क्वालिटी सॉल्ट आसे कि तम कंट्री रे बिका हबो सही कंट्री सही जिंस गुडा को यू हैव टू परचेज, बट आपण मैन्युफैक्चर करि परिबे नाही. देयर इज ए कंप्लीट बैन, बट सॉल्ट मैन्युफैक्चर करिकि से लॉ को वायोलेट करा जाइतला. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जोटा आपण करेक्ट कहि परिबे. It marked the beginning of the civil disobedience movement. That is absolutely correct. It directly led to the round table conferences. जेहेतु ये दांडी मार्च आपनकर स्टार्ट हेची तेणु सरकार भाविले लेट्स गो फॉर नेगोशिएशन, सेति पई समान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेबा स्टार्ट कले. तेणु फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जेतोले समान डाकिले बिफोर द गांधी-इरविन पैक्ट भी से फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जदियो जोगो देई नथला, बट इट डायरेक्टली रिलेट टू द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. सो 1 2 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट देखिबा गांधी-इरविन पैक्ट. नेक्स्ट पुनी आसीची जो जस्ट सॉल्ट सत्याग्रह पर गांधी-इरविन पैक्ट आसला अगेन द नेगोशिएशन, कारण ब्रिटिश रियलाइज्ड कि वी नीड टू हैव ए नेगोशिएशन, कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे हमें ऑलरेडी गोटे मास मूवमेंट देखिचे, एंड देन हमें बाकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म भी देखिचे. तो सेमान डिसाइड कर लेट्स हैव ए नेगोशिएशन. सो गांधी-इरविन पैक्ट 1931 रे कोन नेगोशिएशन हिची देखिबा. फर्स्ट विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. विड्रॉल ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ करो, यानी कि सॉल्ट दांडी मार्च को विड्रॉ करो. रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. ये रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्चुअली डिमांड कहा पकरू थिला, सेटा थिला आपनकर गांधी पकगु, एंड गांधी कहले रिलीज दोस पॉलिटिकल प्रिजनर्स दोज हु आर नॉन वायलेंट, जो माने नॉन वायलेंट थिले सेमान को रिलीज करा जाओ. थर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन द राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एवं एठी इरविन गांधी का भीतर ये डिसाइड करा गला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस को जॉइन करबा पई, इनफैक्ट गांधी को जॉइन करबा पई, कारण फर्स्ट कॉन्फ्रेंस रे कांग्रेस गांधी केही भी जॉइन करे नथले. सेत पई बिपिन चंद्र कोहंती द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कि इट वाज ए रामलीला विदाउट राम, कारण रामलीला तो होतला बट मेन कैरेक्टर जी के कांग्रेस या गांधी जी थिले सेठी नथिले, ही वाज एब्सेंट इन दैट. तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड, एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रे गांधी वाज देयर, एंड फर्स्ट गांधी विड्रॉ कले राउंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, एंड देन वेंट टू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बट इट वाज क्वाइट इनकंक्लूसिव. आई मीन देयर वाज नो सच रिजल्ट. अगेन ही केम बैक टू इंडिया एंड रिज्यूम्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो इनटे आंसर आपनकर कोन हबो? आंसर हबो आपनकर सी 1 2 1 3. With reference to Poona Pact of 1932, Poona Pact of 1932, consider the following statement. Poona Pact 1932, देखिए first, it was signed between the Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar. It replaced the separate electorate for Dalits with reserved seats. It was accepted by the British government. कौन अब आंसर कौन तो? Poona Pact पछरे रीजन कौन थला 1932 रे कहीं की Poona Pact गोटे इशू आसेला या ये कहीं की ये डिस्कशन आसेला. कारण Ambedkar was from the very beginning he was fighting for the rights of the Dalits, and B.R. Ambedkar was the only person जे कि round table conference रे join करते. In fact, all these 3 round table conferences, and he was representing the Dalit community. Dalit रा betterment पाई से चाहूँते. But Mahatma Gandhi
आंबेडकर को आइडिया को अपोज करुले कारण आंबेडकर चाहूले सेपरेट इलेक्टोरेट दवा क्या दलित्स मान ओके सेपरेट इलेक्टोरेट दवा जमी मुस्लिम मान को दि जाए सेम दवा बट महात्मा गांधी अपोज्ड इट महात्मा गांधी सेड कि भाई से सेपरेट इलेक्टोरेट देदेवा दलित्स मान को तो से आउ मेन स्ट्रीम कम्युनिटी मेन स्ट्रीम सोसाइटी रे इंटीग्रेट हो पारे ना दे वुड बी कंसीडर्ड एज डिप्राइव्ड और नेग्लेक्टेड से माने कि कंसीडर करिवे कारण से कहते महात्मा गांधी कहते भाई दलित्स आर आई मीन दे आर हरिजन्स हरिंकर जन से माने तेणु से आम इंटीग्रेट करेबा बट आंबेडकर वाज क्वाइट एडमेंट तो फाइनली से भितर कारण गांधीजी फास्टिंग रे पळेले तो गांधीजी फास्टिंग रे गला माने प्रॉब्लम कारण आउ फास्टिंग रू फेरिबा कष्ट तेणु फास्टिंग रे डेथ न हो जाऊ से बी आर आंबेडकर और तांका भितर गोटे नेगोशिएशन है से कहले ठीक अच्छे रिप्लेस द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स विथ अ रिजर्व सीट यानी कि किसी सीट्स आम रिजर्व करवा ओके थर्ड स्टेटमेंट कौन था थर्ड स्टेटमेंट था इट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट सो आंसर वुड बी योर डी 1213 ओके नेक्स्ट देखिए The Government of India Act 1935 provided for provincial autonomy, a federal structure with princely states, abolition of the post of Governor General. कौन हो आंसर कौन ये abolition of post of the Governor General एठी नथिला त 1935 रे सबले किछ नै 1935 was about the जो आपनकर फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करबा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दबा म आपन कहितली फेडरल स्ट्रक्चर विथ प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि मोर ऑटोनॉमी वर गिवन टू द प्रोविंसेस कहीं ना प्रोविंसेस मानकू जिते ऑटोनॉमी या पावर दिया जिवो से मूवमेंट गुडी को से सप्रेस करि परिबे विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट आउ चाहू नथला कि मुंती ये छोटो मोटो पेटी रिवोल्ट या मूवमेंट रे मु निजर एनर्जी मोबिलाइज करी बेटर लेट देम सप्रेस दोज मूवमेंट्स एंड ऑल मु मोर फोकस कोथरे करी रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन ये सब जिनस कॉलोनियल एक्सपांशन ये सब जिनस ओके से आंसर आपन रेडी कोन हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आंसर हो आपन ए 1 and 2 ओनली ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर आउटकम्स ऑफ 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस आउटकम कांग्रेस फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज इन सेवरल प्रोविंसेस Muslim League performed poorly outside Muslim majority areas, and third, अपन करो communal tensions declined after election. कौन अब आंसर कौन? 1937 provincial election जो अपन करो हितला Congress formed ministries in several provinces. कारण 1937 onwards रे election रे Congress participate करथिले and माने किछि प्रोविंसेस रे मिनिस्ट्रीज भी फॉर्म करिछन मुस्लिम लीग परफॉर्म पुअरली आउटसाइड द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज कारण मुस्लिम मेजॉरिटी जोटी थिला सेडी मुस्लिम लीग ऑब्वियसली मेजॉरिटी से माने आनी के असले खास करके ईस्टर्न इंडिया जो ईस्टर्न बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस रे जोटी बर्तन आपण अफगानिस्तान पाकिस्तान आपण देखुछन से रीजन टा बेटर परफॉर्म कले प्लस एपटे जो बांग्लादेश जो रीजन अच्छी सेठी आपण से माने बेटर परफॉर्म कले एक्सेप्ट दीज टू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बाकी एरिया रे पुअरली परफॉर्म कम्युनल टेंशन्स डिक्लाइंड आफ्टर द इलेक्शंस एमती किछ नहे इलेक्शन पर के कम्युनल टेंशन डिक्लाइन हे गला कम्युनल टेंशन ऑलरेडी स्टार्ट हेला एंड वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द फेज ऑफ 1940s जोटी के आहुरी अधिक कम्युनल टेंशन होवार थिला तो आंसर होची आपनकर 1 and 2 ओके नेक्स्ट देखिबा with reference to the Lahore Resolution of 1940 consider the following the first one it demanded separate nation for Muslims it was passed during a session of the Indian National Congress it became the ideological foundation for Pakistan कौन आंसर कौन आंसर कौन so it demanded separate nation for Muslims that is absolutely correct Lahore Resolution 1940 कौन कहला we need a separate nation that is Pakistan it was passed during a session of the Indian National Congress Indian National Congress रो कोनोसी से बड़ी सेशन रे पास करा जाय नाही ये आपन करो जो मुस्लिम लीग अछि सेही माने ही एटा को पास करथिले एंड बिकेम द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान तनु सेठू स्टार्ट हला आपन करो सेपरेट नेशन पाकिस्तान रो सो आंसर होची आपन करो 1 and 3 ओके कारण सेतबळे आपन करो जिन्ना ऑलरेडी वाज क्वाइट एक्टिव एंड फॉर द सेपरेशन ऑफ स्टेट जोटा क्रिप्स मिशन फेल्ड देखिबा आपने क्रिप्स मिशन 1942 failed because it offered the dominion status after the war absolutely correct
से बारंबार से जिनसे कहले कि हमें डोमिनियन स्टेटस करना इमान कौन चाहूले कंप्लीट इंडिपेंडेंस कारण 1929 रे से ऑलरेडी डिसाइड करथले वी नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट ये कहला हम डोमिनियन स्टेटस देबी सेकंड होचे आपनकर कांग्रेस डिमांडेड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर एब्सोल्युटली करेक्ट माने कहले भाई वॉर रे हमें आपन को हेल्प करिवो बट इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर हो दरकार मुस्लिम लीग अपोज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कारण से समय रे ऑलरेडी जो लाहौर रिजोल्यूशन आसी सारी तो सेमानकर ये यूनाइटेड नथिला they need a divided that means a partition of a separate nation okay so answer would be D all 1 2 1 3 next देखिबा किसी इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन देखिबा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी होची आपनकर गवर्नमेंट पॉलिसी आपण जानिथिबे मनी सप्लाई रेगुलेशन इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन फिस्कल पॉलिसी माने गवर्नमेंट रो पॉलिसी तबे फिस्कल पॉलिसी अंडर किया आसीबो टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेशन दैट थ्रू व्हिच गवर्नमेंट अर्न्स रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग जोटा का हमें कहूचे पब्लिक एक्सपेंडिचर ओके तो टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग होची आपनकर फिस्कल पॉलिसी रो पार्ट यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी रो पार्ट नेक्स्ट देखिबा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया फिस्कल पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन यानी कि गवर्नमेंट काहे कि जो टैक्स है पब्लिक एक्सपेंडिचर या टैक्स है गवर्नमेंट स्पेंडिंग थ्रू रे कौन करे से चेष्टा करे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ओके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करबा पई चेष्टा करे देखिबा इन कंट्रोल इन्फ्लेशन इंक्रीज इंपोर्ट मेंटेन बजट सरप्लस प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ जितने आम देखू इन्फ्लेशन होता है तो आंसर यार डी ही हम जो आम इन्फ्लेशन होता है या अधिका इन्फ्लेशनरी सिचुएशन देखा मिलूँ आरबीआई तार तो फंक्शन करे बट फिस्कल पॉलिसी केमती करे ना अधिका जो इन्फ्लेशन थाए ये टैक्स को इंक्रीज करती दैट मीन्स पीपल विल हैव लेसर मनी टू स्पेंड से कौन करती टैक्स को इंक्रीज करती आ पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करती बुझे जिनसा बट जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन थाए इकोनॉमी डाउनवर्ड स्लोपिंग थाए यानी डाउनवर्ड मूवमेंट थाए ताको अपवर्ड करबा दरकार तो आमे थ्रस्ट दबा दरकार यानी कि इकोनॉमी को पुश दबा दरकार तो सेति पई कोन करिया पड़िबो टैक्स को कम करिवा को पड़िबो सो दैट पीपल विल हैव मोर मनी दे कैन स्पेंड मोर एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज ओके ये होचे आपनकर मैकेनिज्म मन रखते बेटा बेसिक मैकेनिज्म नेक्स्ट देखिबा Inflation refers to what? Increase in the general price level, decrease in general price level, decrease in money supply, increase in supply of goods. Answer is increase in the general price level of goods and services. Which index is commonly used to measure inflation in India? 2014 onwards, 2014 onwards, CPI is the index through which inflation is measured in India. Inflation is being measured through CPI consumer price index and under this consumer price index हमें both goods and services को हमें मेजर करूँ तो इन्फ्लेशन को मेजर करवा इजी हुए ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए which of the following is not a component of national income which of the following is not a component of national income जो हमें कहूचे national income हमें कहा कहूचे जीडीपी को कहूचे जीडीपी थ्रू रे हमें मेजर करो नेशनल इनकम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट नेशनल इनकम जिते आपनकर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अछि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिटर्न मिले द प्राइस व्हिच आर पेड टू दोस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और द रिटर्न व्हिच दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गेटिंग तो से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुडी को कोन ना जेमते लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर ओके लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर लैंड को कौन मिलिबो रेंट लेबर को कौन मिलिबो वेज कैपिटल को मिलिबो इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट तो ये चारोटी जगह पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम तो इठी कौन हम ब्लैक मनी अच्छी ब्लैक मनी होची अनअकाउंटेड मनी ओके तेणु से ब्लैक मनी को आम कैलकुलेट करूना ब्लैक मनी इज ए काइंड ऑफ ए लीकेज मन रखते बेटा it's a kind of a leakage which cannot be calculated under the national income. GDP at market price is equal to GDP at market price is equal to GDP at market price देखिबा NDP at factor cost in net indirect tax
GNP minus depreciation, GDP at factor cost for net indirect tax and GNP plus subsidies. आंसर कौन हबो? GDP at market price या माने कौन ना सपोज गोटे प्रोडक्ट रो जेति के प्राइस रे मार्केट रे मिलुचे ताको हमें मार्केट प्राइस बोली कहबा. ओके तेनु यदि पूरा इकोनॉमी पर्सपेक्टिव रो देखिबे GDP मार्केट प्राइस केमते हमें कैलकुलेट करू ना GDP at factor cost. GDP factor cost कौन ना पेमेंट which are made to those factors of production जेमते एबे कहउतले आपन को रेंट, वेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट. पेमेंट which are made to the factors of production plus net indirect tax. in net indirect tax कौन ना बहुत समय रे आपन देखिबे गोटे प्रोडक्ट रो प्रोडक्शन समय रे सरकार बेले ताको सब्सिडीज भी देई पारे या ता ऊपर टैक्स भी इंपोज करि पारे. ओके तो टैक्स जोटा इंपोज करे ताको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहबा माइनस सब्सिडीज. सपोज गोटे प्रोडक्ट ऊपर टैक्स 10% रहिला तार सब्सिडीज रहिला 5%. तो नेट होचे आपनकर 5%. तो से प्राइस रो 5% आपण ऐड करन तो एटा होचे आपनकर कोन नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक अछि तो ये होचे आपनकर सी. ओके NDP at factor cost plus net indirect tax कौन होबो ना NDP मार्केट प्राइस. GNP माइनस डेप्रिसिएशन कौन होबो NNP. ग्रॉस और नेट रो डिफरेंस होची डेप्रिसिएशन जोटा में वेयर एंड टियर बोली को ओके तो ये गला आपनकर आंसर. GNP प्लस सब्सिडीज कौन ना एठी आपनकर केवल सब्सिडीज देइची तो एठी हमर सब्सिडीज विषय में डिस्कस करूथले. एठी इनडायरेक्ट टैक्स जेहतु नाही तो एठी हमें मार्केट प्राइस पाई परिबा नाही. ओके तो एटा को आपण छाडंतु बाकी तीनटा जिंस म आपण कहि देली. डन. नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स माने कोन? डायरेक्ट टैक्स गोटे अछि आ गोटे अछि इनडायरेक्ट टैक्स अछि. मन रखते बेटा गोटे अछि डायरेक्ट टैक्स आ गोटे इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स माने कोन ना डायरेक्ट टैक्स होची जहा ऊपर इंपोज करा जाउची टैक्स टी सीए ही बर्डन को बियर करिवो. सपोज इनकम टैक्स को धरंतु. इनकम टैक्स मो ऊपर इंपोज करा गला ऑब्वियसली आई कैन नॉट शिफ्ट द इनकम टैक्स. मो इनकम टैक्स को शिफ्ट करि परिबी नाही. सो जहा ऊपर इंपोज करा जाउची ताकू ही बर्डन को बियर करिवा को पड़िवो. से होची डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स कोन हुए जहा ऊपर इंपोज करा जाउची से बर्डन को शिफ्ट करि परिबो. फॉर एग्जांपल गोटे फैक्ट्री गोटे प्रोडक्ट ए प्रोड्यूस करूची तापर टैक्स टी इंपोज करा गला. से टैक्स जति की इंपोज करा गला तार प्रोडक्ट प्राइस से ऐड करिकी से काहा को बिकिबो होलसेलर को. होलसेल वाला काहा को बिकिबो रिटेलर को. रिटेलर काहा को बिकिबो कंज्यूमर को. अल्टीमेटली वी कंज्यूमर आर पेइंग दैट टैक्स. सो फाइनली इंपोज काहा पर हेतला इंडस्ट्री ऊपर पेमेंट की कला कंज्यूमर कला. सो ऑब्वियसली एटा होची इनडायरेक्ट टैक्स. ओके तो एठी डायरेक्ट टैक्स जेतु पचरची हमें काहा कहबा डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स. बाकी GST एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी आर इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर. Which institution releases consumer price index in India? RBI, Ministry of Finance, Labor Bureau, National Statistical Office. किया वो आंसर कहले देखिए. आंसर कौन वो? National Statistical Office. Okay. What is the main objective of the Monetary Policy Committee? Monetary Policy Committee रा main objective कौन? Manage fiscal deficit, decide repo rate, control black money, manage subsidy. Monetary Policy Committee मो आगुरी भी आपन कहिची RBI प्लस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थांती. ओके सेवनकर मेन काम कोन डिसाइड रेपो रेट. रेपो रेट कोन जोटा के हमें पॉलिसी रेट बोली को. व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट पॉलिसी रेट? ना द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और RBI. द रेट एट व्हिच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और द RBI. सो डिसाइड से करे टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो सपोज इन्फ्लेशन आपण इकोनॉमी रे अछि. इन्फ्लेशन जदि अधिका चली छी तो से रेपो रेट को कौन करिवो इंक्रीज करिवो. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज. से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिवा में इंक्रीज कला रेपो रेट को. सपोज डिफ्लेशन अछि से चाहूँ इकोनॉमी को रिकवरी करिवा ପାଇଁ सपोज जमती कोविड टाइम रे हितला तो से टाइम रे कोन करिवो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को माने आपनकर सस्ता करेबे सो दैट पीपल विल हैव मोर मनी दे कैन स्पेंड मोर मनी. तेणु से माने रेपो रेट को कम करेबे. ओके ये हूँ आपनकर मेकानिज्म. ये जो जिनसटी रहिला कम करिबा
रेपो रेट को सी होची एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीज करबा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन ये होची कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्लियर नेक्स्ट जीवा which of the following which of the following contributes the highest weight in the index of industrial production index of industrial production रे सबुटु अधिका weightage कहार अधिका अछि contributes the highest weight मन रखते बेटा manufacturing index of industrial production रे काम कोन to shows the performance of industry index of industrial production रे काम कोन to show the performance of the industry and manufacturing is having the highest weight under this index of industrial production clear next kujiva which body publishes the economic survey of India which body publishes the economic survey of India economic survey budget आपनकर आसे first economic survey आसे and then the budget आसे तो ये किए आपनकर economic survey को publish करे सेटा होची आपनकर Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance one रखते बेटा okay which site in Odisha is famous for the Buddhist heritage and Ashoka rock edict answer करंतु फटाफट कोटा हवा आंसर Ashoka rock edict and Buddhist heritage धौली okay धौली हवा एटा next which river forms the largest delta in Odisha which river forms the largest delta in Odisha Mahanadi which Mughal emperor first annexed Odisha into Mughal empire okay which Mughal emperor first annexed Odisha into Mughal empire आंसर कौन हम आंसर होची आपनकर अकबर ओके नेक्स्ट हु एस्टाब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ओडिशा आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल्स मुगल मानक पर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ओडिशा किए एस्टाब्लिश करथिले इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ ओडिशा आंसर मुकुंददेव okay Mukundadev next the Kalinga war was fought between the Ashoka which kingdom obviously Kalinga 261 BC next होची आपनकर आरंभ बैच okay stay there बर्तन सेशन टी कंटिन्यू हबो मोर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ओडिशा जीके पार्ट सरीची लेट मी कनेक्ट विथ शिव शंकर हजरा सर से वर्तमान एटा को कंटिन्यू करिवे जस्ट स्टे देयर मेरा हो गया है सर का स्टूडियो से कनेक्ट कर दीजिए ना शिव शंकर सर हजरा सर वो जो स्टूडियो सुदीप्ता मैम के पास है ना स्टूडियो हाँ ठीक ठीक अच्छी तो शिव शंकर सर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे बट स्टे देयर ओके तो हाँ पीडीएफ दे देवी अफ्रेन तो आरंभ 4.0 देखो बैच 23 रे स्टार्ट होची जो माने भी चाहूँ फाउंडेशन कोर्स रे जॉइन करबा पई प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू रो से माने जॉइन करि परिबे कोड यूज करिवे जे इन लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट तो फाउंडेशन को आहुरी स्ट्रांग करबा पई आरंभ थ्रू रे ही करि परिबे लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस आपनकर पीडीएफ नोट्स मिलिबो आपनको प्लस आपनको मेंटरशिप सपोर्ट मिलिबो ओके ओडिशा स्पेशल क्लासेस गुडी को कंडक्ट करा जिवो एसे एनरिचमेंट सेशन अछि 12 प्लस टेस्ट सीरीज आपनको फ्री मिलिबो प्लस जदि आपण फर्स्ट अटेम्प्ट रे प्रीलिम्स क्लियर करूचंदी आपनको फी रिफंड कर दिया जिवो फर्स्ट अटेम्प्ट रे प्रीलिम्स क्लियर करूचंदी फी रिफंड कर दिया जिवो ओके ये जिनस मन रखतेबे ठीक अछि
पीडीएफ आपन को एठी मिल जिवो एठी पीडीएफ मिल जिवो टेलीग्राम चैनल रे फेसबुक इंस्टा रे फॉलो करि परिबे मते एवं आपनकर क्वेरी डाउट जहां भी अछि मते पचारि परिबे ठीक अछि स्टे देयर बर्तन शिवशंकर सर आसिबे ज्योग्राफी एंड अदर क्वेश्चंस आनिकी शिवशंकर सर पर सुदीप्ता मैम भी आसिबे एनवायरनमेंट साइंस एंड गोटे कंप्लीट कवरेज आपनकर होउची तो स्टे देयर एवं मु रिक्वेस्ट करिबि जो माने भी आपनकर फ्रेंड्स जो माने प्रिपेयर करूचंती लाइब्रेरी रे आपनकर फ्रेंड्स माने थिबे सेमान को सहित इन्फॉर्म करंतु एवं सेमान को मध्य सेशन को शेयर करंतु ओके टिके कनेक्ट हेकी थांतु स्विच होउची सेशन तो जो माने भी हमरो चैनल को रेगुलर फॉलो करूचंदी समान का पाखर तो इन्फॉर्मेशन थिबो बट स्टिल मु आपन कहि रखे ये सेशन हमें वर्तमान रेगुलरली आनी की आसीबू तो आपण माने कनेक्ट हे के रुहंतु प्रिपरेशन जो माने प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टार्ट कलेनी तो बेटर बट ये सेशन हमरो लगातार सैटरडे संडे ऑलमोस्ट चलिबो तो आपण को फायदा करिवो ओके आउ कार किसी डाउट अच्छी सोर्स को नहीं कि जहाँ भी आपण पचारि पारंती सेशन रे सोर्स को नहीं कि अन्य कोनोसी प्रकार रो कंफ्यूजन डाउट अच्छी सेशन को शेयर करंतु मैक्सिमम शेयर करंतु कारण प्रीलिम्स आसिलानी सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट सैटरडे संडे वी आर प्लानिंग ऑन सैटरडे संडे बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट जो माने कि जॉब रे अछंती सेमान को पई इजी हबो to attend the session. So Saturday, Sunday we are planning. Every Saturday, Sunday we'll have session. Okay. बाकी आपनकर क्लासेस रहउची जे जो माने जॉब रे अछंती ऑफिस रहउची सो सैटरडे संडे आपण सेशन प्लान करूछु देखो टाइमलाइन सिंपली आपन को ना गोटे जतले आपण पढुचंती सिंपली आपण गोटे रफ पेज नै कि ना हेटा टिके गोटे गोटे खाली ईयर लिखि कि चलंतु ओके सेटा से एक्सरसाइज जते आपण करिवे जतले भी आपण रिवाइज करूचंती सेम जिंस करंतु एक्सरसाइज जते करिवे सेटा धीरे धीरे मन रहि जो हां बिरबल 11 am ओके तो जेतबेले आपण रिवाइज करूचंदी पढुचंद ना सिंपली जेमति मु आपण कहथली 1885 रे लिखि देबे कांग्रेस फॉर्म करा गला तापर आपण पढिले तापर देखले 1905 रे बेंगल पार्टीशन हे गला बेंगल पार्टीशन पूर्व भी आपण देखिबे 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट आसीथिला लॉर्ड कर्जन आनी की आस्थिले यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करबा पई तार ऑटोनॉमी को डिस्ट्रॉय करबा पई ई टाइप रो जत्ते थरो आपण पढुचंद स्लाइटली लेखि कि तार गोटे टाइमलाइन बनन 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ओके 07 सूरत स्प्लिट 09 एटा होची मर्लेमेंटो रिफॉर्म ओके तापरे 1911 आपनकर आसला अनलमेंट ऑफ बंगाल यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को विड्रॉ करा गला ओके 1916 इंपोर्टेंट वन नेक्स्ट आपनकर जो होम रूल मूवमेंट ई टाइप रो जते आपण लिखिबे नोट्स बनेबा दरकार नै जते थरा आपण हिस्ट्री पढुछन ना एटा को टाइमलाइन को फॉलो करो निजे बसिक लिखत रिकॉल करी धीरे धीरे आप देखिए माइंड रे फिट ही चलियो सबु जिनस होची आपण जते टाइम देबे तो द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल प्रोवाइड और यू विल गिव अ डिवोट सेते आपनकर मन रहबो सेते आपण एक्सरसाइज करूथबे जो लिखिबा स्टार्ट करूथबे धीरे धीरे रिकॉल करी कि लिखिबे चलिबो जिनस
नहीं आपण जो सोर्स पढ़ुचन जो सोर्स आपण पढ़ुचन आपण क्लास नोट्स पढ़ंतु किंबा जेकोसी बही पढ़ंतु रेफरेंस आपनकर जहाँ भी अच्छी एंड कीप ओनली वन रेफरेंस बुक जोटा कि ऑथेंटिक हेतिबो काफी कवर से करथिबे 360 डिग्री सेटा को ही फोकस करंतु सेठू ही आपण से टाइम लाइन को फॉलो करंतु सेठू ही टाइम लाइन को फॉलो करंतु ओके सो फाइन तो शिवशंकर सर कनेक्ट हेले तो मुझे फाइनली कह दिए आरंभ बैच आमर 23rd रे स्टार्ट होची जो मैंने भी चाहूँ प्रिपरेशन रे वैल्यू एडिशन करने निजर प्रिपरेशन को एलिवेट करने गोटे स्ट्रक्चर्ड मैनर करने तो ये हूँ बेस्ट फाउंडेशन कोर्स इन द इंडस्ट्री तो प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच 25-26 आरंभ 4.0 प्राइस अच्छी 11,999 जेन लाइव कोड यूज करेंगे 23rd जून रु स्टार्ट हो बाकी मो सहित आप कनेक्ट करेंगे जदि किसी डाउट कन्फ्यूजन रोचे थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज अ क्वाइट वंडरफुल टाइम सो पुणी देखा हवा पुणी सेशन गुड़ी को कंडक्ट करबा एंड डिस्कस करबा थैंक यू एंड शिव सर कनेक्ट होजन स्टे देयर डोंट गो एनीवेयर शिव सर कनेक्ट होजन ओके ओवर टू शिवशंकर सर Hi everyone, welcome to StudyIQ. So marathon session is going on, right? In this marathon session, I will take the polity, some of the most important MCQ which is based on current affair. Obviously, those topic is been in news, right? जो so topic रही good evening to all. Khushi is there, Baijanti is there, and Afri is there, Samir also is there, right? So yeah, good afternoon, sorry. गुड इवनिंग कही दीजिए कि गुड आफ्टरनून टू ऑल राइट चलो फिर स्टार्ट करवा तो आज जदि आम देखा जो मैराथन सेशन टी रखा जाइए द फास्ट सेशन इज बीन कंडक्टेड द फास्ट चैप्टर आई वुड से जटाधारी सर नहीं देन आई विल टेक हियर ऑनवर्ड्स अप टू 2 PM देन मैडम विल ऑल्सो कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट एंड से मध्य कंटिन्यू करेंगे एंड दिस सेशन इज फॉर यू दैट यू गाइज तुम मान ही करा जाउछि राइट सो दैट व्हाट to enrich your preparation को enrich करिया पे करा जाउछि and the polity topics that I have I will cover, right? So that is on the base of current affair, particularly current affair topics. So let's begin with the session, right? Now the session will start with the fast questions and the screen is before you. Yes. So the question is that the idea of the preamble of the constitution has been borrowed from which country? See, this is easy and easy question before you. Then why I have taken this easy one? Because this one is taken as somewhere, let's say these topics remains in the news and obviously देयर वुड बी डिबेट सो बोल डिबेट चलता है कि हाँ भाई ये पार्ट है कि नहीं वो है कि नहीं तो हमेशा देयर वुड बी ये क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीएम्बल so in the civil service examination if you have gone through the papers like the papers of UPSC the papers of state PCS so there is always a question from the preambles either they will ask whether the preamble can be amended or not how many times the preambles have been amended
what are the features we have borrowed, what are the features we have incorporated into the constitution through the 42nd or let's say amendment, right, or any other amendment that you could remember, right, in which whether it was in the Southern Sindh versus state of India, what happened. So comes to the answer is that USA A. So Magna Carta, that Bapu said, Bapu Parke, this is the Magna Carta of the constitution. Okay, right, this is also correct, everybody is given the right answer. So the right answer is yes, the USA, that is what USA. But let me go through this preamble. So it was what objective resolution, it was what objective resolution which was introduced by Nehruji in the what Constituent Assembly, in the Constituent Assembly. Now just go through just little bit of preamble. So this is what, this is the preface of constitution. Preamble is what, preface of constitution. Preamble is borrowed from where, USA, and this is what, this is basic structure of the constitution. This one is what, basic structure of the constitution. Whether it can be amendment, yes, it can be amended. इसको amend कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Now how many times it has been amended and which are the later, that what, secular, socialistic and integrity, SSI, these are the words is been added through the amendment to the preambles. Now so that means this is what, ye preambles is what, whether this can be enforced, no, this is can't be enforced, this is can't be enforced, this is what, only a moral, this would be what, like a moral types of. Now this can be also amended, we have done these things. Okay, preamble is done. The objective resolution which was introduced by whom, it was by Nehruji. So the answer is A, the answer is what, A. Done. Now this much I've done with the preamble, everybody. Okay, done. The 42nd amendment, that's what, secular, socialistic, integrity. So these are the words is been added. Whether it can be amended, yes, it can be amended. It is from USA, it is a part of constitution. Once it is been amended, थोड़े ही amendment ହେଇଛି, एमती ना कि दी थर तीन थर, तो थोड़े amendment ହେଇଛି, बस ये जो keyword जो गुटा मु कहली ताकू मन रखो. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic. तो ये जो word रही keywords, this is the very important, right? These are the very important. चलो फिर sources, here you can see the sources. The country UK, from the UK we have got the parliamentary system, rules of law and the reads, single citizenship, yami UK thune asale. From the USA we have got the fundamental rights, judicial review, that is preamble, impeachment. So these are the things we have got from the USA. From the Canada, that is the strong center, residuary power and the governor rules, that means the appointment of governor. अब ये तो आजकल बहुत न्यूज रे चलछि, तमिलनाडु केस कथा नहीं जाओ, केरला केस कथा नहीं जाओ, पंजाब केस कथा नहीं जाओ, ये तो बहुत न्यूज रे चलछि. आर्टिकल दैट इज व्हाट, दैट मीन्स यदि हम कहबा जो गवर्नर पावर को जोटा रेस्ट्रिक्शन कले तो सेही सब को हम देखि परिबा, राइट. तो 142 कथा नहीं जाओ, बट 142 कथा. तो सेमती ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड रो कोन आंचे में डीपीएसपी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड राज्यसभा नॉमिनेशन. ऑस्ट्रेलिया टू कौन कॉन्करेंट पावर आम आनीचे, कौन आनीचे कॉन्करेंट पावर, लिस्ट आनीचे, फ्री ट्रेड होगला, जॉइंट सेशन होगला. सो दीज आर वी हैव गॉट फ्रॉम द व्हाट ऑस्ट्रेलिया. देन आम जर्मनी ठू आम कौन आनीचे इमरजेंसी आनीचे, जोटा कि आम राइट्स ऑफ जोटा कि इमरजेंसी प्रोविजन्स. एक्चुअली इमरजेंसी प्रोविजन देखो 1935 एक्ट रो, तो आपको बिल्कुल भी लिखियो एटा 1935 एक्ट रो. बट हाँ इमरजेंसी टाइम रे जो फंडामेंटल राइट और सस्पेंशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द जर्मनी. फ्रॉम द यूएसएसआर fundamental duties, planning, 5-year plans is that we have got, right. From the Japan, amendment procedures, from the Japanese procedure established by law, that is from, okay, from the Japan, that is procedure established by law. Okay, one thing you have to say, from which sources we have got the amendment procedure to the constitution? Anyone? The amendment procedure to the constitution we have got from whom? From whom? Procedure established by law, that is got from the Japan. Due process of law from the USA.
but amendment to the constitution procedure got from where? Try karo ହେଇପାରିବ do it. From which country we have got the procedure to amend the constitution? Yes, aso where? Japan or South Africa? Which one? Whether it is Japan or South Africa? Confused हो नहीं? It's a what? South Africa. It's what? South Africa. Because Gandhi jinkar bhi changes asithila. That satyagraha, the technique he learned from the, but that changes happened because of South Africa tour of Gandhi ji, and that is why उसके अंदर भी ना वो उनके अंदर जो amendment, वो जो changes आया था गांधी जी के अंदर, right? Likewise, the amendment to the procedure of the constitution we have got from the South Africa, not from the Japan, right? इसमें थोड़ा टेबल में गलत हो गया. चलो फिर the next, which of the following is the fundamental right? Which of the following is the fundamental right? This one is important. Whether it's right to property, try it. Whether it's right to property, C, everybody is going for the C. It's not Article 24, but it's C. So the right answer is what? C. The right answer is what? C. This one is not, this one is a legal, this one is what? Your legal right. This one is your legal right. Article 300A, Article what? 300A, this is legal right. Now this one is what? This one, see, right to strike. Right to strike is not a fundamental right. This is not a fundamental right, right? So again, this would be cancelled. This would be cancelled. This has been amended. Right to vote is a what? Again, this right to vote is a legal right. Is a what? Legal right. Is a what? Legal right. Is a legal right under what? That is the People Representative Act 1951. What? 1951. And in other sources as well. So this is what? Legal right. So now on this line we will move. So here the answer is what? C. But which article? That is 21A. The article is what? 21A. That compulsory education. What article would be? Your article will be 21A, right? Which article this will? 21A. 86th amendment. What? 86th amendment. So 86th amendment and 21A article of the Indian Constitution, that says this is what? Correct. That says the right to education. That is what? Right to education, right? See, this one is right, the vote. Right to vote is either you may say constitutional right, but under the that is People Representation Act 1951, that would be legal right. But under the amendment, if you see under the amendment, choice, right? If you see the choice, that this is what? Choice. This would be what? Choice. So then you can have the choice under Article 19 to go for the constitutional one, to go for the what? Constitutional one, to go for the constitutional one. So there would be a choice under the Article 19. So here you can see the fundamental rights from 12 to 35. We have discussed that in fundamental rights mean what? Those rights is exactly needed for the overall growth and development of a human being. So that is why fundamental. They are not fundamental. There's the what? They are also fundamental because they are the fundamental laws of this land. They are fundamental. Why these rights are fundamental? They are because of the two angle. The angle one is that
They are needed for the overall growth and development of a person. That is why they are fundamental. They are fundamental because they are the fundamental laws of this land. Now, what are they? Here you can see, right, from the right to freedoms to the right against the exploitation, to the right to freedom of religion, to the culture and the educational right, to the rights to the constitutional remedies. 32 is there. So all these rights I have given in the explanation part. Okay, right. Next question. The Union Public Service Commission is mentioned in which part of the constitution? Because part of your constitution also important, right? Yes. Which part of the constitution is the Union Public Service is mentioned? This one is also from the part they ask sometimes, the questions they are also asking, right, from the part. Yes, go through. Yes, it's a constitutional right, you may say. It's A, Sagar A, Afrin A, Susmita D, XB, Vijay Lakshmi A. Okay. Now we will go through. Now what happens? See, the point is that what would be the answer? Answer is what? XIV 14. The answer is what? XIV. So that would be what? 14. The answer would be what? 14. So it's a what? It's a 14 XIV. So here you can see the explanation. Just a minute. The parts are not there. Okay, let it. So let's say some of the important parts. Some of the important parts, let's say, for example, the important parts you have to remember. The important parts like, just a minute, let's say this one is what? For the that means UPSC, and for the OPSC all this. Okay, let's say part XX, this one is important, right? Part IX, this one is important, right? So this one is what? Amendment. Then there would be what? VIII, this is also important, right? Emergency will be there, this would be what? Emergency. Then 19th, that means X your what? 19th, that would be what? XVI 18. So this is for the emergency, this one for the amendment, right? This one for the local government. So this is how you have to remember, right? For the local government. So this is how you have to remember. Part 1, you know, 2, 3, 4, 5, 7, 8, these are the important parts you have to remember. So here, because एक question यहाँ से वो पूछ लेते हैं, right? So here is how. And here also your PCS, मतलब जो OPSC, all these state PCS bodies are also coming under here. Next, the speakers of Lok Sabha can be removed by what? 4 number question. Question number 4. Part of constitution. Part of constitution. Okay, I will take. चलो फिर next.
Afrin, a resolution of the Lok Sabha, resolution of, so majority of is going for the C, that is the what? Yes, majority of is going for the C. Now, if so, here we will go through the little bit of details where what exactly happening is here. So that means your speaker of the Lok Sabha can be removed, whether no confidence motion, no, whether by the president, no, it would be through the resolution of the Lok Sabha. This is the correct, right? Whether this is Chief Justice of India, no, they can't remove, right? But the point is that now if I ask a simple question, whether the speaker is a member of Lok Sabha, whether the speaker is the member of Lok Sabha or not, whether the speaker is a member of Lok Sabha or not, then if resolution, how much this would be, whether this is 2/3 majority is required, this is required, right? 2/3 majority is required or not? Yes, the 2/3 majority is required. Now whether the speaker is a member, yes, speaker is a member of the house. Now the point is that now in USA or UK, whether they are the member or they are not member. Yes, in India, what? The member of Lok Sabha, as the Afrin said, is the Lok Sabha member in India. That. But when it comes to the chairman of Rajya Sabha, let's say Rajya Sabha chairman, let's say Rajya Sabha chairman, what will happen? Whether he or she is a member of Rajya Sabha or not. Rajya Sabha chairperson is a member of Rajya Sabha or not? What? Yes or no? Yes or no? Yes, it's no. So our right answer is what? No. Yes, the chairman of the Rajya Sabha is not a member of Rajya Sabha by default, ex officio, right? The vice president will be, Now, the president of India, let's say here the question is what? Removal. See, here the question is what? Removal. So, let's say the question I have asked you the speaker removal. They may ask you the president removal. They may ask you the what? The Chief Justice of India removal procedure, right? This could be. So, whether the impeachment will be there, this would be what? Impeachment. Here would be removal procedure. Here would be what? Removal procedure. Impeachment will be there. And again 2/3 of majority would be required. Again there would be notice. And the acha, let's say तुमको यदि मैं question पचारिबी, on what ground we can remove or the impeachment will take place? On what ground? On what ground? Let's say if president will be impeached, on what ground that impeachment will be initiated? On what ground? Is it mentioned in the constitution or not? The ground for what? On that base, if that ground, let's say any kind of violation of the president had done the wrong, so on that basis we will have the initiation. Then what? Against the constitution. Okay. Violation of the constitution. That means what? Violation of the constitution. Misbehavior. So the term is what? Misbehavior. And what? Misbehavior and against the constitution. This is not. Misbehavior. Violence. No, as violence the word is not mentioned. Right, it's a what? Misbehavior, and the word is written, there are two words written, one is misbehavior and another is incapacity. Right, incapacity, these two words is mentioned in the constitution, incapacity and misbehavior. In that case, right, the parliament can initiate the impeachment process. Here parliament, this is not like a Rajya Sabha will initiate, Lok Sabha will initiate. No, this is like in case of Lok Sabha, the Lok Sabha will initiate. But if it is president, the both can initiate. Right? Okay. Next.
Here answer is C. So the next one, the State Reorganization Act 1956 was based on what? These are very important because the reorganization of the state is very important, and this is remain in the news. This is in the news because what? There would be again the reorganization of the state, so that there would be what? Allocation of the Rajya Sabha and the Lok Sabha what? Seat on the basis of 2011 census. On the basis of what? 2011 census. Or let's say government will have next year there would be the census, or 20 not 26, 27. At the 27 there would be what? Census will be there. Okay, what would be the answer? Whether this is Dhar Commission, whether this is Fazal Ali Commission, JPB Commission, or Sarkaria Commission. Yes, JPB committee was there, Fazal Ali, all these are what? For the linguistic basis रे कौन हेई पारिबो कि नहीं सेतर धार कमिटी आसला, धार कमिटी रिकमेंडेशन को के मानलेनी सेटा कम हेलानी, देन जेपीबी कमिटी आसे, जेपीबी पर लास्ट रे फैजल अली कमिटी आसे, मन पका फैजल अली कमिटी जेतर 1953 रे रिपोर्ट दिए, एंड दैट रिपोर्ट बेसिस रे कौन आमे कहबा आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस रे गोटे नुआ स्टेट हुए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? फैजल अली कमिटी, एंड दैट इज व्हाई फैजल अली कमिटी जदि आम बेसिस रे कौन होगा द स्टेट रिअर्गनाइजेशन एक्ट 1956 रहेगा, जो बेसिस रे आम रिअर्गनाइज कर पारुचे, जेमते कि इन द 2000 आमर झारखंड, उत्तराखंड एंड व्हाट? छत्तीसगढ़, द न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड लाइक दैट। इन 2014 रे आंध्र प्रदेश आम देखा, आंध्र प्रदेश टू अलग है किए तेलंगाना। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? रिअर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट। दिस इज द आंसर। सो होप द आंसर इज डन टू ऑल, right? The answer is done to all. The answer is what? B. So because this committee said, अच्छा एक मिनट जदि मु तमन को एठी गोटे क्वेश्चन पचारिबी, फैजल अली कमिटी जो कमिशन आसीथिला, जो रिपोर्ट देथिला, जे कोन कहिथिले whether there would be a single language to form the state or multiple language भी परिबो, कोन हेई परिबो? Anyone comment me? Whether फैजल अली कमिटी जेतेबेले आसे से तो कहले कि yes language could be basis for the formation of a new state, but whether that would be single language or multiple language? Whether that would be single language or multiple language? It would be what? Multiple language. It would be multiple language. Single language happen, but language should be basis. But language should not be one language, one state. No, no one language, one state. It would be multiple language. That would be right. It's not. No, this is what? Multiple. As I said, this is multiple. This is not single, because India is such a vast land that you can't apply this one language, one state. This is what? Multiple. This is multiple. नहीं हो पाएगा ऐसे। चले next. The power to use the special petition lies in who? ये बहुत न्यूज रे था है ना, आजकल तो हमेशा न्यूज पे चलता रहता है भाई, स्पेशली पिटिशन फाइल। इवन रिसेंटली इट वाज आल्सो न्यूज दैट OPSC filed special leave petition not to give 1 lakh to the aggrieved student। जान OPSC को हाईकोर्ट मतलब ओडिशा हाईकोर्ट कहले कि से पिला को लक्षे टଙ୍କା तुमको दवा पड़ो, कहीं ना तार जो कॉपी चेकिंग था ठीक से भल ही ना। से गोटे जुडिशियल स्टूडेंट थे, सो कंप्लेन करते कि जे मोर कॉपी ठीक से इभालुएट है से मु कम मार्क पाई जो मोर सिलेक्शन है ना। तो जिते से कंप्लेन कले से कॉपी मगागला, चेक कराला, से देखागला कि हाँ कौटी ना कौटी जो मैंने कॉपी चेक कर फॉल्ट रही है। ओडिशा हाईकोर्ट कहले OPSC को कि यू हैव टू गिव 1 लाख रिसेंट के 1 लाख ताकू जुर्माना दवा पड़ो, कहीं से वर्ष सारा पढ़ी से पिलाटा कष्ट करी तार खर्च अच्छी से एग्जाम देची तो जहाँ भी हो, तो से हाईकोर्ट कहले 1 लाख दियो। ओडिशा गवर्नमेंट मतलब OPSC आम कह OPSC वाज नॉट रेडी, इगो को आसीगला। तो OPSC जाकि सुप्रीम कोर्ट रिलीफ पिटिशन फाइल कले कि मुझे देवे। सुप्रीम कोर्ट कहले ना ना ये हो पारबनी, आगे तुम पेमेंट करो तापर कथबार्ता है। तो राइट, सो दिस इज वन।
Now comes to, yes, Supreme Court. Afrin is Supreme Court, Abinash Supreme Court, Aisa Supreme Court, Birbal Majhi B. So number of people जदि आम देखा, right? हाँ, बाकी मैंने देखो, बाकी मैंने try करो, बाकी. So yes, the answer is what? Supreme Court. This is what? Answer is Supreme Court. No High Court, no President, no Election Commission. This is current. This is current. These questions are taken from the current affair, so that the specially petition, right? So this is filed with Supreme Court. Here you can see the answer is what? B. Right, correct. Next one. The Supreme Court first invoked the basic structure doctrine to strike down an amendment. What? And which amendment? Also, here you can also, you have to answer B. If, then which amendment, let's say, which was amended but Supreme Court has struck down by reviewing it. Which amendment? What was that? What I would say, renewed amendment, and everybody aware of that. Which amendment was there? Uttam B. Yes, chalo fir. This one is easy one. Keswananda Bharati case 1973. बहुत बढ़िया. The answer is what? केशवानंद भारती केस 1973. एंड रिसेंटली मध्यम तुम जानिछ कि तांकर जो डेथ हो गला, तो मतलब हो गलानी 2 वर्ष शायद तांकर डेथ भी हो गला. जे जने प्रिस्ट थिले बा हमें कह मंक मध्य तुम कहि परबो केरला रो ये तांकर मठ केस थिला. तो ये जो केशवानंद भारती किए ये जने मंक बा प्रिस्ट, यू मे से मंक बा प्रिस्ट जहार जमी को गवर्नमेंट नौ देउथले बा जो मठ तांकर थिला सेथमे से केस करथिले. And that was 1973. The landmark judgment and the largest bench 13. तो इतने कितने थिले 13 member of bench. As of now the largest constitutional bench हमें ताकू कही परिवा, right? 13 member of bench decide कले कि the basic structure of the constitution doctrine that evolved from here, the basic structure of doctrine that evolved from here and strike down 99th amendment NJAC. What? NJAC. So that was struck down. That NJAC was struck down because of this basic structure of constitution which is evolved by the Supreme Court, but this is not mentioned in the Constitution of India. This is what? Not mentioned in the Constitution of India. This is evolved through the Keswananda Bharati case, right? And whether now if this is the basic structure of the constitution, the doctrine says, then what would be the least? Whether DPSP would be the basic structure, whether preamble would be the basic structure. Let's say if I ask you a simple question, whether preamble would be the basic structure or not. Anyone? Preamble will be the basic structure or not? Preamble. This was the what? Longest bench. Matlab, sorry, largest. It would be what? Largest bench. 13 members of bench was there. Okay. Now what would be the minimum member for the constitutional bench? Let's say this one was 13 member of bench was there. Then what was the minimum requirement for the constitutional bench? Anyone? Minimum requirement of judges for a constitutional bench. Yes, yes, yes. Acha, Uttam Kahila, Uttam Vijayalakshmi, they said that no, preamble is not a part of the constitution. So preamble is not the basic structure. No, by basic structure doctrine asu nahi. Baki mane S koiche, Chandan said S, and Sasmita koiche 5 minutes required. Jab you. So this is what?
अच्छा मिनिमम दरकार तो 5 मिनिमम केते दरकार 5 सो मिनिमम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच minimum what 5 judges is required for the constitutional bench for the appellate it's a 3 members it's what 3 members and this would be 5 members okay now the question was that whether preamble is a part of constitution or not whether preamble is a part of what that is the basic structure or not yes the answer would be yes the preamble is a part of basic structure right that was said when that was also said by Supreme Court here ध्यान से मन रखियो जो preamble is the part of constitution Supreme Court एठी ही कहिथिले केशवानंद भारती केस रे ही कहिथिले right that is why this is important that is why this is important right तो ये इंपोर्टेंट केसेस गुड़ा मन रखो कारण इंपोर्टेंट केसेस गुड़ा एमते ना कि तमे प्रिलिम रे यूज करिवो याकू जदी हमें मन रखु छै याकू मेंस रे मध्ये हम यूज करबा राइट तो आर लिस्ट अछि आर लिस्ट रे सेमते किछि नाही whether there is a list of the basic structure ना basic structure by basic doctrine रो किछि लिस्ट नाही दैट इज डिपेंड अपन सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट कोउटा को कहिबो कि हां एटा बेसिक स्ट्रक्चर के नाही बट साधारणतः हमें बेसिक स्ट्रक्चर ताले काहा को कहिबा दोज वर्ड्स दोज आइडियाज where they are in the mind of our forefathers while making the constitution while they were doing the debates in the constituent assembly like secular democratic republic right ये सब जो वर्ड सब रही छी they would be the part okay done everyone clear to all देख हाँ बढ़िया कथा क्वेश्चन पचार उत्तम गोटे बढ़िया क्वेश्चन मत पचार बहुत बढ़िया उत्तम मत क्वेश्चन पचार कि इफ preamble is a part of constitution preamble is a basic structure then how we can amend the preambles ध्यान से सुनिबो तांको कथा उत्तम क्वेश्चन पचार देन हाउ वी अमेंड द preambles ओके चलो फिर देखिबा हमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन तांको सॉल्व करिबा तो मु कहि दे उत्तम कि केमिति हेई परिबो सी बेसिक स्ट्रक्चर बा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मीन्स व्हाट लेट्स से मु लिखिछि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a what sovereign secular is हो वर्ड लिखिली बट देखो बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात नहीं कि हमें अमेंड करि परिबानी मु सपोज फंडामेंटल राइट इज द बेसिक स्ट्रक्चर मु चाहूची कि जेमति कि फॉर से एसएसआई अर्थात कोन हमें ऐड कले हमें एसएसआई को ऐड कले अर्थात सेक्युलर सोशलिस्टिक इंटीग्रिटी को हमें ऐड कले कोथरे ऐड कले प्रियम्बल रे ऐड कले तो एटा केमति हला अमेंडमेंट मु गोटे नुवा फीचर ऐड करि परिबे बट मु ताको डिलीट करि परिबिनी मु रिड्यूस करि परिबिनी मु इंक्रीज करि परिबी बुझि परछ ना मो कहया त बुझि परनो आई कैन इंक्रीज बट आई कांट डिमिनिश करि परिबानी दैट मींस इट कैन बी अमेंडेड ए हेई परिबो किंतु तार कोर वैल्यू को डाइल्यूट करि परिबानी करेक्ट मु कौन कहली बुझी पारे समस्ते क्लियर क्लियर टू ऑल जीवा आगु को चले चलो होप तुमर डाउट जोटा थिला क्लियर मु कर देछि जीवा आगु को आंसर इज ये अच्छा एटा यूज्ड नहीं कि एटा यूज्ड हेइथिला अच्छा अच्छा एटा देखो एटा जो यूज्ड रा से पचारछि इन्वोक ता कहछि अच्छा हमें एते क्या को देखिने एटा तो ठीक अछि हमें जहां डिस्कस करले ठीक अछि एटा जहां हमें डिस्कस करछे बिल्कुल ठीक अछि किछ नै तो क्वेश्चन टा टिके एपट सेपट अछि सुप्रीम कोर्ट से कहले फास्ट इन्वोक द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एथरे आसीथिला एथरे इन्वोक्ड हला तो टिके डिफरेंस क्वेश्चन को हमें ध्यान से देखिने तो देखो फास्ट होची द बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व पेइथ रहला पर ताको एनफोर्स कले प्रथम थरो पई जो यूज कले एला मिनर्वा मिल केस रे तो एटा टिके ध्यान से कने एपोर्ट सपोर्ट टिके हे गेले भूल हेजबो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस होची आउ किछने फास्ट इन्वोक होची आउ जदि में इवोल्यूशन कहिबा जे कोठु आसिला केबे आसिला देन इट वुड बी केशवानंद भारती केस चले चलो फिर नेक्स्ट द रोल ऑफ गवर्नर एज द चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज इज ए व्हाट whether it's constitutional, statutory, discretionary or by convention based कारण ये बहुत न्यूज रे अछि द आर.एन. रवि व्हाट आर.एन. रवि कथा समस्ते जानि छ
that is what governor of Tamil Nadu, Tankara and Stalin. Vitare there is a conflict. There is a conflict ke the Tamil Nadu government wants to amend that governor would not have the opportunity to become the chancellor. Somebody else will be the chancellor. Let's say the chief minister would be the chancellor of the university, and that law is been put into the pocket. Isn't put into the pocket. Now, what is this? Whether this is constitutional, whether this is statutory, discretionary, or by convention or convention based. Convention based means what? Matlab, yes, both the government, central government and the state government, they are agreed कि yes, we will do this. This is by convention means by agreed upon. दोनों के बीच में हाँ मतलब हो गया कि ठीक है भाई कर लेंगे ये, right? Whether this is discretionary, चलो फिर विजयलक्ष्मी A, Sasmita C, Uttam B, okay, chalo. So answer would be what? SB. The answer is, the right answer is a statutory one. Is a what? Statutory one. SB. It's a what? Statutory one. Now statutory means what? See, when I say statutory, that means by law. That means what? By law. That means statutory body ko hoche na. Constitutional body means what? By amendment. By what? Amendment. This is by enactment. This is by enactment. Discretionary, there is no discretionary. Discretionary power is not there. But yes, governor is having highest number of discretionary power as compared to president. This thing you have to remember. If somebody will ask you okay, who is having more discretionary power, whether it's president or governor, then governor is having more discretionary power as compared to president. This is very important. What? Governor is having more discretionary power as compared to president. Now if I will ask a simple question, whether High Court is having more discretionary power or Supreme Court is having more discretionary power? Anyone? By law, Sasmita, by law. बुझी हो नहीं? ओके, बुझी हो नहीं हो बुझे देवी ना. Discretionary the meaning सुना आगे. What is the meaning of discretionary power? Let me first explain what is the question I asked. What was the question is that whether High Court is having more discretionary power, whether High Court is having more discretionary power, or Supreme Court is having more discretionary power. Who is having discretionary power? Because see, here is the discretionary power. We will discuss the discretionary power of meaning. तुम्हें बुझी जाओ ना कि कौन से डा what exactly है क्या. चलो फिर कोई आगे बुझी जाओ, तब मन को बुझा पड़ो नहीं, right? What exactly meaning of the discretionary? Let's say somebody comes to me कि sir I wants to you be my mentor. Let's say somebody comes to me and will ask कि sir be my mentor. वो मेरे ऊपर है, मैं accept करूँ या ना करूँ. I will say कि no, I am not going to. मतलब मेरे को लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा ये, because मेरे ऊपर कोई compulsory तो है नहीं ना. This is not compulsion to me because I will be your mentor. Likewise, let's say if I move to High Court, मैं हाई कोर्ट के पास जाऊं और बोलूं कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है ना वो वायलेट हो गया और आपको एनफोर्स करना है. हाई कोर्ट इज हैविंग चॉइस. वो बोले कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में आता है, तुम सुप्रीम कोर्ट के चले जाओ, मैं नहीं कर रहा हूं. लेकिन इफ आई मूव टू सुप्रीम कोर्ट कांट से नो, because if Supreme Court will say no, then to whom I will move? Because this is the highest court in the India. If Supreme Court will deny me, मैं फिर कहाँ जाऊँ भाई, right? Hope you are getting me. ना बुझा पड़िवन कहा को
मु कहली जदि हाईकोर्ट मना करि परबो सुप्रीम कोर्ट मना कले मनीष कुआड जीवो सेमिति गवर्नर पाखरे डिस्क्रिशनरी पावर अधिक एथि जोटा कि बाय चॉइस दिस इज व्हाट बाय चॉइस लेट्स से देयर वुड बी हंग असेंबली इलेक्शन हैला तो इलेक्शन रे हैला मेजॉरिटी कहीं भी पाइनी ना बीजेपी पाइनी ना कांग्रेस पाइनी ताले भी गवर्नर ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर से बीजेपी को डाकी पारे गवर्नमेंट फॉर्मेशन पई तापर कहबे तुम प्रूफ करो फ्लोर टेस्ट करो और कांग्रेस को डाकी पारे बुझी पारछ ना डिस्क्रिशनरी पावर ये गोटे हे गला द्वितीय कथा से बिल प्रेसिडेंट पाखु रिजर्व करी रखी पारे न भी रखी पारे दिस इज आल्सो डिस्क्रिशनरी पावर so there is number of discretionary power more is having the governor than the president of India. President of India is highly what I would say aid and advised by the council of minister and that is why hope you are getting me clear to all clear to all clear okay बहुत बढ़िया so this is how so that means here High Court is having more discretionary power, but Supreme Court is having less discretionary power. Here would be more. But I am not asking whether this is jurisdictions. Hope this one is. By convention based means what? If somebody will ask कि भाई ये convention based अर्थात convention means what? Simple गोटे arrangement करिछे. This is not by act, neither by any amendment. So it's a answer B. The right answer is statutory. Next, S.R. Bomai case is a very significant case. चलो 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 President is having discretionary power but not much more. President पाखरे भी तो अच्छी let's say president कहबो जेतलो हंग पार्लियामेंट हबो से भी तो डाकी परियो काहाकू उत्तम बुझी परछो कि नहीं से भी काहाकू डाकी परियो उत्तम has asked me कि सर प्रेसिडेंट रो डिस्क्रिशनरी पावर नाही कि ना ना अच्छी मु कहली कम अच्छी मोर आ लेस कहली बा मोर का पाखरे गवर्नर पाखरे लेस का पाखरे अच्छी प्रेसिडेंट पाखरे मु कहनी कि नाही बोली मु कहनी I have said no I have not said no Satru D Satru said it's a D SR Bomai case B said Afrin said B president rules and federation B said Muduli also said B Vijayalakshmi B Avinash D yes constitutional risk Vijayalakshmi B yes SR Bomai case is a very important case बहुत important these questions mu ethi pai tam man ko nouchi these are very important questions because SR Bomai case is the landmark case in the Indian polity because these questions they are asking frequently why we are having federal system we are having what we are having federal system in the federal system right this is very important the rule of president the presidents or I would say rule of president or you may say better I would say the role of president better I will prefer to say the role of president in the federal system the role of president in the federal system that is very important rather than right yes so answer would be Chandan said B so majority is going for the B yes the answer is what B so answer is B now what happened in 90s that means it was 1992 probably it was 1992 yes I think I am correct it was 1992 in the SR Bomai case Supreme Court said that use of article 356 use of what
article 356. This is very important, the use of article 356. If they will ask you, so here this could be also the answer, this could be also the answer. Let's say if they will have option, if there were option that SR Bomai case is related to which article, the article is 356. That means what? President rule. That means president rule. But president will impact the what? Center-state relation. The center-state relation will be impacted, isn't it? So that is why this is not 352. This is what? 356. So this is very important, because that would be national emergency. This would be a president rule. Then there would be financial emergency. So this back to back. So 352, 356 and 360. These are the three emergency related articles, but other articles also there, like 355, 365, 358, 359. These are also important articles related to the emergency. They are also important articles related to emergency, right? So let's say now in case of this 355 and 365, if there would be the what? जदि कौन सी प्रकार वायलेशन हला 355 and 365, then president rule आसी जाई थे ता द्वारा कौन हबो 356 आसी जीवो. what? 356 आसीबो. तो ये आर्टिकल गुडा को टिके लिंक करके यू हैव टू रिमेंबर, करेक्ट. बामे जहा को कहूचे स्टेट इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल. ओके, सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. तो जेते बेले भी हंग पार्लियामेंट कथा आसे ना, सेते बेले आसे द पंचायत राज इज नॉट द प्रॉब्लम. सो एसआर बोमाई केस फेडरल सिस्टम, प्रेसिडेंट रूल को केस रे लागू हो प्रेसिडेंट रूल, सेही गाइडलाइंस ता दिए एसआर बोमाई केस. दिस इज दैट इज व्हाई लैंडमार्क केस. सेथे में फेडरल रे ये बहुत ही लैंडमार्क केस मु अगेन तुमन को रिपीट करूची दैट दिस वन इज व्हाट? ये वन ऑफ द लैंडमार्क judgment in the federal system of India, that in which condition the president rule will be applied. So here is the answer. Answer is B. So hope we have discussed it enough, and this would be correct. This would be correct. Everyone. Namaste Loknath ji. Okay. Next question. The expansion of article 21, ये जो expansion होची article 21, who is having that authority? Who is having that authority? Who is having power to decipher this? Anyone? Who is having power to decipher? Expansion of article 21, whether it would be having the Supreme Court is having exclusive, whether it is concurrent or only High Court, or it is concurrent. There is two choice before you. Let's say for example आगु टिके मु डिटेल रे डिस्कस कर दउची ताकि तुमको इजी हबो. Now this expansion of article 21, whether this is I would say what? Exclusive of Supreme Court, whether this is only by High Court, or it would be concurrent. Or it would be concurrent. Yes, try करो. Is a concurrent, or it's concurrent, or both can, or they can do both. Anyone? Peace Behra Kochi, exclusive of Supreme Court. Both बढ़िया, great job. This is what? Exclusive of Supreme Court. The right answer is what? Exclusive of Supreme Court. This is right. Exclusive means what? No other people. No other people. Only Supreme Court. Only Supreme Court. This is the meaning of exclusive. So only Supreme Court is having. Why? On what basis? On what basis? On the basis of article what? I would say on the basis of articles 32. On the basis of what? That would be 32. That means जो review petition हमें file करी छे, और let's say जो
इंटरप्रेट करबा कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करिवार एबिलिटी कहा पाखरे अछि सुप्रीम कोर्ट पाखरे हाई कोर्ट डज नॉट हैव एबिलिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज व्हाई ऑन दैट लाइन आई वुड से because as the Supreme Court is having that one, so that is why Supreme Court is having the exclusive power. This word like exclusive, discretionary, only, like concurrent, these are very important words in the polity because you need to understand this word, otherwise this word will put you in the trouble water. हाँ तो रीड्स है जो रीड्स से आसी जाउची तो रीड्स अंडर से डिफरेंट वेराइटी रो बाहर करछन्ते ना राइट आर्टिकल 13 जेमती तमरो लॉ हबो कि नहीं एबे कोटा लॉ नुह लाइक ए कस्टम इज ए लॉ लेट्स से साबरीमाला केस कथा नहीं जाओ अच्छा साबरीमाला केस कथा नहीं जाओ आर्टिकल 32 अंडर रे जदि हमें साबरीमाला केस को जो ताकू कोन लाइट 21 रे पुट कर देले साबरीमाला तो सेटा उठी कस्टम दैट इज नॉट लॉ किंतु सुप्रीम कोर्ट ताकू कर देले कि नहीं सेटा आर्टिकल 21 को वायलेट करूची राइट टू लाइफ को वायलेट करूची तो सुप्रीम कोर्ट ताकू डेसिफर करि परबो आउ कहि करि परबनी the highest court चलो फिर आउ डिबेट करिवन ताकू नेक्स्ट the 106th amendment to the women's reservation bill provides for the 33% of reservation in the Lok Sabha and assemblies for a period of what, whether this is 10 years, whether this is 15 years, whether this is 20 years. नारी शक्ति अधिनियम कौन नारी शक्ति अधिनियम this is what नारी शक्ति अधिनियम नारी शक्ति अधिनियम this is very important again नारी शक्ति अधिनियम is it 10 years or 15 years? Uttam said all are 10, 10, 10. Afrin is 15. It's me, Shomya. Yes, you are sir 15s, 15s. Yes, बाकी मैंने कोच 15. चलो फिर देखिए आंसर देखिए अच्छा नारी शक्ति अधिनियम whether this would be applied to अच्छा हमें देखिए आंसर को तो जीवा नो डाउट आंसर को जीवा पर तापूर्व टिके देखिए नारी शक्ति अधिनियम मते को बेसिस रे हबो whether it would be census 11 को बेसिस रे को सेंसस ऊपर बेस करिवो on which census it would be based on which census it will based the Nari Shakti Adhiniyam the reservation would be based on which census Avinash 15 Afrin 15 हाँ बहुत बढ़िया the answer would be what 15 the answer would be 15 the answer is what 15 the right answer is 15 yes delimitation so 2011 26 the answer sunibo this would be based on what next census this will be based on next census that would be there it would be based on next census that means this is not 2011 so this would be not it could be 26 हेई पारे that could be 27 हेई पारे जे भी हबो यदि 26 रह गेला 26 हेई जिवो तो नेक्स्ट सेंसस जा हबो सही ऊपर ही बेस्ड करिवो अच्छा मते को whether नारी शक्ति अधिनियम will be applied to local government whether Nari Shakti Adhiniyam will be applied to local government anyone whether this will be applied to local government or not try करो
Afrin says it's 2027. Blue eye 15 years. Okay, बहुत बढ़िया. Try it. Soumya said no. Then what? That means if this is not going to be applied in the local level, then on what basis we are giving reservation in the Panchayat Raj system, in the what? Gram Sabha election. Yes, Sasmita said right answer. It is already persist in the local, but this would be only this Nari Shakti Adhiniyam, right? Haku ame kon kari pariba, women empowerment lekhi pariba. You can write in any other. That would be what? This Nari Shakti Adhiniyam. This is having so much of application in India. I am not showing you only, matlab everybody, whenever you see this kind of statements or somewhere else in the news, everyone's mind goes for one answer, that is the woman empowerment. But this is not only woman empowerment, something big is there. Something big is there means what? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ woman empowerment, there is a, we are also moving for the what? Equalization of the society, to improve their status, to improve the participation, right, and to achieve the demographic dividend. So these are also the things, and to make the what? Democracy more healthier. These are the word you can write. There would be concession, that will develop to have the concession. Gender justice, this could be the word like what? Gender justice and democracy. So this is how you can write. Yes, the local government already having reservation 33% in Odisha through the what act? Through this act, the State Government Act. Through the State Government Act, there is also the reservation already going on. The reservation is already going on. Correct this one. Chalo fair. Next. Right. Done everyone. बहुत बढ़िया तुमने आंसर दो छो. So answer B 15 years. चले fair. 15 years पर कौन हबो सेटा में जानी नहीं. Next. The proposal for the one nation one election involves which constitutional amendment? Bill number क्या है? What would be the bill number? This is very important. And ये question OPSC पचारी परे, there is a probability of asking the questions by OPSC, because OPSC earlier asked the question like what was the amendment bill to the GST. They asked twice that question. Okay, what was the amendment number? What was bill number? Like this, they asked the questions in that time when your GST was passed, the 101st amendment, right? That was what? 101st amendment to the Indian Constitution. Odisha 50%. Okay. One nation, one election. This is very important. And at 26 said by Chandra Baral. No amendment needed. Afrin said no amendment is needed. बाकी मैंने try करो. What was the bill number? Here, this is not the amendment number. This is the bill number, right? The bill number we are discussing. चलो फिर देखें. I get D. Bijay Lakshmi said D. 126. Bis Behra said 128. Chandra Baral 26. Sasmita D. 12 D. Sasmita said D. Satrujit C. Sanjeev. Satyajit 28. 29th. Avinash. Okay, many people have gone for like 29, 28.
तो एमती चलछि सब देखिबा व्हाट विल बी द आंसर or no amendment is needed. चलो फिर जीवा आंसर को ओके it's a what 12824 that means 2024 the clue was that there was a clue to identify the answer when I went through the option I found that it was not 2023 the debate came in 2024 in the last it was in December November or December session winter session it was introduced in the winter session right that is how you have to remember not in 2025 ये 2024 पे इंट्रोड्यूस हो गया था now the point is that let's say there would be amendment example गोटे मु तुम को कहूची let's say वहां पे amendment होगा ठीक है there would be amendment let's say now what will be the majority what kind of majority is needed whether this is needed 2/3 and ratification of the state or it's required only 2/3 majority in the both houses of the parliament what kind of majority will be required Chandrasekhar Baral said, sir, amendment 128 was bill in 2023, not 24. The year you are saying not correct? Check it, okay? Okay, check it. I may be wrong. I'm not saying, okay? Check it. चलो फिर थोड़ा देख लेना चलो फिर what kind of amendment would be required and which committee was constituted a committee was also a high level empowered committee was constituted for this one lesson and one election what was that committee name anyone 2/3 and the 50% of the supports of article 3 Chandrasekhar Kochi whether ratification is required or not ratification is not required only 2/3 present and voting whether ratification is 368 that would be perfect 360 is right article will be required for the amendment of the constitution whether it is required only 2/3 present and voting or 2/3 plus ratification it's a Ramnath Kovind, the former president of India, but it would be 2/3. It would be what? 2/3 only, no ratification, right? 2/3, 2/3 present and voting. It would not require any ratification. Had it be the election procedure for the president, then ratification would have been required. Had it be, right? So it would be only 2/3 majority. So that would be in the both houses required. Required in what? Both houses, then obviously there would be the assent from the President of India is also required. And Ramnath Kovind, everybody awares, the high level empowered committee was constituted. Now, if I ask a simple question from where, what law commission said? कौन law commission कही कि one nation one election is viable in India or not? Whether law commission is in favor of one nation one election? Anyone? Whether law commission is in favor or not? Yes, whether law commission in favor or not. Law commission कौन कहूँ? Yes, law commission also favoring. Law commission कहूँ yes, this is feasibility is there. Law commission is supporting, government is supporting, and even many other sources, right? Other sources also backing the one nation one election, backing the one nation one election. And that is why many times these questions UPSC has already asked, and there is also probability to ask this question because debate is going on. There is a federal issue,
there is a other issues also emerge. Now, if I ask another questions, whether any country in the world where the one nation one election is going on, might be there would be some countries are also there, evidence also there. कौन इंडिया रे आगुरु वन नेशन वन इलेक्शन हेइथिला केबे? हाँ हेइथिला. केते जाय चलथिला नेहरू को टाइम रे फास्ट 12 years I think 12 or fast 13 years, right? That was there. That means हम केबा नेहरू को टाइम रे प्रथमे 12 वर्ष 10 रु 12 वर्ष जाय आट ए टाइम सब इलेक्शन होतला, वन नेशन वन इलेक्शन टाइप रो थिला. देन सब डिस्टर्ब हेगला, इमरजेंसी वगैरह लागेला, देन ऑल गॉट द साइकिल गॉट डिस्टर्ब. So that means this is not the first time that we are talking about one nation one election, though there was no such act, no enactment, no statutory laws were there for the one nation one election, but there was by convention since the starting of our independence ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ 10-12 ବର୍ଷ ମୋର ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି what was the unit, but ଚାଲିଥିଲା ନେହେରୁଙ୍କ ଟାଇମ ରେ, राइट. तापर सेटा डिस्टर्ब हेगला साइकिल बिकॉज ऑफ किए कोठी कोठी प्रेसिडेंट रूल लागू हेगला, कोठी कोन कार डेथ हेगला, ए बाय इलेक्शन सब हेकी सब डिस्टर्ब हेगला. ठीक अछि. तो ये हमें तुमको कहिथिलु कि वन नेशन वन इलेक्शन रो डिटेल में डिस्कस कले, दैट राइट. यस इट इज हैविंग फिजिबिलिटी. रामनाथ कोविंद कमिटी आल्सो देयर. फास्ट हेतला 10-12 वर्ष हेतला हम ताकू देखिचे. Now this would be, there would be amendment, 2/3 amendment is required, 128th amendment bill is there. चलो फिर next. Article 356 judicial oversight was reinforced by which landmark case as reaffirmed recently in the current affair? ये है मतलब forget this, okay. बस खाली current news move कर दूँ the change the question, let me change the question, right? Just a minute. Recently in news, so cross it, recently discussion or in news, right? This is very important case. We have already discussed this one. I said in 1992 there was a famous case. Vijay Lakshmi C, Sasmita C, everybody is offering, everybody is going for the C. Okay. So it's what? The answer is what? SR Boumai case. SR Boumai case. So that time we discussed, and that is why the SR Boumai case is what? Restricting the governor's choice. Restricting. अच्छा ये SR Boumai case ताले कुहे कौन? What is the essence of SR Boumai case? If answer is C, is it correct? Answer is C. But what is the essence of SR Boumai case? What is the essence of SR Boumai case? Just a minute.
चलो ओके राइट बहुत बढ़िया द बहुत बढ़िया आंसर देइछो जने के देइछो तम भितर चंद्रशेखर बराल नो आर्बिटर यूज ऑफ आर्टिकल 356 बहुत बढ़िया ग्रेट बहुत बढ़िया दिस इज हाउ द एनालिटिकल एबिलिटी यू गाइज आर हैविंग बहुत बढ़िया खुशी लागला मते देखिए आंसर नॉट आर्बिटरी इम्पोजिशन ऑफ रेजिडेंट रूल बहुत बढ़िया एंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ आर्बिटरी बहुत बढ़िया नाउ ताहले आमे कहिबा सेथिपाई ये केस आम इम्पोर्टाट कौन मुझे कहूँ बारंबार कहुच्छी करेन्ट अफेयर आसूची बारंबार मतलब हमेशा करेंट अफेयर पे ये चीज देखने मिलता है कि सर एसआर बोमाई केस एसआर बोमाई केस व्हेन देयर वुड बी हॉन्ग पार्लियामेंट व्हेन देयर वुड बी गवर्नर रूल देयर इज एसआर बोमाई केस देन व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड सुप्रीम कोर्ट सेड कि if you wants to use this one 356 that means the president rule then what you have to do is that first you have to do the floor test first what you have to do floor test this is very important first you have to do the floor test then you can go for this if the party the fails let's say बीजेपी ने कह दिया कि भाई हमें मतलब we are having majority let's say this would be applied when if there is a hung parliament nobody is having majority कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई मेजोरिटी मेरे पास है बीजेपी बोल रहा है कि मेजोरिटी मेरे पास है लेट देम टू हैव द फ्लोर टेस्ट अगर फ्लोर टेस्ट पे मतलब ये साबित हो गया कि भाई इनके पास है नहीं देन यू कैन गो फॉर द 356 और either though this is the fast choice this is the procedure you have to go for this fast then if it fails if it what fails then go for this is the procedure that means democracy democratic value will be preserved no arbitrary correct बहुत बढ़िया आंसर दो तो मैंने चलो फिर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन the center's new regulation for the Ladakh 2025 issued under article 240 introduce what the center's new regulation for the Ladakh 2025 issued under article 240 introduce what whether this is women reservation in the UT assembly whether this is domicile based job and language recognition or separate statehood or new taxation laws this is very important again this one is very important I am saying this is very important Afrin B rest go for this one is important one chalo these are what apart from that there is article 143 142 is are also there $15 years of residence okay चलो फिर बहुत बढ़िया चलो बाकी मैंने ହେଇଗଲା ओके अभिजीत बी विजयलक्ष्मी बी सस्मिता बी ओके 15 years of ओके डन सो आंसर इज बहुत बढ़िया बिकॉज ये एथिपाई मु नहींची द राइट आंसर इज व्हाट बी द राइट आंसर इज बी द डोमिसाइल बेस्ड job and 15 years so somebody wants to do the job and language recognitions at least 15 years you need to have there कारण যদি আমি দেখিবা when Ladakh got separated in the 2019 if you back to the background that in 2019 article 370 gone when article 370 gone
the Ladakh got the separate status, that is the UTs. As Ladakh got UT status, right? Why they wanted UT? Because there is a scarcity of resource, because they are having unique culture, because they are having unique topography, because they are having unique, everything is unique. They are having different religion. That is why they were demanding that we wants to separate from the what, Jammu and Kashmir. That is why भाई अगर सेपरेट हो गया तो भाई ये तो रहना चाहिए ना, बिकॉज दे विल रिक्वायर द जॉब सिक्योरिटी ऑल दिस. सो दैट इज वाई ये आपका आंसर ठीक है, और इसको अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज नाउ वन अदर आर्टिकल्स आई विल ट्राई टू आस्क यू हियर इटसेल्फ. चलो फिर और 2-3 आर्टिकल यहीं पे पूछ लेते हैं जो न्यूज़ पे है. नाउ द आर्टिकल्स इज 142. व्हाट इज आर्टिकल 142? ये बहुत न्यूज़ पे है, आर्टिकल 142. चलो फिर कमेंट देख लेता हूं तुम लोगों का. चलो 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 142. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Our vice president said this is the what nuclear weapon Supreme Court is having. है ना, मन पड़ुची. धनकर जी कौन कहले? धनकर जी said that the article 142 Supreme Court is having a nuke, is a what, is a nuke power. This is extraordinary power of the Supreme Court, and because of that Supreme Court has been criticized in a different houses, in different ways, in different means, right? People started to criticize कि how Supreme Court will be. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई 3 महीने के अंदर तुम्हें बिल को पास करना पड़ गया. किसको बोला? गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट. हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट थ्रू बाय यूजिंग दिस आर्टिकल 42 डायरेक्ट द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन द केस ऑफ व्हाट, Tamil Nadu case, that we have to dispose the bill within the 3 months? Whether the Supreme Court possesses that power to direct the President of India? Now that is the question comes. Yes, chalo fir. What is this called? The complete justice. Supreme Court use this what? As a complete justice. Supreme Court आपको कौन कहती? Complete justice. तेणु आपको मध्य पढ़िबो because ये न्यूज रे अछि. This is what? Complete justice. Article 42 Supreme Court कहे कि by using this article I will give complete justice to a person. Now by using this article Supreme Court said that the governor and president both have to assent within 3 months of the bills. जो बिल सब जाई जो आउची तम मान को पाखु को, the bills you have to assent the bills within the 3 months. That means limiting the power. That means limiting the power. Now the point is that whether Supreme Court using this, they have directed, having the power to direct the president and governor, or through amendment it would have been a beautiful way, right? कौन आमे ताको amendment द्वारा कले भलो होई थांता ना सुप्रीम कोर्ट पर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर अछि, जो डिस्क्रिशनरी पावर टा चाह को हमें कहि परबा कि व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेही जो तार वायलेशन भी तो हो नहीं. Whether it is judicial over activism, whether this is judicial overreach, right, or I would say this is overreach or activism. कौन कहूँ तुम्हें? Anyone? This article 142 and direction to the governor and president, this is judicial overreach or judicial activism? Anyone? Complete justice. In the name of complete justice, is not it that Supreme Court is encouraging encroaching into the part of legislative, into the part of executive, isn't it? Yes, that is why it would be कौन होगा को तमने को judicial overreach. बहुत बढ़िया. It would be what? Judicial overreach. This is not judicial activism, not. This is judicial overreach. So somehow judicial also need to restrain itself. Judiciary also need to restrain itself. Otherwise, because there is a what, separation of power is there. Everybody knows that there is a separation of power. If that separation of power is there, so judiciary also you have to remember that there is a separation of power. You can't
overreach. You can't overreach. You are not the people to make the laws, make the rules. You are to only judge it. You have to. अच्छा मते को ताहले this one ये जो judgment देले Supreme Court, whether that is based on procedure established by law or due process of law, को basis रे देले ये जो कहले complete justice, whether this is due process of law or procedure established by law. Which one? Which one? Whether this is due process or procedure established by law. अरे बाकी मन को बुझा पड़ुची देख मु तुमको डिफिकल्ट टिके डिफिकल्ट करूची इजी क्वेश्चन दउनी तेणु मु जानी छी के मतलब बेसी भल लागिवनी जो माने भाबुछ कि यार सिंगल लाइनर रहिबो इजी क्वेश्चन विल बी देयर. This is not going to happen because I know this kind of question will be asked in the OPSC and the civil service examination, right? Loknath said it's a due process of law. Bis says it's a procedure established by law. Vijay Lakshmi said due process of law. Susmita, due process of law. Procedure established by law. Yes, the answer would be, what will be the answer? It's a what? Due process of law. It's a what? Due process of law. It's a what? Due process of law. That means from here it is evidented that the Supreme Court of India is deviating, is moving away from the core principles, from the core that what idea, procedure established by law towards the due process of law, the idea from the USA, the idea from USA. So now the Supreme Court of India is acting both in procedure established and due process of law, in the both way, right? चले फिर thank you everyone. And the next one, oh shit, the new fusion energy reactor pilot project inaugurated in June 2025 in the Gujarat strengthen India's what? Answer टा देखी देई तो शायद तमन चलो 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 फिर देखो ये all questions are current affair based, all are current affair based. चलो 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 the new nuclear energy reactor pilot project inaugurated in June 2025 in the Gujarat strengthens India's space power, energy security, foreign policy, judicial infrastructure. B, Vijayalakshmi B, Afrin B, Susmita B. Everybody is going for the B, energy security. Okay, बहुत बढ़िया. चलो 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 next. Yes. Lalit Kumar Mohant A, energy security. Everybody is going for the energy security. Come on. चलो चलो बाकी मैंने ऐसा. Now here I will try to remind you that the government of India is having a target of nuclear energy by 2047. India, Bharat, right? India are there at 2047. Apart from that, in the budget last year, there was what a Bharat small reactor. It was also there. Bharat small reactor, that was also there. So that is why on that line, they will ask you ke Bharat reactor, what would be the importance of the Bharat reactor, small. So this will not only energy security, but it is the nuclear fusion is a project that would be inaugurated that will strengthen India's foreign policy, because the civil nuclear cooperation, this would be what? Civil nuclear cooperation. Good afternoon, Nilakant. देखी दियो
चले? Okay. Because this would be what? There would be civil nuclear cooperation, as I said. Now in 2008 तमे जानछ जेतरे हमरो मनमोहन सिंह जेतरे प्राइम मिनिस्टर थिले दैट टाइम्स यूएसए सहित हमरो हितला सिविल न्यूक्लियर जो एनर्जी कोऑपरेशन 2008 रे. So that is why that will also strengthen, because we need to have the cooperation from the France, from USA to enhance our nuclear power. And the last one, the Supreme Court directive to set up permanent consumer court aligns with the constitutional spirit of what? This is very important, because all these questions is from the current affair. The Supreme Court directive to the setup of permanent consumer court aligning with constitutional spirit of what? Yes, let me check your comment. Okay, just a minute. Let me check the comment. Yes, correct. चलो 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 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन अच्छी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. नीलकंठ नंद नीलकंठ सस्मिता ए, आफरीन डी, नीलकंठ ए, बिस ए. चलो फिर बाकी मन को देखी देबा. तो मैंने कौन दउछ? The Supreme Court directive to set up. अच्छा, there was also one articles, other articles which had the gote articles I have left it, the important ones hovering in the current affair. And every मतलब ज़्यादातर यूट्यूबर ने भी बहुत डिस्कशन, बहुत हो हल्ला हुआ है. इंडिया तक कुछ भी हो जाता है यूट्यूबर्स लगे जाते हैं पूरा, है ना, लगे पड़े हैं पीछे. 143 articles. What? Article 143 also important. This was also news. A news पे है, also was not news. This is a news पे है. This is in news. Now, what is that? So this is what right answer is: participation of the democracy. This is what participatory democracy. The setup of permanent consumer courts aligns with the constitutional spirit of participatory. What? Participatory democracy. The right answer is A. So most of you are starting from the Vijay Lakshmi, right? Bis is there, Sasmita is there, Nalakant is there. Everybody has matlab then what? Satru also there. Everybody is gone for the A. The right answer is A. So that is participatory democracy. Now the last, what is Article 143 and why there is so much of debate? There is so much of यूट्यूबर्स तो हम ऐसे ही आ जाते हैं कि हाँ भाई ये आ गया, ये चलो फिर ये क्या है फिर. 142 we have already discussed in detail. Now what is 143? Why this is important for us? Whether it is important, do you feel that this is having the magnitude of weightage for the civil service examination or not? Do you feel that? Is it correct? चलो 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 एक मिनट कमेंट देख लेता हूँ. Sasmita is advisory jurisdiction of president. बहुत बढ़िया. Right. Then next. Yes. These are the question, right? These are the area. So there is a tendency of making the questions. Let's say जितना भी question आज लाए ना, तो majority of the questions from the current affair. Majority of question I have drawn it from the current affair, because these are the question is important, really important.
because in the polity there has been a tendency of asking the questions from, if the topic is in news, let's say if the election commission is news, then ask the question from the election commission. If president is in news, then ask the question from the president. This is the tendency they have been adapt, or they have going through with it, I would say, right? So it's about the advisory, that's about advisory, that means it is coming under the advisory jurisdiction of Supreme Court as well, right? So now president can ask, president will seek advice through this. President will seek what? President of India will seek advice. What advice? Now what kind of advice the president of India will seek from the Supreme Court? Anyone? What kind of advice? This is advisory jurisdiction of Supreme Court, and through this Article 43 subclause, I have forgot that subclause, it could be 2 or let it be, president can ask what is it? Anyone? Anyone? बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो, 2-3 minutes left, let's go, come on, 2 minutes left. देखो कम क्वेश्चन आनी थी, बट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन थिला, and I have spent much of the times for the discussion rather than mocking the questions, but I believe that quality of question, कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से करो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन लाओ. ऐसा नहीं कि जो रट्टा वाला क्वेश्चन होता है, भाई हाँ चलो आर्टिकल 13 पे क्या लिखा है, आर्टिकल मतलब मनी बिल का नंबर क्या है, मतलब आर्टिकल क्या है, 110 क्या है, 112 क्या है, 117 क्या है, 109 क्या है. देखो ऐसे आर्टिकल्स रट्टा तो मार सकते हैं, बट वी नीड टू हैव दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टॉपिक विच इज होवरिंग इन द करंट अफेयर, that will strengthen your, otherwise you will be what sucking in the current, well let's say in interview, let's say आपका इंटरव्यू कल आ गया और वहाँ पे बोर्ड ने पूछ लिया आपको कि भाई ये जो आर्टिकल 43, 143, 142 का सिलसिला क्या है आपका, इसके आपका राय क्या है, पूछो. ऐसे अगर आ गया ना तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा. हाँ, एडवाइस रिलेटेड टू द पब्लिक इम्पोर्टेंस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी. चलो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं. चलो नाउ इसका आंसर है कि वेदर इट इज इट्स ए लॉ और फैक्ट्स, इट्स ए वेदर इट्स लॉ और फैक्ट्स. ये पूछेंगे, प्रेसिडेंट बोलेंगे भाई मेरे को ना समझाओ, तुम मेरे को ये समझाओ कि आपने जो बोला मेरे को कि 3 महीने के अंदर मेरे को आई हैव टू नीड टू असेंट, वेदर दिस यू पोजेस दैट पावर, मतलब ये वेदर इट इज ए फैक्ट और नॉट. गेटिंग माय पॉइंट. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट और गवर्नर 3 महीने के अंदर असेंट देंगे. प्रेसिडेंट बोले ठीक है भाई, क्या आपको लगता है ये लॉ है और फैक्ट्स है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी है या नहीं है, और आप बस आप ही बोल रहे हो कि नहीं 3 महीने के अंदर आपको असेंट दे देना है. व्हाट इज देन? इफ इट इज लॉ, इफ इट इज फैक्ट्स, देन हाउ वेदर सुप्रीम कोर्ट इज एबव प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट जो भी बोलेंगे वो प्रेसिडेंट सुनने के लिए तैयार है. मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस है, सोशियोनॉमिक क्वेश्चंस, ये लोग शायद 14 क्वेश्चन जो 13 ईयर 14 क्वेश्चन था, आई बिलीव के सम क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन विच इज बीन पुट फॉरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द सुप्रीम कोर्ट, उसका आंसर पता नहीं क्या होगा, वो हम वेट करेंगे. इफ दैट विल कम देन वी विल डिस्कस इन द करंट अफेयर. ओके, विद दिस आई विल एंड द सेशन. थैंक यू एवरीवन फॉर द कोऑपरेशन एंड द सपोर्ट. यस, क्वेश्चन नंबर कम था, नो डाउट, मैंने जानबूझ के कम क्वेश्चन लिए ताकि मैं ज़्यादा डिस्कस कर पाऊँ, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के चक्कर में ना जो क्लैरिटी वो नहीं रहेगा, दैट क्लैरिटी विल गो. सो दैट इज व्हाई आई स्पेंट, it was 15 number of questions, but I have spent majority of the times of explaining the things. Okay,
So answer is A, and with this I will end the session. Okay, so session I will end here. Thank you everyone. Have a good day too. Hello everyone, good morning. Sorry, good afternoon, guys. It's already afternoon because. Hello everyone, good morning. Sorry, good afternoon, guys. Just a minute, just a minute. Because. So guys, already तुमने जानी चाहिए मु साइंस एंड टेक ही कवर करिवि बिकॉज़ सर मैंने ऑलरेडी तमरा कवर ऑफ करसंती आई नो पेशेंस बहुत ही कम रहउथुवा तम मानकर होल डे रही छ बट गाइज ऑनलाइन ने ना एटा गोटे बेस्ट बेनिफिट रुहे कि नो मैटर कि तमे होल डे भी चाहिए जड़े क्लास करि परिबो किंतु ऑफलाइन जदि तम मानकु कोचिंग सेंटर पठा जिवो देन तम माने कोन करि परिबो कि एतिकी पेशेंस काहार भी नाही जे भी आईएएस क्रैक करूची टॉप 1 रे इवन तांकर भी हमर कोन एतिकी पेशेंस रहिबो कि ऑफलाइन रहिबा पई बट ऑनलाइन एटा गोटे बेस्ट रहिबो कि आपण माने ना घरे खाई पी के आराम से रेस्ट करी कि सोई उठी बस के क्लास करि परिबे अच्छे ब्रेक भी नहीं परिबे हाँ ना नहीं एग्री विथ मी और नॉट गुड आफ्टरनून गाइज गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून तो विल स्टार्ट द क्लास गाइज सेमती कि तुम माने जानिछ हमर आरंभ बैच तो ऑलरेडी सर माने तुमको किछि आईडिया दे देथिबे अबाउट द बैच तो गाइज आरंभ बैच हमर लाइव हेबा को जाउछि टुडे की 23rd रो हमर एडमिशन स्टार्ट होछि जति आपण माने मो कोड special I'm talking about my code that is SSP live guys again I'm saying the my code is guys SSP live and जदि आपण माने मो कोड यूज करी की बैच परचेज करूसंदी then you can avail the least discounted price over the batch purchase price clear very good afternoon Anita Vijayini is very good afternoon to all okay so shall we start the class end रे आउट के तुमको आरंभ बैच विषय कोन फीचर्स अछि everything we'll discuss in the last okay so guys all ready to move so now guys the first question of the class is see the first question of the class is guys first हमारा इकोलॉजी एंड ईवीएस को मु कंपेयर करके किछि क्वेश्चन 25 टा क्वेश्चन आनी छी देन आनी छी हमारा साइंस एंड टेक बोथ के हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी ऊपर 25 टा क्वेश्चन आनी छी 50 टा क्वेश्चन अछि बट ओवरऑली ट्राई करिबा केते टाइम में कंप्लीट करि पारु छी ओके गाइस ये क्वेश्चन आंसर मते दियो एंड आपण माने जानि चंती मो सेशन केमिति ही रहउची जोटा कि यूजुअली हमें ऑप्शन थ्रू रे ही जाउचे नो मैटर द राइट आंसर ऑलवेज अ वन क्वेश्चन आंसर तो रेस्ट ऑप्शन जो तीनटा रही हमें ता थ्रू रे ही जीवा तो मते को द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज नॉट recognized biodiversity hotspot in India very good afternoon Anita guys tell me the right answer in the comment section which of the following reasons is not a recognized biodiversity hotspot in India the options are in front of you that is Western Ghats Indo-Burma Sundarbans or Himalayas what will be the right answer give me the right answer in the comment section very good very good only Sasmita only you know the answer rest all don't know so what will be the right answer guys this is the right answer will be the amara Indo Burma rahiba okay na sorry amara kon question pacharichi which is not pacharichi that means thoda amara biodiversity ame janiche kota rahiba Western Ghats is a biodiversity Indo Burma is also biodiversity Himalayas is also biodiversity but odd one out kariba ethi guys easily you can audit out that the Sundarban guys आमे जदि वेस्टर्न घाट ऊपर देखिबा देन वी नो दैट डिक्लेयर्ड बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट केबे हेतिला ना 1988 रे सब बेले मु तमानु कहिसी एग्जाम रे गाइस इंपोर्टेंट इज व्हाट इंपोर्टेंट इज ईयर
जदि किछि इंपोर्टेंट थीम होउची इंपोर्टेंट इनागुरेशन होउची ऑर्गेनाइजेशन रो एस्टैब्लिशमेंट हेची ना ता ईयर टा इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव ओके so which of the following reasons is not a recognized biodiversity hotspot that is the Sundarban but with the options western ghat amara kebe as a biodiversity hotspot established heitila that is 1988 by guys by is also important by Norman Mayers clear guys and western ghat is also designated as a UNESCO World Heritage Site in which year UNESCO World Heritage Site रे western ghat केबे गला ना 2012 रे गला 1988 रे कोन हैला हमरो ना as a biodiversity announce हे गला after that 2012 रे हमरो World Heritage Site रे include हैला कि ना western ghat clear okay guys next देखिबो guys it's about the Indo-Burma guys recognized as a biodiversity hotspot in which year guys this is 2000 मन रखो को year रे ना 2000 रे sorry Indo-Burma 2000 रे हमरो Indo-Burma हे जाई छी again guys आमे जदि सुंदरबन ऊपर देखिबा guys ये ना हमरो UNESCO World Heritage Site रे include हे छी but एटा गोटे biodiversity hotspot नुह एमिति भी क्वेश्चन आसी पारे which has already included in the UNESCO World Heritage Site but that is not under the biodiversity hotspot that will be also Sundarban and guys हमरो UNESCO World Heritage Site रे केबे include हेतिला ना 1987 in 1987 and guys about the Himalayas guys हमरो bio hotspot हमरो biodiversity hotspot declare हेची Himalayas केबे हेची ना बहुत अर्ली स्टेज रे हेतला जोटा कि हमर 1988 रे जस्ट आफ्टर डिक्लेयरिंग ऑफ सुंदरबन्स इन UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमर हिमालयस डिक्लेयर हेतिला एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट दैट इज 1988 ओके एंड गाइस हिमालयस हमर फेमस जानि थिबो हमर स्नो लियोपार्ड अछंती रेड पांडा अछंती जोटा कि एंडेजर्ड एनिमल्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दिया मते the term mega diverse countries refers to countries that have maximum forest cover are richest in fresh water have maximum number of deserts or have the highest biodiversity ओडिशा हिस्ट्री पाई को बुक पढ़िबे ऑनलाइन रे सोर्स कम पडुची जे तमाने बुक पाई फॉलो करिया पाई बचारुछ ऑनलाइन रे बहुत टफ एजुकेटर माने अछंती फॉलो करो ना ऑनलाइन जमाना ऑनलाइन हेलानी गाइस ऑनलाइन रे जो बेस्ट कंटेंट मिलिबा ना से सब बुक रा कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करिक ही तमाने को दिया जाउची तो बुक पाई काई पागला हो रे रिलेट करी करी मने रखो गाइस तमानकर भी मने रहिबो नो मैटर गाइस सेकंड क्वेश्चन आंसर दियो प्लीज द टर्म मेगा डाइवर्स कंट्रीज refers to countries that have maximum forest cover are richest in fresh water resources have maximum number of deserts or have the highest biodiversity tell me the right answer guys that have the highest biodiversity will be the right answer very good lalit oh lalit अच्छा क्लास रे तमे जहा हो अहम भाग्य मोर और टाइम रे भी क्लास रे अच्छा राइट so guys have the highest biodiversity is the mega diverse countries so mega word guys जते आसिला आपण माने भाबी देबे कि टिके अधिक हमें कहउचे ना मेगा फील्ड गोटे होउची मेगा वर्क किछि होउची दैट मींस गोटे बड़ धरणर होउची so highest is also हमर कोन गोटे बहुत बड़ धरणर so highest biodiversity को कहा सहित रिलेट करिवो मेगा डाइवर्स सहित रिलेट करिवो मेगा डाइवर्स कंट्रीज सहित रिलेट करिवो ओके एंड गाइस मेगा डाइवर्स कंट्रीज कोन कहउचे हमको ना दिस इज द डिफाइंड बाय द कंजर्वेशन इंटरनेशनल इन 1988 केबे एटा तार एस्टैब्लिश्ड हेतिला दैट इज द ईयर 1988 रे हेतिला
Okay, and India is one of the 17 mega diverse nation. Total ketata diverse nation achhanti guys? In mega diverse nation re total 17 ta countries achhanti, and among them India is one of them. Clear? Guys, is that clear? Next देखिबा. The National Biodiversity Authority, that is the NBA, is headquartered in. Guys, mostly headquarter कोठी कौन present होची? तो मानको space related कोई देवी guys, only DRDO रो headquarter हमारा न्यू दिल्ली रे present होची, बाकी जितने सारा headquarter अच्छी सबू हमारा बेंगलुरु रे अच्छी. तो ता according सेटा को मन रखो headquarter guys exam perspective रू बहुत बहुत important. Got it? The National Biodiversity Authority NBA is headquartered in. Who here headquartered is? New Delhi, Bangalore, Chennai, or Hyderabad? Tell me the right answer in the comment section, guys. Hurry up. Go. Guys, go to achieve. That is present in National Biodiversity Authority. Chennai, guys. कोठी होची प्रेजेंट चेन्नई को ईयर रे गाइस एटा एस्टैब्लिश हेतिला ना 2003 रे एस्टैब्लिश हेतिला इन द ईयर 2003 रे एटा एस्टैब्लिश हेतिला एंड गाइस अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केबे आस्तिला 2002 रे आस्तिला एंड ता अंडर रे हमर 2003 रे अनाउंस हेतिला लाइक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दैट एनबीए जोटा की गोटे पण हमारा बायोडाइवर्सिटी अंडर रे आसीबो बोली एंड तार हेडक्वार्टर कोठी एस्टैब्लिश करा जायतिला ना चेन्नई रे एस्टैब्लिश करा जायतिला. इज दैट क्लियर? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियदर्शिनी, वेरी गुड आफ्टरनून. ओके, सो न्यू दिल्ली रे गाइस वैरायटीज ऑफ हमारा रही जोटा कि तमन को जते बेले हेडक्वार्टर इन लाइक ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर रे गोटे शॉर्ट अपन क्लास रहिबो यूट्यूब रे ही प्रोवाइड करा जिवो सेटा ठीक है केयरफुली देखिबो. ओके, सो गाइस नेक्स्ट देखिबा. Which of the following is an in situ conservation method? Guys, in situ and ex situ. ता विषय भी तुम मानक भी जानिबा दरकार. But या पूर्व आंसर दियो जू, botanical garden, seed bank or national bank. Right answer? Hurry up. Which of the following? Yeah, 4D. So very good. So national park हमें कौन कहि परिबा? This is the example of in situ. बाकी ये सबू हमारा seed bank हैला, botanical garden हैला, even if zoo हैला, these all are guys example of what? Ex situ conservation. Okay, ex situ conservation. Guys, the animals are conserved. For example, zoo reindeer. Animals are conserved like outside their natural habitat. जिते बेले तांकर natural habitat रू outside रे conservation करी के हमें ताकू रखुचे, ताकू हमें कौन कहूचे ना ex situ कहूचे. That is example of the ex situ conservation. Botanical garden the same way रहूची, जोड़े कि plants are maintained outside the natural habitat, natural ecosystem. Seed bank guys same way रहूची, जोटे कि store रहूची कौन genetical matter. Seed bank is nothing but to store the genetical matter. Clear? Is that clear guys? National park guys wildlife protection act under हमारा national park केबे जाइतिला सेटा भी ଟିକେ मन रखिता आंसर द रिलेट करी की that is 1972 रे. In which year guys? That is 1972 रे. Clear? Next. Ma'am. Doctor. Ma'am UPSC second time prelims clear ma'am. Great. Next. Happy to hear it from you, Doctor. The concept of biodiversity hotspots was given by. The concept of biodiversity hotspots was given by M.S. Swaminathan, Norman Borlaug, Norman Mayers, or Edward Wilson.
कौन बी सी एमती कौन हाँ नॉर्मन बोरलग यांकु तमे कहउछ गाइस ये व्हीट प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम पे हमर कोन करिथिले ना व्हीट प्रोडक्शन इनोवेशन करिथिले wheat production guys he is directly like connected with the wheat production right answer will be guys Norman Mayors not Norman सुनिकी guys confuse होबनी Bolog is different and Mayors are different so Mayors कौन करिथिले ना biodiversity hotspot first like concept ता biodiversity hotspot रे से given करिथिले okay so biodiversity hotspot was given by Norman Mayors guys which year always मु तम मानको कहूची कि year is important so को year रे guys एटा करिथिले ना the year is important that is 1988 okay 1988 and guys initially से केतेटा biodiversity hotspot initiate करिथिले globally मात्र 10 टा ही थिला total 10 टा biodiversity hotspot थिला initiated 10 biodiversity hotspot globally clear guys clear ए जो टर्म एडवर्ड विल्सन को गाइस कहा सहित रिलेट करिवो जो टर्म ता अछि बायोडायवर्सिटी कांसेप्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट इज डिफरेंट बट जो टर्म बायोडायवर्सिटी फास्ट आसिला तापर हमर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट गाइस आसिला सो बायोडायवर्सिटी टर्म ता को के कॉइन करथिले ना एडवर्ड विल्सन कॉइन करथिले द कॉइन द टर्म बायोडायवर्सिटी एंड नोन फॉर गाइस हमको कोन को जाउची ना सोशियोबायोलॉजी तो बायोडायवर्सिटी टर्म को फर्स्ट कॉइन किए करिथिले गाइस एडवर्ड विल्सन मन रहइबो गाइस एतिकी मन रहइबो गाइस नेक्स्ट देखिबा एंड गाइस एमएस स्वामीनाथन को समस्त जानि चंती जेटा फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन ओके इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन यस अरे वाह दफ्तर you have a lot of information very good next which of the following national parks is located in the Nilgiri biosphere reserve tell me which of the following national park is located in the Nilgiri biosphere reserve the options are Kaziranga Bandipur Ranthambore or Gir guys Kaziranga आसीगला कोठी ना हमरो आसाम रे आसीगला एंड गाइस जोटा हम कहि परिबा इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी रे एटा गोटे पार्ट तार एबे फर्स्ट क्वेश्चन देखिथिली इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी तार पार्ट के रहउची ना काजीरंगा रहउची एंड फेमस कोथि पई ना वन हॉर्न लेखि चलो मन रहिबो गाइस कोठी रहउची ना आसाम रे रहउची पार्ट कहारो ना इंडो बर्मा एंड गाइस वन हॉर्न राइनोसोरस पई ये फेमस मन रहिबती about the Kaziranga guys so aku odd one out again guys Bandipur हमर कोठी रहिला Bandipur is situated at Karnataka right Karnataka रे रहउची and ये Nilgiri biosphere reserve to ताको हम माने कोन रिलेट करि परिबा Bandipur is situated in Karnataka and हमर Nilgiri biosphere reserve is located at the Bandipur the part of the Nilgiri biosphere reserve is the Bandipur so odd one out okay Ranthambore guys ता विषय हम देखि परिबा Ranthambore लोकेटेड कोठी Ranthambore ता नाम ही तमे जानि परिबो कोठी रहउची राजस्थान रे रहउची प्रेजेंट ओके एंड गाइस फेमस फॉर व्हाट फेमस फॉर राजस्थान रे जते भी हम बायोस्फीयर रिजर्व होइची हमरो 70% आर फेमस फॉर द बेंगल टाइगर क्लियर नेक्स्ट देखिबा गाइस एंड एटा आरावली रेंज गाइस एटा को रेंज को जदी पचारिबो क्वेश्चन रे Ranthambore biosphere reserve हमरो को रेंज को कवर करूची गाइस दिस इज आरावली रेंज क्लियर देन गाइस एंडली गिर का सहित गुजरात रे गिर गाइस चुतरे हमरो कोन एशियाटिक लायन दैट जी फॉर गुजरात ओके फेमस फॉर द गाइस एशियाटिक लायन मन रहिबो वेस्टर्न घाट रो पार्ट ये जेमती आरावली रो सेमती वेस्टर्न घाट रो क्लियर गाइस
guys about the Bandipur 1974 रे national park भाबरे establish ହେଇଛି in which year guys 1974 national park okay and tiger reserve जेहेतु बहुत संख्या रे tiger reserve अछि guys and under the tiger reserve project under रे guys केबे आसीची ना project tiger in 1973 आगो project tiger under रे से आसिला 1973 रे after that से national park announced ହେଲା clear राथम्बोर राजस्थान रे अछि ना ना दत्त राथम्बोर तो ढेंकानाल रे अछि त माने जानि न के next which Indian act regulates access to biological resources and traditional knowledge which again I'm saying which Indian act regulates access to biological resources and traditional knowledge the forest act 1927 wildlife protection act 1972 environment protection act 1986 or the biological diversity act 2002 what will be the right answer guys किछि किछि इन्फॉर्मेशन माने किछि जानि पारो ना रथम्बुर आसी कोडी थिला से पार्ट ऑफ द ढेंकानाल थिला तापर पुनी पार्टीशन हला पर से अनुगुल बाकू पड़ी छै जान ना किछि त माने अफरीन आसी गेलो yeah so tell me what will be the right answer guys guys biological resource को जे कंडक्ट करिबो जे तार रेगुलेशन को एक्सेस तार पाखरे थिबो obviously that will be the biological diversity act 2002 what biological diversity act 2002 guys and it enacted heitila 2002 re but came into force in 2003 मन रहिबो came in force into 2003 okay and guys india's obligation kon कहउछ yes afrin okay india's obligation guys रहिछि under the cbd okay केबे 1992 the biological diversity act mane rahibo guys is that clear forest act 1927 guys amaro first the colonial era ame first the colonial era act focused forest management ku kebe karithila na 1927 रे in the same way guys wildlife protection act amaro different animal species तार प्रोटेक्शन याकू अगेंस्ट रखी कि ताकू आखि आगे रखी कि हमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को आना जाइथिला 1972 रे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गाइस 1986 रे आना जाइथिला दैट इज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन बोली ताकू फेमस रे जाना जाउची दैट इज लीड विथ द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन परे ही एटा हेची अम्ब्रेला लेजिस्लेशन आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी जोटा कि हमर गोटे ब्रॉड हमें कहि परिबा कोन एनवायरनमेंटल गोटे क्षति थिला तो ता परे ही हमर भोपाल गैस ट्रेजेडी परे ही हमर आसीथिला द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 मन रहिबो एतिकी गाइस मन रहिबो नेक्स्ट देखिबा क्लियर मो डायलॉग तम माने मारुछ क्लियर हाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द रामसर कन्वेंशन डील्स विथ the Ramsar convention that deals with what desert ecosystem wetlands marine pollution and endangered species guys this is so easy कि तम माने कहि दबो कि मैम रामसर कन्वेंशन त हमें जानि छु that is always lead with the wetlands is not that but guys को year रे रामसर कन्वेंशन को year रे yes 1984 रे भोपाल गैस ट्रेजेडी with the leakage of methyl isocyanate apart from that guys come to the question number 8 the Ramsar convention deals with the wetlands guys in which year tell me Ramsar convention guys signed heithila in 1971 starting goes worldwide 1971 कोठी ना रामसर सिटी रे ओके रामसर कोठी रहउछ एटा मन रखिबो गाइस ईरान रे एबे त ईरान रे गाइस न्यूज अछि अमेरिका पर कोन ईरान ऊपर अटैक करि सारी छी तो याकू भी मन रखो ईरान रे okay and guys to conserve the wetlands of international importance and India has how many Ramsar sites that is also important guys the 80 Ramsar sites of as of 2024 I think 25 रे आउकिछि ऐड हे जाई छी but 80 as of 2024 that India has
मन रहिबो गाइस एशिया रे जते भी कंट्री अछि among them India is having the most number of Ramsar sites. Okay guys, wetlands सरला हमर guys desert ecosystem एटा कहा अंडर जाउची ना desert conservation is handled by the other agreements like the UNCCD. Okay, the marine pollution guys, that's also different. That is the MARPOL, that is the Marine Pollution Convention, that is the MARPOL guys. Okay, and in the same way guys, the endangered species, that is the CITES, CITES, endangered species ପାଇଁ ଅଛି guys CITES. Okay, and when it came into force, right, 1973 re 1973 guys. Okay, 1973 guys. Ramsar may include the endangered species, but Ramsar means directly lead with the wetlands. मने रहिबो नेक्स्ट देखिबा कोई जे भी किछि भी जानि छ इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में शेयर करो जोडा भी तुमको ऑप्शन देखा जाउछ ऑप्शन विषय रे केही किछि भी इन्फॉर्मेशन जानि छ देन डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन. Which of the following is an example of ex situ conservation? Guys, in situ कहिथिली ना हमरो निजर habitat बाहर को जते बेले जाई कि समाने रुहंती ताको हम कोन कहूचे ना in situ. But what is ex situ guys? Tell me. What will be the next answer? Which of the following is an example of ex situ conservation? Sacred groves, tiger reserves, gene banks, or the biosphere reserves? Guys, 8 in tamra kona na example of the in situ. This one. But the gene bank is the example of ex situ. Mane rahiba, gene banks store the plants or animal genetic material under a controlled system or controlled condition. जते बेले निजर habitat condition रो बाहर को जाई कि हमें किसी animal हेला plants हेला माने तांकर कोन growth करूचंती देन हमें तांको कहूचे in situ. जते बेले भितरे रहउचंती हमें ताको कहूचे ex situ. मन रहिबो in माने कोन होउची ex माने कोन होउची बस ताको मन रखो. Clear guys? Guys, is that so? मन रहिला. Biosphere reserve guys, ताकू तो मैंने जानी चल, that is the in situ conservation, the conserve biodiversity in natural ecosystem. जते बेले in natural ecosystem है ना in situ. जते बेले out of the natural ecosystem है ना out of the natural habitat है ना that is ex situ. This is so easy as it. Okay. Next, the red data book is what? Guys, video clear अच्छी ठीक है चेक कर लो अभी. I think some camera issue. Guys, video clear अच्छी. ललित, आफरीन, कहिलो video clear अच्छी. The red data book is published in. Afrin, you there? Guys, red data book amara कोठी हेची ना UNEP रे हेची. What is guys a UNEP कोन रहिची? This is the International Union. Okay, Euro start कर दे Union. Union for Conservation of UNEP रहिची ना. IUCN रहिची त हमारा Indian Conservation. UNEP टा कोन रहिबा? That is the United Nations Endangered Plants. Yes, guys. UNEP रहुची हमारा United Nations Endangered Plants किछि रहुची. But guys, हमारा firstly तमानको option थ्रू रे कहिबी. Afrin, yes, International Union for Conservation of Nature, UNEP. अरे सेटा तो IUCN, that I know. The first देखा IUCN कौन रहुची? The International Union for Conservation of Natural, that is the IUCN, and ये under रे हमारा कौन रहुची ना red data book रहुची. But guys, UNEP रा मते के comment section में जानेबे कि full form कौन रहुची? No, not the right answer is UNEP नहीं. Right answer is IUCN, but UNEP रा full form टा मते दरकार. Tell me the full form of UNEP. अच्छा program अच्छी, yes. United Nation Environment Program. Thank you guys.
Okay, so WWF कौन रहूची? This is the supports the conservation, but या सहित हमर directly किछि relation नाही book publish सहित. Okay, known for its campaigns like the Earth Hour and the species recovery. Suppose कोठी endangered species किछि रहि जाई छि तार recovery पई हम यूज करूचे, that is the WWF. Okay, and guys UNEP कहली, guys WMO, tell me what is WMO, guys. What is WMO? That is the World Meteorological Organization. World Meteorological Organization. That is WMO and deal with like the climate change ଆମେ कहि परिबा, climate and weather data उपरे. Meteorological माने ही बुझी पारुथबो. Okay. Next question answer guys. Project Tiger was launched. Project Tiger was launched in. Guys, Project Tiger was launched in. (1969, 1972, 1973 or 1985? Climate and weather information. Yes, meteorological. Yes, 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 Doctor. Yes, Asmita, Vijayalakshmi. Yeah, that is the right answer will be 1972, 73 guys. That is the 1st April. 1st April 1973. The Project Tiger was launched. On rahiba. And initially guys, केतेटा हमर tiger reserve को नै केटा हेतिला इंडिया रे? ना total number of 9 tiger reserves. Initially. Okay. That is initially. Clear? Next देखिबा. चलो guys 1972 रे कोन हेतिला मन पकेला टिके? Guys Wildlife Protection Act enact हेतिला. In which year? 1972 रे Wildlife Protection Act. enact हेतिला 1972 रे. मन रहिबो. Next इबा. The Biosphere Reserve. अरे guys वीडियो रे किछि प्रॉब्लम आसुची कि तमनकु मते कहिला टिके, let me know guys वीडियो रे किछि प्रॉब्लम आसुची कि मझिरे मझिरे किछि ब्लर हला बेला लागुची कि it's okay no need to be sorry जो माने भूल कहूचो टोटल भी सॉरी कहबा दरकार नै गाइस आमे नो ना आंसर जानुची. The Biosphere Reserve concept was initiated by guys IUCN or WWF, UNESCO or FAO. Guys it's by UNESCO. By whom? By UNESCO. Okay, and guys the year is important guys. The launch the first UNESCO रे हमरा कोन लॉन्च हेतिला ना Man and Biosphere Program. Man and Biosphere Program. Okay guys year tell me the year. मझिरे मझिरे टिके ब्लर होची. Yes guys क्लास सरला परे ही ताको अपडेट करि परिबी. Okay guys year केबे कहितली 1971. The year is important. 1971 guys the year is important and this is UNESCO. Okay next देखिबा. Which one is not a component of biodiversity? Which one is not a component of biodiversity? Tell me.
बायोडायवर्सिटी रा कोटा गोटे कंपोनेंट हबनी गाइस जेनेटिक इज अ बायोडायवर्सिटी कंपोनेंट species is a biodiversity component abiotic is also no guys ecosystem is also ecosystem is also a component of which is again let me read the question again which one is not a component of biodiversity. So these all are the amara biodiversity component. So abiotic obviously question likhi dechi abiotic to biodiversity component haboni na guys. Abiotic means kona non living rahuchi like soil hela water hela air hela that is not counted in biodiversity. Biodiversity focus करछि कहा उपरे over the living organisms over the living components only, right? Very good. The next एमान को एक्स्ट्रा किछि इलाबोरेट करबा दरकार कि इकोसिस्टम रे कोन करछि गाइस. Ecosystem include all the living organisms and their physical environment. Living organisms and their physical components. Clear? Next question guys, देखिबा. Which of the following, tell me which of the following pairs is correctly matched? Which of the following pairs is correctly matched? This is the question guys. Tell me जोटा कि correctly match ହେଇଛି. काजीरंगा सहित फास्ट गोटे गोटे ऑप्शन नु जिबा. काजीरंगा सहित मध्य प्रदेश इज दैट राइट की गाइस. काजीरंगा सहित कोठी गाइस हमर प्रेजेंट रहउची. काजीरंगा इज इन आसाम. कोठ रहइबो काजीरंगा त हमर आसाम रे रहइबो. सो याकु त हमें ऑड वन आउट कर दे ना मैम एटा तो रॉन्ग अछि. गाइस जिम कॉर्बेट कोठी रहउची ना उत्तराखंड रे देखैछि. गाइस जिम कॉर्बेट एक्चुअली रे हमर राइट आंसर कोन. यस दिस इज इन उत्तराखंड. ओके जोटा कि इंडिया रो फर्स्ट नेशनल पार्क. इंडिया रो फर्स्ट नेशनल पार्क Jim Corbett was established in the year 1936. This is very important for all the examination under the state government as the central level. Clear? या परे कि हमर आस्तिला 1936 फर्स्ट हमर रहला जिम कॉर्बेट तापर हमर हेली नेशनल पार्क आस्तिला. तो नाही गाइस नेक्स्ट टाइम गोटे रॉन्ग ही हेतिबा काई करबा. गाइस पेरियार कोठे हमर रहउची. पेरियार वेस्ट बेंगल ले देखैछि. एक्जेक्टली पेरियार हमर कोठी लोकेटेड इन केरला. मानस गाइस मानस तो हमें जानी छे जोटा सॉरी कोठी प्रेजेंट रहउची ना. दिस इज आल्सो आसाम रे बट देछि कोठी तमिलनाडु रे. सो ए भी रॉन्ग आंसर हबो, राइट? नेक्स्ट चलो. Which of the following species is critically endangered? Which of the following species is critically endangered? The Asiatic lion, snow leopard, great Indian bustard, or Indian peacock? What will be the right answer? Which of the following species is critically endangered? What will be the right answer? Priyadarshini, Chandrasekhar, Vijayalakshmi, Sasmita, answer diya. Afrin, very good. So, our great Indian bustard that is listed as the critically endangered due to the habitat loss and haunting. Okay, due to the habitat loss and haunting, guys, fewer than 200 bodhe. At least kete amara remain rahi jaychanti. There are only 200 remain. Okay, the Asiatic lion guys amara famously कोठी गिर फॉरेस्ट रे गुजरात रे देखिया को मिले. स्नो लियोपार्ड गाइस आमे ताको कहि परिबा the vulnerable one जोटा कि हमारा IUCN रेड लिस्ट रे हमारा अछि. That is found in the Himalayan region. तो मन को कहि Indian peacock guys, that is India's national bird. Okay, जोटा कि protected under schedule 1 of the WPA 1972 according. Here is important 1972 WPA. On रहिबा. Next question देखिबा. Guys, flagship. The term flagship species
Tell me the term flagship species refers to. The options are most common species in a habitat, species used to raise support for conservation, invasive species or extinct species. Tell me the right answer, guys. What will be the right answer? Quickly. Answer दिया. Quickly. Very good. Guys, flagship species, that means are used for what purpose? Guys, firstly the right answer will be the species used to raise support for the conservation. Guys, the flagship, yes, very good. Those are giving B, they are right. Okay. So guys, are used to gain public support for conservation. That is the flagship species are economically भी ସେମାନେ boostic ଦଉଛନ୍ତି, but guys these are iconic and the charismatic like the tiger or the elephant. Okay, and guys they really political support for the habitat conservation. So basically our जो flagship species रहुची, the term flagship species रहुची, that refers to the species used to raise support for the conservation. They need to be conservation because of the rare categorized. Okay, very good. Next देखिबा. Which one is not a Ramsar site? Tell me the right answer. Which one is not a Ramsar site? Keoladeo National Park. Guys, Keoladeo National Park, Chilika Lake, Sundarban or Kanchenjunga National Park. Guys, Ramsar site तो obviously Chilika Lake था हमारा, तो मैंने जानी चो. Keoladeo National Park भी गोटे guys हमारा lake रे जाऊची. So सेटा भी हमारा Ramsar site. Sundarban is also watery conditions area अच्छी. So obviously सेटा भी हमारा गोटे Ramsar site. रहिबो तो कोटा ना कांचनजंगा national. Guys, Kanchenjunga National Park amaro, it is a UNESCO World Heritage Site जोटा कि 2016 रे add हेची. केबे ना 2016 रे as a World UNESCO World Heritage Site. Okay, बाबरे ये कौन add हेची 2016 रे, but not a Ramsar site. Okay, located कोउठ रे होची guys? Sikkim रे हमर Kanchenjunga present at Sikkim. Famous कोथि पई ना the alpine biodiversity and the glaciers or the glaciers. Okay, guys, Keoladeo National Park. Tell me about the Keoladeo National Park, guys. The Keoladeo National Park. गोटे मिनिट रहिला क्वेश्चन ला कोन ब्लर मते देखा जाउची तम माने को क्लियर देखाउस तो yeah guys that is in Rajasthan Manipur I know टिकेरो guys clearly visible और किछि ब्लर देखा जाउची okay so next चलो which state has the highest number of national park in India? Okay Afrin, okay. Which state mate टिके ब्लर देखाला so I get confused. Which state has the highest number of national parks in India? Assam, Uttarakhand, Madhya Pradesh or Kerala. एटा तो मु तम मानकु नेशनल पार्क जब रिवाइज करिथिली YouTube रे क्लास आल्सो एबे प्रेजेंट रहिची तम माने कहि परिबो को highest number of national park guys Assam रे केतरा national park अछि as of 2024 there are 7 national park
उत्तराखंड रे गाइस केते रहउची प्रेजेंट हमर उत्तराखंड गाइस केते प्रेजेंट रहउची as of now tell me in the comment section guys मु कहउची केरला रे केते रहउची गाइस ना 6टा नेशनल पार्क ओके गाइस मध्य प्रदेश रे केतेटा ना 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश रे टोटल 12 नंबर ऑफ नेशनल पार्क प्रेजेंट रहउची जोटा कि हमें टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहि परिबा काकू ना मध्य प्रदेश को ओके टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इज 12 इंक्लूडिंग द कान्हा कहि परिबा द फेमस नेशनल पार्क कान्हा हेला सतपुरा हेला एंड द अलगा पेंच अछि पेंच ता मध्य प्रदेश रे अछि ना पेंच मध्य यस पेंच मध्य प्रदेश रे अछि सो इंक्लूडिंग दिस ओके मते को तमानु क्वेश्चन कोन पचाइली उत्तराखंड रे केतेटा अछि नेशनल पार्क यस वेरी गुड दैट इज उत्तराखंड रे पचाइली रे तमाने काई मते कंफ्यूज करूछ उत्तराखंड रे को कर्नाटक रे गाइस 5 टा नेशनल पार्क अछि राइट उत्तराखंड रे को यस मध्य प्रदेश रे 11 नहीं 12 अछि ना 12 मध्य प्रदेश रे 12 अछि नेशनल पार्क उत्तराखंड रे 6 अछि नेशनल पार्क केरला रे भी 6 अछि आसाम रे 7 अछि मध्य प्रदेश रे 12 अछि द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश that is known as the tiger state of India that is Madhya Pradesh next guys the wildlife protection act was enacted in the wildlife protection act was enacted in which year 1972 1986 2002 or 1975 yes Go. Yes, that is 1972 passed on 9th September 1972 clear and it actually 1972 re hitila but came into force in 1973 okay 1980 सहित हमर एते रिलेट कर पढ़ी परिबानी बट एनवायरमेंटल अवेयरनेस हमर 1980s रे आसीतिला जोटा कि एक्जेक्टली हमें 1986 बोली भी कहि परिबानी ओके नेक्स्ट देखिबा which of the following is not a method of sustainable development which of the following is not a method of sustainable development the options are deforestation rainwater harvesting organic farming or solar energy tell me the right answer question number 20 बहुत जल्दी कंप्लीट कर देबा 25 ऑलमोस्ट हमें हम स्पीड रे ही मेंटेन करू छे को which of the following is not a method of sustainable development deforestation rainwater harvesting or organic farming or the solar energy guys sustainable development रो ए सब गोटे गोटे होची कोन मेथड रेनवाटर हार्वेस्टिंग हैला ऑर्गेनिक फार्मिंग हैला इवन इफ सोलर एनर्जी हैला ओटे नुहा गाइस डिफॉरेस्टेशन नुहा guys deforestation means kono that destroys the ecosystem and also increases the carbon emission that cannot be a sustainable development for us okay it is completely unsustainable and leads to what leads to the biodiversity loss clear guys clear and rainwater harvesting guys ame koi pariba kon right answer will be the deforestation guys amane koi pariba rainwater harvesting jal shakti abhiyan amara gote scheme achi india government ro gote initiative that is jal shakti abhiyan that is jal shakti abhiyan is under the is for the rainwater harvesting organic farming guys that reduces the chemical uses and the maintenance for and maintains the good health of the soil okay what is soil ro health ko maintain kare and supports the agroecological farming and the biodiversity also आहुरी स्पीड करबी तंटी काटिलानी आहुरी स्पीड करबी हो चलो organic farming जानलो solar energy guys reduces the chemical uses and maintains the soil health also next चलो solar energy कहली already that is a clean renewable energy next
the sacred groves are example of urban afforestation, ex situ conservation, indigenous in situ conservation or genetic engineering. Yes, organic farming रे best state होची इंडिया रा सिक्किम. चलो next. मैम केतेबेले सरीबो आहुरी गोटे घंटा अछि कौन कहउछ प्रियदर्शिनी सार देबा क्लास ओवर कर देबा को आज प्रियदर्शिनी जा कहबे ओ the sacred groves are example of guys sacred groves कौन होउची ना प्रेजेंट रहउची हमरा कौन ट्राइबल एरियाज रे so sacred groves are preserved by the tribal communities in situ. So this is the example of आमे कौन कहि परिबा sorry the right answer will be the indigenous in situ conservation. Indigenous in situ conservation. Okay, example नहीं परिबा खासी हिल्स मेघालय रो खासी हिल्स मेघालय. Clear guys? Okay, Priyadarshini. Guys, genetic engineering that will lead with obviously the scene one. Okay, जोटा कि man-made plantation को denote करिबो. These are artificial आमे कोन कहि परिबा set up like the monoculture ए सब को advice देबा पई. So next देखो which state houses Silent Valley National Park? Which state houses Silent Valley National Park? So Silent Valley National Park को state रे हमर अछि तमिलनाडु कर्नाटका केरला और आंध्र प्रदेश. Guys, right answer will be that is Kerala. Right answer will be Kerala guys. Kerala represent रहुची that is को district रे Palakkad district रे. That is the Palakkad or Palakkad. I don't know exactly, but somehow it's pronunciation like this, I think. Okay, the Palakkad district, Kerala, declared national park in the year 1984. 1984 guys declare ହେଇଥିଲା. मने रहइबा guys तमिलनाडु रे बहुत संख्या रे हमरो जेमति कि गांधी नेशनल पार्क. Okay, for example नहीं परिबो. आंध्र प्रदेश रे guys the Popikonda National Park that is present in Andhra Pradesh and Karnataka रे guys हमरो the famous बांदीपुर नहीं परिबा नगरहोल नहीं परिबा ए सब हमरो कोठी आंध्र सॉरी कर्नाटका रे प्रेजेंट रहउची. Clear? Next guys, which term describes species only found in a particular geographic location? Which term describes species only found in a particular geographical area? जोटे कि हमें कहउचे जीआई टैग दोचे पर्टिकुलर गोटे एरिया रे जते बेले से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पाउचे हमें कहउचे से पर्टिकुलर प्रोडक्ट ता पर्टिकुलर गोटे एरिया को बिलोंग करूचे. So which term describes species only found in a particular geographical area? Tell me the right answer in the comment section guys. What will be the right answer? Yes, that is endemic. Very good. That is endemic guys. Endemic species are geographical area. Suppose example नहीं परिबा Nilgiri sir is endemic to the Western Ghat. काको नहीं परिबा Nilgiri को नहीं परिबा with the Western Ghat. Okay guys, what do you mean by जदि हमें endemic जानुचे? So exotic माने कौन guys? ना introduced from another place that is non-native जोटा कि native place का इन थिबो non-native रे हमें जते बेले ताको introduce करूचे that is the exotic one. कहि परिबा that is non-native. Clear? Guys, what is invasive? Invasive कोटा रहबा को मते invasive रहबो कोटा and endangered कोटा endangered को माने जानि छ invasive को मते कोन रहबो. Yes, Muduli Doctor, can you tell me?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आंसर दियो हम कमेंट सेक्शन देखुची इनवासिव मैंने कौन कुआ आंसर दियो मुदुली डॉक्टर I want the answer from you. Tell me the answer in the comment section. Next question. Which organization is responsible for designation UNESCO World Heritage Site? Which organization? Tell me. Guys, UNEP, that is environment पे हमें कोई परिबा. United Nations Environment Program. That is the UNEP. That is the headquarter present कोड रहउची केनिया रे. So yes, right answer will be the UNESCO World Heritage Site under 1972 रे हमर कोन World Heritage Convention हेथिला जोटा कि UNESCO 1972 बार बार कहूची रिपीट करूची UNESCO केबे हेथिला 1972 रे हेथिला. Is that clear? Next, the Chipko movement, guys, was associated with the Chipko movement was associated with deforestation, water pollution, soil conservation, or air quality. The Chipko movement was associated with deforestation, water pollution, soil conservation, or air quality. Chipko दफ्तर क्वाड गायब हो गला. Guys, Chipko movement आमर कहा सहित obviously the prevent the deforestation. Guys, deforestation सहित नुआ prevent the deforestation the Chipko movement was lead with. And guys केबे हेथिला ना began in 1973 कोठी उत्तराखंड रे हेथिला 1973 in उत्तराखंड. In Uttarakhand, guys. Okay. Then amara Uttar Pradesh re heithila and led by the Sundarlal Behuna. Kaha dwara amara led heithila? This is led by Sundarlal. एटा गोटे UPSC and OPSC रा favorite question, guys. सबु वर्ष 3 year न कहले भी 2-3 years रे थरे question आसी ही जाए. तो एको मन रखो. That is village amar kon कहे villagers hugged the trees to stop from the cutting. Okay, या फिर logging. फोटो भी तमनकर फेमस आसीथिबो देखिथिबो गच्छ को पूरा एमिति हक करिकि विलेजर्स माने रहउतिले कि गच्छ जदि काटिबो ताले हमकु भी काटि किरबो. So in that case, guys, our Chipko movement was very famous. So water pollution को guys how do now हम करि परिबो Chipko movement साथे आर किछि रिलेशन नै. Clear? Next. तो 25 ता गला थे जल्दी. Okay. So guys, who want to take a break? OPSC prelim रा ए जो marathon class guys every Saturday तमरो रहिबो. Every Saturday timing में भी change हे पारे त माने टिके OPSC रा live session ने check करूथिबो. Okay? You want a break? मु कहया कथा कि मु चिल्ले मो तंटी काटलानी पिला माने मु टिके break नेबी. Thank you for what? Class sorry नी. आहुरी 25 question अछि. चंद्रशेखर आहुरी 25 question अछि. What say? Thank you कहिंकी. Other regular class timing तमे please टिके live session रे जदी check कर दबो OPSC रो daily live session check करि दियो त मानकु live जणा पड़छि. Okay, and Wednesday and Friday मोर live class रहउछि. Other educator मानकर seriously I don't have any idea. त मान टिके check कर देले पाइछि. मैम अफरीन एटा आप क्लास नहीं केते मिनिट ब्रेक नहीं just 1-2 minute break that to move smart board आगुडु जाउनी. I am only present here. स्टार्ट करी देबी सांगे संग किछि लाइक नाही अफरीन तमे बे उठी कि जदी मोबाइल थोई कि टिके डिस्टेंस रे गल्लो तमे आसला बेलू दीटा क्वेश्चन ओवर हे जाइथो. तो केयरफुली strategy time out.
Start kariba? Or you need 2 minutes more? Tell me, tell me. I'm only here. Only 1 minute. ना ना अच्छी अच्छी जाओ टिके चा कॉफी पी के जदी आसियो अच्छी मु तो अच्छी ना त माने जतेले आसियो कहिबो मु स्टार्ट करिवि आ ना प्रियदर्शिनी एमिति तमे सैड हेले त मु मिनिट चलो ब्रेक 5 मिनिट ब्रेक देली जाओ सब कॉफी पी के आसा 5 मिनिट ब्रेक देली गाइस अगेन 2:18 ने क्लास स्टार्ट हम मु एठी अछि त माने जाओ आसो 2:18 रे ही क्लास स्टार्ट करिवि अलार्म सेट करो देन जाओ अदरवाइज त माने आसीबनी मु क्लास स्टार्ट कर देबी देन पुणी मत कहबानी कि मैम आमे तो कही कि जाइथिलो आपण वेट कलेनी चा मैम ए टाइम रे हां तेरे चाय लवर मु केमिति कहि परबी रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स आसीबो शयना Sayana something I don't know Sayana I am pronouncing the right name of yours Sayana jaldi asiba don't worry okay my favorite good coffee ma'am then go for a coffee break देखो दैट्स व्हाई मैं सेक्शन ब्रेक लिखिची चाय ब्रेक की कॉफी ब्रेक मेंशन करेनी राइट guys starting 25 question I discuss kale that those were about the ecology and EVS the ebe जोटा हमर आसीबो स्पेस टेक्नोलॉजी ऊपर जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट एंड तमन को बहुत मजा लागिबो बिकॉज़ गाइस हमें रिसेंटली अफरीन एंड बाकी हम क्लास रे की प्रेजेंट अछि सब रिसेंटली हमर स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट हेछि एप्लीकेशन रे सो तमन को बहुत ही मजा लागिबो You are very beautiful. Oh my god, that's my pleasure. Guys, you have 3 minutes only. Then 3 minutes again class start hejiba. Anything? Guys, kichi question achi then you can ask me in between. Ganesh, Afreen. Afreen ete jaldi asi gala. अरे आहरी 3 मिनिट अच्छी 3 मिनिट तो बहुत हेलानी बहुत सॉरी फॉर यू मैम मो पई तमे कहीं सॉरी फील करछो व्हाट यू वांट टू से फीलिंग सॉरी फॉर मी मैम सो ए ईयर रे नोटिफिकेशन आसीबो की डेफिनेटली वेट करो डेफिनेटली एसो आसुछ मैम क्लास सरले टिके सोइबू अस्मिता सीरियसली हमें मोटो ब्रेक मागुछ कि क्लास जल्दी सारंत हमें सोइबू जगन्नाथ प्रभु थैंक यू आपनकर आशीर्वाद ही दरकार स्टार्ट करिवा नाउ 2 मिनिट आसी गलान सब सस्मिता हमें तमे सोई के उठले परे पुनी क्लास कंटिन्यू करिवा लॉन्च न करी के एमिति बसिस देखो त माने एमिति कहले पुनी मोर हार्ट ब्रेक हे जे वन मु क्लास ओवर कर देबी एमिति काहे कहछो यार मझिरे 5-10 मिनिट ब्रेक करी करी क्लास देखि देखि भी तो खाई परिबो ना थोड़ी ना मैथ क्लास मु आमे माने करौथिलु जे तम माने सॉल्व कर पारथिलो तो पेन तो धरि की बसथिलो खाई हेलानी ये की कथा सस्मिता जो गोटे ब्रेक नहीं जाइछंती तांको कथा कोन करिया चलो क्लास स्टार्ट कली सस्मिता को भोक लागलानी सॉरी निद लागलानी आ हबनी गाइस लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन When was the Indian Space Research Organization ISRO established? Guys, ISRO केबे एस्टैब्लिश हेतिला? बसी बसी टिके बोर लागियो बुझी पारुछु बट कोन करिबा केबे टिके माइंड सेट करके आसो कि संडे रे एमिति हम बसिया को पड़िबो एग्जाम होले तेले मेंस आंसर राइटिंग करूथबो एते एते घंटा बसिथबो तेले कोन करियो
भाबुथुव कि टाइम आउ टिके मिलु मते आउ 15 मिनिट आउ 20 मिनिट आउ आधा घंटे मते एक्सटेंड ही जाउ टाइम तो प्रैक्टिस करो ए सेशन आनिबार मेन लक्ष्य ही हैला तमन को प्रैक्टिस करिया पई कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करो बसिबा को लिखिबा पई फोकस रहिबा पई गोटे टाइम रे मेंटेन करि कि रुआ सिंगल्स बुझिलो हम कोन चाहितिले गोटे गोटे आधा घंटे या फिर घंटाटे ब्रेक तो ही परथांदा ना इजीली ही परथांदा ना नहीं तो माने तो आराम से ब्रेक नहीं करथांदा क्लास आउरी पिला प्रेजेंट रहिथांदा क्लास करिया पई बट ए क्लास रा फोकस ही तो से कि तमन को कंसिस्टेंसी केमती मेंटेन करा जाए एग्जाम हॉल तो एते घंटा बसी लिखिबो केमिति लिखि परिबो से पेशेंस केमती आसीबो जो माने ऑलरेडी प्रिपेयर हेई चंती एग्जामिनेशन देई संती दे आर ओके बट द न्यू कमर्स बिगिनर्स माने केमिति प्रैक्टिस करबा दरकार ना केमती करबो ऑनलाइन हमें तुमको जबरदस्ती कहू बसी कि तुम आम कथा शुणव क्लास कले कि शुणव हाँ ना चला बहुत ज्ञान दे दोष ना रे तो when was the Indian Space Research Organization was established? That is 1969. Okay, the ISRO was officially formed in 15th of August 1969. मन रहिबो नेक्स्ट देखिबा गाइस 1975 मन रख इंडिया लॉन्च्ड आर्यभट्ट जो हमारा फर्स्ट लॉन्च हेतिला सैटेलाइट आर्यभट्ट इन 1975 जोठी टिके टिके रिलेट करि पारुछो संगे संगे रिलेट करिके मन रखि दबो क्लियर नेक्स्ट who is known as the father of the Indian space program guys या पूर्वरु टिके देखो 1962 रे गाइस हमर 1969 रे कोन हैला ना इसरो हेतिला इसरो पूर्वरु गाइस हमर इनकोस पार हेतिला तो 1962 ओके याको मन रखिबो इनकोस पार यार नेक्स्ट देखो who is known as the father of the Indian space program को होमी जाएंगे बाबा विक्रम साराभाई एपीजे अब्दुल कलाम सतीश धावन what will be the right answer who is known as the father of the Indian space program guys nuclear program सहित कहा को रिलेट करिवो ना भाबा को रिलेट करिवो with the nuclear program क्लियर तो विक्रम साराभाई को गाइस कहा सहित ना इनकोस पार जो कहली एबे 1962 रे फाउंड किए करिथिले विक्रम साराभाई फाउंडेड आफरीन किछि मने पडुची रिपीट होउची एंड लेटर एटा कोन इसरो रे कन्वर्ट हेतिला ओके एपीजे अब्दुल कलाम गाइस मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मन रखिबो मिसाइल साइंटिस्ट ही जॉइंड द इसरो लेटर स्टेज रे तो सतीश धावन कोन होइले ही एक्सपेंडेड इसरो आफ्टर साराभाई ओके सो राइट आंसर विल बी द विक्रम साराभाई नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिबा what was India's first satellite guys what was India's first satellite the options are Bhaskara 1 INSAT 1A Aryabhatta or Rohini एबे ही गाइस ईयर सहित मेंशन करी कहली 1975 रे हमर कोन लॉन्च हेतला इंडिया रो फर्स्ट सैटेलाइट दैट इज आर्यभट्ट केबे हेतला 1975 रे कोठो हेतला रशिया रो हेतला अफरीन रिपीट होची माने पडुची किछि गाइस ईयर सहित डेट भी इंपोर्टेंट दैट इज 19th April 1975 फ्रॉम रशिया रो हमरा आर्यभट्ट लॉन्च हेतला इंडिया रो फर्स्ट सैटेलाइट मन रहिबो गाइस भास्कर 1 कोन सेटा होची हमरा ओटे अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट द यूएस द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भास्कर 1 लॉन्च हेतिला केबे ना 1979 रे लॉन्च हेतिला मन रहिबो गाइस इनसैट 1A कोन होची दिस इज द फर्स्ट इनसैट सीरीज जो हमरा हेतिला that is the launch in 1982 रे हेतिला एटा फर्स्ट लॉन्च हेतिला 1982 रे the first insat series
गाइस रोहिणी मते कहले कोन अछि व्हाट इज रोहिणी yes Saina Das yes guys rohini that is the first satellite launched by the India itself like alga indigenously rohini ku se first like space ku pathaythila without any other country's help that is 1980 re mane rahiba but it is not first because Aryabhatta is the first India first ta nijo by itself karithila that is rohini okay but emti kichi mention nahi so Aryabhatta will be the right answer and yes exam re Aryabhatta upare hi question pade not ki rohini bishay re okay next question Chandrayaan-1 confirmed the presence of water on the moon in which year guys tell me Chandrayaan-1 confirmed the presence of water on the moon in which year? Guys, which year? The options 2004, 8, 13 or 19. Guys, first time launch ହେଇଥିଲା 22 October 2008 ରେ right? କେବେ ନା 22nd of October 2008 ରେ launch ହେଇଥିଲା and guys ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ information provide करଥିଲା that the water is present in the moon okay and 2013 guys 13 रे मंगलयान हमर लॉन्च ହେଇଥିଲା ତା ସହିତ रिलेट करदबो मंगलयान द मॉम मिशन माने पडुची मंगलयान ହେଇଥିଲା केबे that is 2013 रे okay and 2019 guys Chandrayaan 2 माने पडुची एटा थिला कोन Chandrayaan 1 this one Chandrayaan 2 clear next देखिबा very good what is the objective of India's Aditya L1 mission guys Aditya L1 mission रो objective कोन थिला study earth atmosphere guys Aditya सूर्यंकर गोटे अन्यतम ना गोटे प्रतिशब्द तो सूर्यंकु आदित्य सहित आदित्यंकु सूर्य सहित डायरेक्टली लिंक करि दबो सो एटे कोन अछि एक्सप्लोर द मून सरफेस हबनी अर्थ सहित हबनी स्टडी द एस्टेरॉइड्स नुह ऑब्जर्व द सन्स करो ना भीतरर पार्ट सूर्यंकर जहा प्रेजेंट रहउची ता सहित कोन करिवो आदित्य L1 एति कि मन रहिबो स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर जोडा हमर इनसैट सीरीज हेतला गाइस से हमर अर्थ एटमॉस्फेयर को स्टडी करिया पे ताकू लॉन्च करे देथिला इनसैट सीरीज explore the moon surface guys that is the Chandrayaan okay and our study of asteroids pai emiti kichi separately satellite launch heini to study only for the asteroids okay next what does PSLV the polar satellite launch vehicle Afrin I need the answer from you at least and as fast as you can give what does PSLV stand for in ISRO launches? The Polar Satellite Launch Vehicle, the Power Satellite Launch Vehicle. Answer him right? So, the propulsion system of launch vehicle, passive satellite lander vehicle. Yeah, that is the Polar Satellite Launch Vehicle. That is the augmented version of the satellite launch base. Like SLV ର augmented version होची the PSLV. Okay, SLV होची sorry ASLV होची SLV ର augmented version and ASLV ର augmented version होची PSLV. Clear? Next, which ISRO mission made India the first Asian country to reach Mars? Tell me. Afrin present रो class रे and गोटे question answer तमठु मु like सही चाहूची ओके गोटे भी भूल आंसर तमठु मु बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करूनी बिकॉज ऑलरेडी सब कंप्लीट हे सारी सो व्हिच इसरो मिशन मेड इंडिया द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स गगनयान चंद्रयान मंगलयान और एस्ट्रोसैट ऑब्वियसली मार्स सहित इंडिया रो को मिशन अछि गाइस मंगलयान ही अछि राइट yes
that officially the Mars Orbiter mission or the MOM mission launched ହେଇଥିଲା 2013 ରେ ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ କହିଛି କେବେ launch ହେଇଥିଲା ନା 2013 ରେ launch ହେଇଥିଲା okay made India proud globally मन रहा कि गगनयान मिशन गाइस द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन एपर्यंत हमर लॉन्च हे नाही ओके कमिंगली हेबाकू अछि चंद्रयान 1 गाइस समान को ऑलरेडी ता विषय रे कहिछि एस्ट्रोसैट गाइस द इंडिया फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट एपर्यंत कनेक्टेड हेनी कोन मार्स सहित तार कनेक्शन किछि हेनी एपर्यंत नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसएलवी गाइस जीएसएलवी कहिथिलो एबे जीएसएलवी को गाइस जीएसएलवी अफरीन दफ्तर अरे वाह दफ्तर अच्छा पर्यंत व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSLV the options are general satellite launch vehicle geosynchronous satellite launch vehicle global satellite lift vehicle geostationary satellite launcher what will be the right answer guys amara GSLV को इसरो यूज करूछ जते बेले हेवी सैटेलाइट किछि लॉन्च करिवार अछि through this launch vehicle amara स्पेस को heavy satellites माने पठा जाउचंती so used by ISRO to launch heavy satellites into the GTO that is the geostationary transfer orbit geostationary yeah to send to GTO जेमिति कि हमर मॉम मिशन हेइथला त माने देखिथिबो गोटे थ्रस्ट पहुंचला गोटे लिमिट को गला पर तो सेही ऑर्बिट रु अगेन ओटा ऑर्बिट को जिया पई हम सेम ऑर्बिट रे गोटे थ्रस्ट दोउले तो से ऑर्बिट रु डिफरेंट ऑर्बिट को जिया पई जो ट्रांसफर ऑर्बिट होउची सेटा होउची हमर जीटीओ एंड कहा द्वारा ना जीएसएलवी इज दैट क्लियर नेक्स्ट when was the Mangalyaan Mars orbiter mission launched guys ठीक है बेसी कॉमन हे जाय 2013 राइट गगनयान मिशन एम्स टू सेंड ह्यूमंस टू गगनयान मिशन ने गाइस कोठी को पठा जाउची मून को मार्स को वेनस को और द एलियो गाइस लोअर अर्थ ऑर्बिट को ऑर्डर आउट करो व्हाट विल बी द राइट आंसर को Swag an engineer can do anything except engineering like Sudipta Panda ma'am ये compliment ना comment कौन बुझिबे को really को गगनयान मिशन एम्स टू सेंड ह्यूमंस टू गाइस मून हेले कोन डायरेक्टली हमर किछि भी गोटे लूनर मिशन थांता मार्स हेले ऑब्वियसली मार्स मिशन थांता वेनस हेले तो वेनस मिशन थांता सो ई तीनटा जाको को हमें कोन सेपरेट करी दे कि गोटे रहिबा दैट इज द लो अर्थ ऑर्बिट को दैट गगनयान मिशन सेंड्स द एस्ट्रोनॉट्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट गाइस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स आर हियर सपोज हमर एटमॉस्फेयर लेयर रहउची किछि एम्ति एंड ता ऊपर को हमें जते जिबा 100 किलोमीटर रहउची exactly 100 kilometer amar गोटे लाइन रहउची that is the Karman line okay and guys ए Karman line रो above को जो स्पेस रहउची हमें ताको कंसीडर करूचे as a space and ता तळ को जति कि रहउची हमें एटमॉस्फेयर रे कन्वर्ट करूचे लाइक कंसीडर करूचे so ए Karman line exactly कोठ रहउची ना ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर between the thermosphere and exosphere मझिरे हमर रहउची Karman line and guys ए Karman line ऊपर को हमें स्पेस काउंट करूचे एंड ए स्पेस ऊपर को वाला पर हम देखुचे फर्स्ट आर लोअर ऑर्बिट रहउची देन मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहउची देन हमर रहउची हाई अर्थ ऑर्बिट ना लो अर्थ ऑर्बिट मीडियम अर्थ ऑर्बिट देन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट देन हमर रहउची द हाई अर्थ ऑर्बिट तो थ्री टाइप्स फोर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट हमरा बेसिकली रहउची ओके ओके गाइस या सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which satellite is known as India's first dedicated astronomy satellite? Guys, astronomy satellite जोटा कि एपर्यंत only गोटिए ही से satellite launch ହେଇଛି. That is a single satellite till now it has been launched from India. That is the only satellite towards the astronomy sector. So what will be the right answer? That which satellite is known as India's first dedicated astronomy satellite? INSAT, Aryabhatta, Astrosat or Aksara 2? Tell me the right answer. Ma'am, आपणकर कौन engineering background? Yes. Both science and engineering. Abdul Chandrasekhar. So the right answer, guys. What will be the right answer? ढाबा मारनी बिल्कुल. एक ढाबा मार के पड़ेगा आगु को, then फंसीबा आगे रे. बुरे तरीके से फंसोगे.
What will be? Which satellite is known as India's first dedicated astronomy satellite, guys? That is the AstroSat. मन रख AstroSat, guys. आर्यभट्ट नुह, आर्यभट्ट थिला कोन फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया जोटा कि हमर रशिया रे लाइक कोन लॉन्च हेतिला 1975 रे. In which year? 1975 रे हमर आर्यभट्ट जोटा फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया थिला एंड जोटा इंडिजिनियसली इंडिया तारा लाइक कोन निजे ही किछि सैटेलाइट लॉन्च करथिला सेटा हमर रोहिणी थिला. बट गाइस फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट was AstroSat, guys, जोटा कि 2015 में लॉन्च हेतिला in the early phase of 2015. Okay, it observed the stars, galaxies and the black holes. Stars, galaxies and the black hole. Clear? Very good, guys. Bhaskara 2. This is the Earth observation satellite, the EOS, not for the deep space. This is the Earth observation satellite. Guys, INSAT, this is also the weather and communication by ame taku launch kariche INSAT ko. This is the INSAT series of 4 satellite. Okay. Yeah, 1975. Very good, Ganesh. Which one did you choose? Ma'am, comment or compliment? I will choose you to present whole of my class. Okay. So, which ISRO center is located in Sriharikota? ISRO रो को research center हमारा Sriharikota रे present अछि. SAC, VSSC, STSC, or guys that is ISTRSC. What will be the right answer? Please do in the comment section, guys. SAC ता कौन रहउछि? That is full form लेखि चला. SAC, VSSC, STSC सब जानुछु मो. कुआ full form कौन रहिबो? Right answer will be the Satish Dhawan. We all know that Satish Dhawan Space Center is present in Sriharikota. And guys, ଆମର first जो ISRO रो main launch pad हमें कहि परिबा काथु the Satish Dhawan Space Center. Okay guys, full form लेखि चलो. SAC रो full form देखो. SAC रो जोटा कि हमरो अहमदाबाद रे present अछि. Okay, located in Ahmedabad. जो थे कि कौन और satellite payloads मेरे को carry करने में easily हमने like जे कौन सी research करूँ चे हमें SAC रे करूँ चे जो डाई कोटी % अच्छी अहमदाबाद रे. Full form, I need a full form from you guys. Comment section में लिखी चला. गोटे करी की एमिति SSC लेखो full form, VSSC full form. VSSC guys कोड रही ची तिरुवनंतपुरम रे कौन रही ची सबू कही देबी की तम माने कौन करिबा ताले विक्रम स्पेस सेंटर को विक्रम सारा भाई तम मान को किछि टास्क दउची सेटा टी पार्टिसिपेट करो यार. बीएसएससी कोठी रहउची गाइस तिरुवनंतपुरम रे राइट. तिरुवनंतपुरम रे एंड कहा ऊपर लाइक काम करूची रिसर्च ऑन द रॉकेट्स. द ISTRC guys present कोड रहउची बेंगलुरु बेस्ड कंपनी that is handle the track माने केमती ट्रैकिंग करूची tracking and the telemetry. That is Bengaluru. Tracking and the telemetry. Clear guys, handwriting ऊपर जीवनी. Okay, चिन्ह ना पहले मते कहइबो because pronounce करी करी ही लिखुची. Right? Only sit and enjoy your class. Like किछि आउ लिखिबनी त माने पार्टिसिपेट भी करिबनी बस एन्जॉय करिबो. रियली किछि भी करो एग्जाम रे आसिले ऊपर को अनेबो भाबिबो कि मैम कोन कहउतले मैम को कलर ड्रेस पिंधि के सेदिन क्लास करूथिले. अच्छा मैम ब्लू कलर जैकेट पिंधिले. अच्छा मैम काजल लगेइथिले मैम लाइनर लगेइथिले एउडा भाबिबो भी एग्जाम रे लिखि गेसबो. ओके आई एम ओके विथ दैट. तम माने बस एग्जाम कथा भाबो. Chandrayaan 3 successfully soft landed on the moon in which year? Guys, Chandrayaan 3 हमर इंडिया रो सक्सेसफुल साउथ पोल ले लैंड करिथिला जोटा कि टिल नाउ वर्ल्ड रो कोनसी कंट्री साउथ पोल ले सॉफ्ट लैंडिंग करि नथिला. तो को ईयर रे हमर एटा सक्सेसफुल हमें हेथिले. टेल मी द राइट आंसर. Tell me the right answer. Chandrayaan 3 successfully soft landed on the moon in which year? Tell me guys. Quoi? 2019 guys. Chandrayaan 2
चंद्रयान 2 CH2 लिखि देछि दैट इज चंद्रयान 2 जोटा कि फेल हे जाइतिला 2021 गाइस डिलेड जोटा कि हमर प्लानिंग चलीथिला बट कोविड 19 आसी जाइतिला सेति में हमरा डिले हे जाइतिला 2023 guys landed on 23 August 2023 that is 23 August 2023 okay yeah the point is subjective point very good 2025 to chhadi diyo taku future year next which of these is not a launch vehicle developed by ISRO which of these is not a launch vehicle developed by ISRO guys SLV PSLV GSLV ए सब LV ना सुनी तो तुम मैंने ऑलरेडी जानी थी आफरीन को फाल्कन 9 yeah 2023 is the National Space Day which of these is not a launch vehicle developed by ISRO very good guys कोटा हबो ना Falcon 9 that is built by the SpaceX okay Elon Musk ର SpaceX company जोटा कि इंडियन नुह SLV guys India ର fast rocket series India fast rocket series that is SLV मन रहिबो जोथरे कि हमरा लॉन्च हेतिला रोहिणी ओके द फर्स्ट सैटेलाइट हमरा इंडिया जोटा कि इंडिजिनियसली सेंड करा जाइतिला रोहिणी कोथरे हेतिला SLV that is the satellite launch vehicle PSLV polar satellite launch vehicle केबे हेतिला 1993 रे 1993 रे हेतिला गाइस PSLV GSLV guys used for the heavy payloads okay and the satellites to the GTO geo stationary transfer orbit next question up to you tell me what is the main objective of NAVIC guys NAVIC kon kahilo that is a navigation system okay so India do not have its own NAVIC system jota amara NAVIC achi seta amara own that is regional internationally tar kichi acceptance nahi ame mane internationally code accept karuche na GPS ku karuche okay GPS kaharo na USA ro and guys ame mane directly GPS use करने ame mane app ku use karuche and app ka use करछे ना GPS ku use करछे so main katha hoche apart from all the topic guys what is the main objective of NAVIC ro kon obviously the purpose of navigation right navigation very good weather forecasting pai already to manu koichi kon achi insert series insert space research guys जोटा कि इसरो रो जनरल एम हमर रहिछि नाविक रो नाही astronomy guys navic doesn't deal with the stars and the galaxies हमर astronomy पई astrosat काहू ना astrosat को लॉन्च करि छै is that clear next question देखो तुम माने कहिलो मु बहुत फास्ट जाउची आउ या टू फास्ट हेले मु बहुत सेंसलेस हे छै ओके नेक्स्ट को isro's headquarter is located in तमनु कहिथिली गाइस सब हेडक्वार्टर हमर जते स्पेस रिलेटेड रहउची सब किछि हेडक्वार्टर प्रेजेंट होउची बेंगलुरु रे एक्सेप्ट द DRDO दैट इज इन कोड रहउची न्यू दिल्ली सो व्हाट विल बी वेरी गुड या दैट इज बेंगलुरु न्यू दिल्ली रे कोन रहबो DRDO एति कि त मन रखिबो बाकी जहा छोटो मोटो लैब किछि रहउची से सब हैदराबाद चेन्नई ए सब हमर रहउची तो ताकू और वन आउट करो जति इंपोर्टेंट ताकू पॉइंट टू पॉइंट मन रखो द विक्रम लैंडर वाज पार्ट ऑफ व्हिच इसरो मिशन टेल मी द विक्रम लैंडर वाज पार्ट ऑफ व्हिच इसरो मिशन पहिला विक्रम लैंडर को केस रे आस्थिला आदित्य L1 रे ना आसी नथिला आदित्य L1 रे बिकॉज़ दिस इज द सन मिशन सहित विक्रम लैंडर आमे पढितिले ऑलरेडी कोडी जोटा कि चंद्रयान मिशन रे पढितिले तो राइट आंसर कोडी हबो ना चंद्रयान मिशन रे tried the moon landing in 2019 that is the through the Vikram lander जोटी की क्रैश हे गला लैंडर नेम वाज विक्रम ओके
So Mars orbiter to habani mom mission inside 3D guys, that is a weather satellite. So taku bhi run out kara. Clear? Very good. Next question. Next question. Which launch vehicle carried the first Indian into space? Which launch vehicle carried the first Indian into space? SLV-3 or the Soyuz T-11, PSLV, JSLV Mark 3. What will be the right answer? Guys, again carefully question ko pada, ticket trick achi. Which launch vehicle carried the first Indian into space? Guys, first Indian katha kahila. That means obviously से launch vehicle टा हमर इंडिया रे हेई नथिबो. SLV, PSLV, GSLV ए सब गुरा हमर कोन इंडिया रे हेई जी. इजीली तो माने टिकेट ट्रिक अप्लाई करले ताकू आंसर करि परिबो. सो सोयुज T-11 जोटा हमर फर्स्ट राकेश शर्मा को इंडिया को पठैथिला थ्रू द लाइक हम कहि परिबे कोन 1984 रे. In which year? 1984 रे, and it was Russia. कहा को राकेश शर्मा. ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बा. चलो, who was the first Indian to travel to space? Guys, tell me who was first Indian to travel to space? The options are राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम और विक्रम साराभाई. Guys, first आमर एबे ही जो कहि देली राकेश शर्मा द राइट आंसर, जोटा कि हमर सोयुज T-11 आस्तिले 1984 रे जाइथिले, जोटा कि रशिया रो जाइथिले. एबे ही कहली लेखिया दरकार नै. आई थिंक कल्पना चावला गाइस फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन, जोटा कि वेंट टू स्पेस इन 1997. आई थिंक 1997. यस, कल्पना चावला. सुनीता विलियम गाइस इज अ अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जोटा कि फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन. एक्जेक्टली नॉट अ like इंडिया रो बिलोंग करंतिनी एक्जेक्टली, बट इंडियन ओरिजिन, बट अमेरिका पे काम करंती. ओके, सो विक्रम साराभाई गाइस तांको सहित किछि रिलेशन नाही, नेवर वेंट टू द स्पेस. ओके, नेक्स्ट टेल मी द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर. Which Indian woman astronaut died in the Columbia shuttle disaster? This is guys very important and UPSC and OPSC रो favorite question. Again, Indian woman who died in Columbia crash. Wow, yeah. सुनीता विलियम. गाइस सुनीता विलियम तो अभी प्रेजेंट अछन, हम काई हम मारिबा, राइट. कल्पना चावला, रितु खरीदाल और टेसी थॉमस. गाइस ये जाइथिले ना 2003 रे कल्पना चावला कोलंबिया क्रैश रे हमरो डेड ही जाइछन. तो हम कहि परिबा कोलंबिया डिजास्टर रे कल्पना चावला हे चंती, वेयर सुनीता विलियम स्टिल अलाइव, तांको मे जस्ट हमरो स्पेस रु फेरी चंती. ओके, ऋतु माने ढाबा मारिबार भी लिमिट थाए यार. ओके, ऋतु गाइस हमरो तांको सहित किछि स्पेस सहित रिलेशन नै, बिकॉज़ ही इज अ सीनियर इसरो साइंटिस्ट. ओके, साइंटिस्ट अछंती, एस्ट्रोनॉट नोती, स्पेस को जाई नांती, नॉट एस्ट्रोनॉट. So टेसी is also missile expert. Okay, not linked with the space travel. Next, the launch vehicle that failed during the Chandrayaan-2 mission. Guys, tell me the launch vehicle that what a minute rahila, ette speed kemti jaichi mu follow karchi. Okay, the launch vehicle that failed during the Chandrayaan-2 mission was SLV, SLV, JSLV, Mark 3 or the Soyuz. Guys, that means Chandrayaan-2 रे आमे को launch vehicle use करिचे. Question is that केमिति बुले बके पचारिबो, तमाने केमिति आंसर दो, that's up to you. आउ केते क्वेश्चन अछि मैम? आउ मात्र 4टा क्वेश्चन. को the launch vehicle that failed during the Chandrayaan-2 mission. Guys, GSLV Mark 3 launched Chandrayaan-2 in July 2019. That means amaro kona failed heitila GSLV. Okay, so PSLV guys, that is not strong enough to carry a heavy satellite to the space. Okay, and SLV amaro rocket launching pai, so taku bhi advance up कर दियो. And ये तो हमारा पूरा रशियन लॉन्चर है, छड़ा.
Next question, guys. What is the name of the ISRO developed satellite for students? Guys, students ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ISRO develop କରିଛି ଗୋଟେ satellite. And ସେ satellite ର ନାଁ କଣ? ଯୋଉଟା କି ତମମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର. এই 25 क्लास क्वेश्चन पर क्लास बिल्कुल एंड तमाने पूरा मोबाइल को फोपाड़ी दवा को कोणरे जाई कि पूरा रेस्ट नबो हैला. डोंट वरी. या पर क्लास एंड हैला. को सैटेलाइट फॉर स्टूडेंट गाइस कोटा हबो? गाइस रिसैट रहउची कोन? दैट इज अ रादर इमेजिंग सैटेलाइट. Radar imaging satellite. That is the RISAT. Guys, question देखो. Youth sat. ढाबा मारिबो तो एठी मारिबो. बुझो ना नहीं? एडु सैट नहीं. ढाबा एठी मारो. Youth start. Students मानक पई हिस. आम मानक पई हिस. यार आम माने youth. Okay? So youth start, that is the joint kahar India and Russia. This is guys again important. Trickle mind रे class करनी. Class रे बहुत important question भी discuss होउची. So every question and their option through रे जाओ. Okay. India Russia मिसी केटा को joint तांकर innovation है इसी satellite launched in 2011. Important is year, that is 2011. Okay. The students at guys एमिति किछि ना भी नहीं मान जेमति ढाबा मारुचो. Okay. So EduSat guys, that is for e-learning. Okay, not specifically built by for students. That is a e-learning platform. Next, the Indian satellite meant for ocean monitoring. Guys, ocean monitoring by Indian satellite. Yeah, all are important, doctor, but some of the students are taking it very lightly. So Indian satellites meant for ocean monitoring is the Catosat, OceanSat, InSat or Aryabhat. Guys, ocean ପାଇଁ ଆମର obviously OceanSat ହିଁ ହେଇଥିବ. Catosat କୋଉଥି ପାଇଁ? For the maps terrain ପାଇଁ. For maps. OceanSat for the oceans. Ocean study ପାଇଁ. InSat guys, ତମମାନଙ୍କୁ already କହିଛୁ weather and communication ପାଇଁ. Guys, Aryabhata, that is the fast satellite. Already coach. That is fast satellite. जोटा कि रशिया रो लॉन्च हेतिला. Clear? Next देखा. The Indian spaceport is located in. Guys, the Indian spaceport is located in which location? Kwa. Thiruvananthapuram ro, Sriharikota, Bengaluru or Chandipur. Kwa. Kothuru aba Indian spaceport is located in. Koti located achi. Guys, the India main our spaceport जोटा विक्रम साराभाई जोटी अछंती लाइक विक्रम स्पेस सेंटर हमरो लैब अछि प्रेजेंट थिरुवनंतपुरम रे इज द लॉन्च साइट थिरुवनंतपुरम. सॉरी थिरुवनंतपुरम रे केमती हबो? No, sorry for the inconvenience guys. Not that is Sriharikota. Sorry, that is Sriharikota. That is the Satish Dhawan space center. एबे ही just कहइली. Okay, that is India's only and the main launch pad. Yeah, that is no, not A. That is the Sriharikota. Yes. Okay, Bengaluru रे हमरा headquarter present रहउची. मन रहइबो चांदीपुर गाइस हमरा DRDO रो missile launch हमें कोन launching test site कहि परिबा. Missile testing site. Of DRDO. Okay. So the last question is here. Who is the current ISRO chairman as of 2024? अच्छा 24 कह देली as of 2025 ऑप्शन ए भी नहीं छाड़ा 2025 4 अकॉर्डिंग को 25 गाइस चेंज हो जाई चंती. ओके को
guys 2024 according to S Somnath but 2025 रे guys change जाइसंदी N Narayanan guys that is sorry V Narayanan right V Narayanan 2025 रे change जाइसंदी guys that is V Narayanan as of 2025 मन रहिबो guys K7 2022 जदि क्वेश्चन आसिला ताकि आसीबनी जदि आसिला भी K7 कहबो ओके अर्ली स्टेज ऑफ 2022 जाइन थिले देन माधव नायर गाइस चेयरमैन थिले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2003 टू 2009 ओके एंड द एस किरण कुमार तांकर एग्जैक्टली रोल तो किछ मोर मन नाही बट ही वाज आल्सो सर्व फॉर लाइक सर्व करिचंदी इसरो पई ओके तांको रिलेट करियो guys it was all of the question thank you V Narayanan yes Asmita V Narayanan 21 ने K7 को ऐड करियो 21 ने K7 okay thank you guys thank you so much have a good day to all day तो class रही over हे गला rest जति की day अच्छी Sunday have a fun day okay thank you guys Wednesday again more class achi not a marathon session but yeah that is your daily classes of mine so join there on Wednesday and Friday okay at 11 a.m. in the morning thank you guys thank you so much thank you for the detailed explanation of his question thank you guys Jai Jagannath have a good day take care of yourself and first of all take care of your parents okay thank you guys देखो 4टा पूर्व क्लास एंड कर देली यू शुड बी थैंकफुल टू मी सस्मिता एबे तो सोई परिबो ना आराम से कौन कहूच सोई जीव ना आराम से क्या नाहांदी से सीधा जाई कि तकिया धरलेनी कि मैम थैंक यू कही देली एबे मु चलिली thank you guys thank you so much bye bye take care have a good day